कमेंटेट करने में फ्री स्टाइल में बड़ा मजा आता है। कल 6 घंटे थे भाई हम, बट मैं वाह। बता रहा हूँ वो 6 घंटे कैसे गए मुझे पता भी नहीं, बिकॉज आई हैड सो मच फन। Oh, that's amazing. By the way, we can already see the players. Hans Niemann versus Levon Naronian. हम मिले थे लेवॉन और हैंस नीमन दोनों को देखा इंडिया में। अब तो लग रहा है भाई अपने ही दोस्त है भाई, अपने चिल अपने यार वहां पे खेल रहे हैं, क्यों साज भाई? Of course, Hans and Levon sitting there ready for their matches। भाई इनके सूट भी एकदम सेम सेम ही है। और एक बात बताओ, लेवॉन ने हांस को चूज किया ना, मैंने वीडियो देखी थी। हाँ हाँ हाँ, and chat, we are back, we are now back, the stream is live, welcome welcome welcome, handshakes, can we jump to the Arjun camera as quickly as possible? साज भाई क्या लग रहा है भाई, कल धुआंधार बल्लेबाजी करी अर्जुन ने भाई, थर्ड प्लेस से फिनिश हुए, राइट, इफ आई नॉट मिस्टेकन। यस, थर्ड प्लेस एंड ही डिफीटेड द गोट ऑफ चेस। भाई वो वाह। गेम देखा आपने भाई, मतलब फाड़ ही दिया उसने कल मैग्नस को, भाई मजा ही आ। क्या फाड़ दिया भाई। भाई मैं बता रहा हूँ, ही जस्ट डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड मैग्नस कार्लसन यस्टरडे, जो मतलब आपको क्या, इट इज सो गुड। Yeah, so good. Can we have Arjun's board maybe? And starting position पे नजर मारे chat. Look at the initial position. King on F1. दोनों रुक्स बगल में है उसके। साज है मतलब यहाँ पे तो क्या ही तो कैसलिंग करते ही दोनों रुक्स साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। भाई दैट्स फ्री स्टाइल फॉर यू, पहली चाल ही आप कास्टलिंग कर सकते हो, विच इज क्रेजी। सो यस, बड़ा बहुत बहुत मजा आएगा चैट। एंड चैट में सब लोग लिख रहे हैं, साहिल भाई कंग्रेचुलेशन ऑन योर वेडिंग। भाई आई डोंट नो कि इंट्रो में के लोगों ने सुना कि नहीं, आई थिंक स्ट्रीम लैग कर रही थी भाई। चैट अगर आप देख रहे हो तो साहिल भाई वेल डन, यू डिड वेल डन। समथिंग अमेजिंग। भाई वेल अमेजिंग भाई, डन। वेल डन, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब मजा तो आया भाई। भाई अकम्पलिशमेंट ऐसी हो कि शादी के लिए भी वेल डन बोले भाई, बढ़िया भाई। भाई बट अकॉम्प्लिशमेंट तो है भाई, हमारी नहीं बट हुई ना ये तो भाई। है इंडियन वेडिंग, जितनी जितना टाइम और मेहनत लगता है वेल डन बनता भी है, बट मे बी टू पीपल हु काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज दिस। बट या आई मीन इट फील्स अमेजिंग टू बी मैरिड, आई थिंक मजा आ गया भाई, एंड एक के दो हो गए। एंड अब दो बोर्ड भी हमारे सामने है साज भाई, हमें दिख रहा है कि B4 और F4, प्लेयर्स ऑलरेडी डिविएटिंग, किसी को पता नहीं है पहली चाल बढ़िया कौन सी है। भाई मतलब मैं ये समझ आ रहा है कि परहम और लेवॉन में यूनिटी नहीं है, बट यूनिटी तो साहिल भाई की है, बिकॉज साहिल भाई जस्ट गॉट मैरिड, लेट्स गो। भाई मैरिज से याद आया, आई थिंक वन some of the players also got married. I forgot who was the player who got married. You said you heard the name Sahaj भाई, and meanwhile कह रहे साहिल भाई साहज भाई को धोखा दे दिया, दूसरा शादी कर लिया टिक्कू ने, ये क्या बोल रहे हैं साहज भाई चैट? गंदी अरे गंदी बात। तो समय भाई को पहले ही मैंने एक पार्टी दे दी थी कि जैसे ही नाम आएगा तो इट स्टार्ट लाइक, तो लैक करा देना भाई। हम्म। एंड चैट कैन यू हियर अस, सीएस एक बार तो भाई, अभी हम उनका बोर्ड लगाने वाले हैं। कल का आपको परफॉर्मेंस अगर समराइज करना हो दो लाइन में अर्जुन का, तो आप कैसे करोगे? लेजेंडरी गाइसी, दैट्स भाई इट। दो लाइन का था, दो लेज वर्ड नहीं भाई। लेजेंडरी गाइसी। भाई दो लाइन क्या लेजेंडरी होता है फुल भाई? स्टॉप, गाइसी फुल स्टॉप। गॉड गाइसी, लेजेंडरी गाइसी, हाँ दैट्स व्हाट आई वुड हाँ। से, बिकॉज भाई शुरुआत में लेट्स लाइक ऑन अ सीरियस नोट, ही डिडंट स्टार्ट ऑफ वेल। आई थिंक ही ड्रू हिज फर्स्ट गेम, लॉस्ट टू अरोनियन इन द सेकंड मैच, थर्ड मैच पे उनका ड्रॉ हुआ था। देन आई थिंक जो सेकंड हाफ उनका जो गया भाई, ही जस्ट डिस्ट्रॉयड एवरीवन, लाइक ही हैड अ हम्म। गोट कमबैक। एंड ही फिनिश्ड थर्ड प्लेस, दैट मींस ही इज स्टिल इन कंटेंशन टू विन द फ्री स्टाइल। अब तो भाई सुपर पॉग चैंप्स भी जीत गए हम, वर्ल्ड कप एक रह गया, सुपर पॉग चैंप्स जीत गए, अब फ्री स्टाइल का कंटेंशन भी हमारे हाथ में है भाई। एंड प्रग आल्सो क्वालिफाइड टू द कैंडिडेट्स, तो वो भी हमारी कंटेंशन में है भाई। भाई क्या क्रेजी दिन है, प्रग क्वालिफाइड टू द कैंडिडेट्स जस्ट येस्टरडे, जब फिदे ने अपना कैलकुलेटर निकाला और उस पे कुछ नंबर्स क्रंच किए और उन्होंने रियलाइज किया कि कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता है प्रगनंदा को। सो एक बार जितने भी लोग सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं, प्रग ओपी इन द चैट फॉर बीइंग द ओनली इंडियन टू क्वालिफाई इनटू द ओपन कैंडिडेट्स। भाई क्या ही मजा आने वाला है, मतलब इमेजिन प्रग वर्सेस गुकेश हो जाए भाई, फील। भाई तो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन, हु इज ऑब्जेक्टिवली द फेवरेट
to win the candidates to you, Sahil bhai? Oh, well, I think although has a great recent record against Fabi, I think overall against all the players, like Hikaru might fumble a game or two against some other players. I think Fabi object. हेलो 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 चैट, वी आर बैक। वो हल्के से डिले के बाद, ओके हल्का नहीं था, भारी भरकम डिले था, बट वी आर बैक। आजकल ट्रेंड है भाई। यू सॉ कि भाई फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, स्ट्रीम डिले हो रही है, बट अब हम घर वापसी कर चुके हैं। वेलकम चैट। एक बार जितने 50 लोग चैट में हैं, 100 लोग चैट में, एक बार सबके सब हाई लिख दो भाई कि भाई हम हाजिरी देते हैं। हम आए हैं एरिगेसी अर्जुन को सपोर्ट करने के लिए, हु इज प्लेइंग विंसेंट काइमर। भाई जो 2025 साल अगर दो प्लेयर्स का रहा है तो इट इज काइमर एंड प्रग। इनमें से एक यहां पे खेल रहे हैं काइमर एंड अर्जुन। टू बी ऑनेस्ट वही दो खिलाड़ी हैं जो कैंडिडेट स्पॉट सबसे ज्यादा डिजर्व करते थे, बट दोनों का छूट गया। तो ये सिर्फ एक मतलब गेम नहीं है, ये एक बदले की भावना है कि भाई साल मेरा नहीं, तो एक टूर्नामेंट में कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो अभी मुझे अंत में कुछ धुआंधार बल्लेबाजी करनी, मुझे दिखाना है भाई दुनिया को कि भाई मैं हूं असली हीरो भाई। सो यही सोच रहे हैं यहाँ पे, यही मैं अपनी शादी में सोचा था, बट लेकिन हो नहीं पाया। पर फिलहाल के लिए अर्जुन के गेम पे अगर हम राइट में नजर डालें तो दो तीन चालें ही हुई हैं अभी। हमने अगर स्टार्टिंग से जाए तो बताओ F4 से चालू किया था उन्होंने, एंड लाइव पोजीशन तो आपके सामने है ही। एंड ऑफ कोर्स ब्लैक से खेल रहे हैं विंसेंट काइमर। चैट फॉर्मेट क्या फॉर्मेट है? 2 गेम्स ऑफ 30+15, 30+10, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट। एंड 2 गेम में जो आगे निकलेगा वो जाएगा आगे, जो हारेगा वो जाएगा लूजर्स ब्रैकेट में। तो भाई बहुत ज्यादा सीरियस सीरियस गेम्स है। भाई वो फोन रोटेट कर रहा हूँ तो मैं उल्टा हो रहा हूँ। तो चैट बताओ भाई लाइक क्या चल रहा है दोनों साहब? साइड से ट्राई करा मैंने, तो वो यही वाला। ठीक है। सॉरी भाई। यो अब मेरे को थोड़ा सहज भाई, नीचे से कट कर दो मेरे को थोड़ा, इफ पॉसिबल। सहज भाई मैं यू आर ऊपर से। लाइव। लेट्स गो, लेट्स गो। सहज भाई क्या व्हाट्सअप करें, नीचे भाई? से कट कर दो, क्या बात है, क्या क्या कट करना है भाई? भाई 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 भाई, आज आप बिल्कुल फॉर्म में हो भाई। सुपर फॉर्म में भाई। कासल हो गई। कासल हो गई भाई भाई तीसरी चाल में। लेट्स गो। हाँ, लेट्स गो टू द स्टार्टिंग मूव्स एक बार। सहज भाई कैसे हम यहाँ पे आए? चैट यू हैव नॉट मिस्ड मच। 3-4 चालें हुई हैं, एक बार जल्दी से दिखा दो भाई कैसे हम यहाँ पे आए। बिकॉज व्हाइट ने E4 F4 फेंका है, ब्लैक ने B5 C5, एक बहुत ही इंबैलेंस पोजीशन लग रही है सहज भाई। दैट इज ट्रू। एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि यहाँ पर like who is even better, because it looks like white has all of the center, but black का बिशप जो 8 पे पड़ा है वो बहुत ही मतलब धमाकेदार लग रहा है। हम्म, ये बात तो है, ये बात तो है। Bishop on 8, and I think we have gone a couple of moves further. Knight F7 पे मुझे अब दिख रहा है उनका, and Knight F7 किंग को सेफ रख रहा है। एंड थैंक यू चैट, बिल्कुल आई डिड गेट मैरिड ओवर द लास्ट वीक, सो भाई या अब आई थिंक नहीं, वी हैव टू गो फ्रॉम एक्स जोक्स टू वाइफी जोक्स। अरे मजाक कर रहा हूँ, इट वाज सच अ एक ग्रेट ग्रेट सेकेंड ना। ग्रेट ग्रेट वीक, बट ओवरऑल वी आर बैक फॉर कमेंट्री नाउ। शादी व्लॉग कब आएगा भाई? शादी का व्लॉग नहीं है, बट शादी के दिन हमने एक चेस गेम खेली थी जो मैं अपने चैनल पे वीडियो डालूंगा। उसकी कमेंट्री एक्चुअली दिव्या ने करी है, सो ओके बायस कमेंट्री आई एम गोना से, तो वो वीडियो जाएगी भाई मेरे चैनल पे एक दो दिन में। फोटो अपलोड, फोटो मैं वेट कर रहा हूँ प्रोफेशनल फोटोग्राफी फोटोज का भाई। जैसी वो देगा मुझे, जैसी वो भेजेगा मैं फोटो डालूंगा भाई। मैं उसी का वेट कर रहा हूँ बस भाई, फोटो दे दे भाई, दे दो भाई। भाई हमने तो दिखा भी दी फोटो भाई।
हाँ बट दैट वाज लाइक, ऐसी फोटो में बहुत है, मेरे को वो चाहिए भाई, हाई रेजोल्यूशन ऐसे बोलते हैं ना, कुछ क्रेजी एक्सप्रेशंस वाली, वो भी चाहिए ना भाई, हाँ। वो वाली वाओ, डालनी है। अब हमारे हमारे कैमरा अरे भाई, अब साहिल भाई के लिए आर टू चीप, यू नो। दैट्स नहीं व्हाट नहीं भाई, हैपेंस मतलब भाई, इट्स, शादी के बाद आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं भाई। भाई दैट्स इट्स द नॉट दैट्स यू, द इट्स मी भाई। मतलब ओह 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 ओह, साहिल भाई ड्रॉपिंग फैक्ट्स, यो। अरे कहाँ भाई वो दिखाया फोटो भी भाई? बहुत। हमने हमने पॉग चैम्प्स पे फोटो दिखाई थी इन द बिगिनिंग, लाइक द फर्स्ट 10 minutes or so, you will be able to see it there, अनीशा जी। हाँ, एंड बाय द वे, कमिंग बैक टू द गेम, जब भी हम अर्जुन के खाली बोर्ड पे जा पाए तो जरूर लेके जाना भाई। आई थिंक वुड लव टू सी दैट, एंड अगर ये जो दो बोर्ड है ना, यू वुड लव टू हैव अर्जुन एंड देन मैग्नस, आई थिंक दैट विल बी द परफेक्ट सेटअप, जहाँ पे बहुत देखने में मजा आएगा। एंड टिक्को, आई थिंक यू विल बेनिफिट फ्रॉम लोअर रेस, मे बी नॉट इन दिस केस अनीशा, यूजली कपड़े ढंग के पहने होते हैं, मैरिज इज अ बिट डिफरेंट, सो मे बी इस केस में हाई रेस माइट बेनिफिट मी। पॉकचैन से जिसने अच्छा साजा कुछ डिफरेंट कमेंट्री कर रहे थे आप पॉकचैन से, आपने बताया नहीं मुझे। भाई बड़ी क्रेजी कमेंट्री हुई भाई पॉग चैम्प्स में। तो इट वाज मी एंड राकेश, वी वर जस्ट आफ्टर योर वेडिंग, वी जस्ट गो वेंट बैक टू द होटल, सेट अप एवरीथिंग। बड़ी जुगाड़ वाली थी यार वो। ना अपने पास प्रॉपर कैमरा था, ना मतलब माइक था अपने पास, बट इट वाज क्रेजी भाई, बड़ा जुगाड़ वाला सीन था, बट इट वाज सो मच फन। बढ़िया बढ़ ब्रॉड बाय द वे, थैंक यू पॉल मॉर्फी जी, किसने ज्यादा पॉल मॉर्फी जी मुझे वेडिंग की शुभकामनाएं देंगे भाई, क्या ही जमाना आ चुका है। एंड मीनवाइल, Saj bhai had too many crazy इट्स ऑन moves. भाई। अच्छा, oh Akash bhai, I didn't know he was playing some moves also, but yeah, समय भाई वन, उससे बेटर क्या चाहिए भाई। समय पॉकचैम जीत गया भाई, दिल को खुशी मिल गई यार, लाइक ही डिजर्व्ड इट यार, ऑल्दो आई डोंट थिंक उन्होंने 2000 रेटिंग टच करी है, बट आई काइंड ऑफ फील कि जिस दिन वो टच कर देगा ही माइट लूज सम ऑफ हिज इंटरेस्ट, तो अच्छा है वो 1999 पे रहे भाई जिंदगी भर, मजा आएगा भाई। थैंक यू शिवम भाई। इज टुडे द लास्ट डे? नहीं, टुडे इज ओनली द सेकंड डे। 4 दिन का इवेंट है, 8, 9 और 10 और 11। साज भाई, 4 दिन का इवेंट, यूजुअली लंबा होता है फ्री स्टाइल, बट इस बार 4 दिन का है। क्या लग रहा है, मतलब क्या अर्जुन विन दिस वन? I think good chance, but I feel the biggest threat right now is Sindarov. He is absolutely on fire, and I kid you not, he has been playing some fantastic chess. हम कह रहे हैं कि अर्जुन ने हराया मैग्नस को, but साहिल भाई, Sindarov defeated Magnus on the first round itself in this event. So he is the biggest threat I think that we have against Arjun. उनका फाइनल्स में देखने में बहुत बहुत मजा आएगा मुझे। बट यस, अर्जुन हैज अ सॉलिड चांस, ऑफ कोर्स दिस इज आई थिंक हिज फॉर्मेट। फ्री स्टाइल, एकदम क्रिएटिव प्ले, वेरी अग्रेसिव एंड फास्टर फॉर्मेट भी है, तो आई थिंक दिस इज हिज सॉर्ट ऑफ थिंग। बट सिंडारोव आई थिंक इज द प्रॉब्लम जो हमें फिक्स करना है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, सिंदारो सडनली वहां पे जीते वर्ल्ड कप, यहाँ पे भी क्रेजी चेस खेल रहे हैं, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ वन विन कैन सडनली गिव यू द कॉन्फिडेंस दैट यू नीड, राइट, टू काइंड ऑफ एस एवरी सिंगल बैटल। एंड मीनवाइल अगर आप देखो कि अर्जुन की गेम में ही पुश दैट पॉन टू E5। भाई E5 क्या मूव है साज भाई? आई थॉट मे बी वी शुड भेजो हैव एक बार। डेवलप्ड अ बिट मोर, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। एक सेकेंड, E5, 1 सेकेंड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिक्स समथिंग। वहां पे जाना था क्या सीक्रेट रूम में? मुझे भी लिंक भेज देना भाई अच्छा, प्लीज। रुको, मैं फिर हाँ, से भेज रहा हूँ एक बार। आप वो दूसरा स्क्रीन कर दो, दूसरा स्क्रीन कर दो ताकि वो स्क्रीन। ठीक है। आई एम जस्ट सॉरी चैट, स्मॉल इश्यूज here and there, but we are just fixing it right now. And are we live? Is this fine? वो नीचे से एक बार प्लीज थोड़ा सा और क्रॉप प्लीज, नीचे से काट काट दो यार, वो तब से कह रहे हैं साज भाई, थोड़ा वो ट्रिम कर दो थोड़ा सा। थोड़ा सा और इफ पॉसिबल। Oh, we are. Oh, I love this scene, भाई. Finally, and we have हाँ, Arjun भाई full focus में। And जो बोल लो भाई, जो भी फ्री स्टाइल कई लोग बहुत पसंद करते हैं, कई लोग कहते हैं कि इट्स नॉट रियल चेस, बट लुक एट द सेटअप यार, इट्स सो ब्यूटीफुल। फ्री स्टाइल चेस का अर्जुन एरिगेसी लिखा है, विंसेंट काइमर लिखा है, जैकेट्स का कलर, ब्रांडिंग, भाई इट्स जस्ट एब्सोल्युटली स्टार, मतलब ए क्लास। एब्सोल्युटली भाई, मजा मजा तो आ रहा है। एंड मैं एक चैट पढ़ना चाहूंगा। टिकू भाई, वी मिस्ड यू सो मच। एंड भाई, चैट के साथ मैं बहुत रिलेट करूंगा बिकॉज साहिल भाई, मिस्ड यू भाई, मिस्ड यू सो मच।
भाई मजा ही आ गया। ताज भाई, प्रॉब्लम है, इट्स नॉट मिस यू, इट्स मिसेस यू नाउ। ओ यो, टीकू भाई रॉक, सहज भाई शॉक। भाई, चैट को ये नहीं पता हमने यही जो कभी क्रैक किया था जब लैग हो रही थी स्ट्रीम, वी डिसाइडेड टू रिपीट इट। बट इट वॉज वर्थ इट डैम। भाई, वर्थ, क्रेजी। ओके सो अब ये पोजीशन है E5 फेंका है अर्जुन ने, एंड अपेरेंटली विंसेंट हैज टू शॉर्ट कासल, एंड इफ ही डजंट, इफ लेट्स से इफ ही टेक्स ऑन E5, व्हाइट टेक्स बैक, देन ये F7 के नाइट पे थोड़ा प्रेशर बन सकता है। हम्म। थोड़ा रिस्क तो लग रहा है विंसेंट की पोजीशन में मुझे। या आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि यू डोंट वांट टू टेक दैट पॉन। अगर आपने वो पॉन मार दिया E5 पे, सडनली एफ टेक्स पे रुक की फाइल खुल रही है किंग की तरफ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एज वाइट। सो मे बी ब्लैक को बस ऐसे सॉलिड रखो, एंड मे बी इट्स नॉट टू रिस्की, यू कैन इवन जस्ट कैसल एज ब्लैक, एंड सडनली योर किंग इज ऑल्सो ऑन द जी फाइल ना। सो फार वेरी इंटरेस्टिंग, बट nobody has the upper hand, I feel. Proper chaos on the board, and yeah, it is too soon to say who's going to have the advantage. And let's not forget, chat time format कल 10+5 था, but आज थोड़ा सा different है. It is 30 minutes plus 15 seconds because it's the semis going on right now. And जब tie breaks होंगे, then we'll go back to the 10+5 format. तो अभी आप देख रहे हो दोनों का टाइम थोड़ा सा ज्यादा है. So yeah, that's the difference in the time format. तो साहिल भाई, क्वेश्चन, ये टाइम जब बढ़ता है तो इसमें किसको फायदा होता है? मैं भी सोचता है कौन टाइम से बढ़ता है तो प्लेयर? किसको फायदा हो सकता है एक्चुअली। आई जस्ट फील कि यार टाइम, टाइम इज वेरी रिलेटिव साज भाई, लाइक यूजुअली आइंस्टाइन ने कहा है इक्वल टू MC स्क्वायर। इसका मतलब टाइम इज डिफरेंट फॉर एवरीवन भाई। आप समझ रहे हो मेरी बात? लाइक इट्स अबाउट हाँ, हाउ यू टेक इट, हाउ यू सी इट। लाइक आपके हाथ में, अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो टाइम बहुत जल्दी जाता है। इसलिए जब मैं चेस जैसे खेलता हूं तो हाँ। जैसे अगर आपकी शादी हो रही होती है तो टाइम जस्ट पासेस, लाइक कहाँ 2-3 हफ्ते चले जाते हैं पता भी नहीं लगता भाई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई लाइक मतलब आई लव चेस सो मच कि मेरा क्लॉक डबल देश दौड़ता है तभी, दैट्स व्हाई आई लूज एट चेस, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। सो इट्स नॉट मी, इट्स आइंस्टाइन। एंड मीनवाइल आई थिंक E5 के बाद अभी भी यहाँ पे कोई चाल नहीं चली, एंड अर्जुन उठ के चले गए हैं भाई। अभी उठ के अर्जुन कहाँ बाकी गेम देख रहे हैं, वॉशरूम गए हैं भाई? व्हाई वुड यू गेट अप आफ्टर 10 minutes ऑफ योर फर्स्ट गेम? आई थिंक बिकॉज बहुत टाइम है, हाफ एन आवर में तो चलता ही है. I'm sure like he's probably walking around. I think this is a good tactic also, like just to pace yourself. First day है, जीत गए तो you'll get your momentum back. I think he's looking quite good to me. या एंड मीनवाइल विंसेंट काइमर बात कितना, इट्स आल्सो दे आर, दीज आर टू स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, बट जैसे मैंने पहले भी कहा, आई थिंक जब तब शायद लैग हो रहा था, कि यही दोनों प्लेयर्स हैं जो कैंडिडेट्स आई थिंक मिस कर गए। लाइक आइडियली Hmm. दीज टू प्लेयर्स शुड हैव बीन देयर एट द कैंडिडेट्स, एंड बोथ ऑफ देम मस्ट बी काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड by that one qualification that didn't go their way. एंड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे ना उनको लग रहा है अब सब जीतना है भाई। जैसे अर्जुन जीता ना, ही वन दैट टूर्नामेंट लाइक डिफीटिंग विशी सर इन द फाइनल्स, राइट? एंड Hmm. उन्होंने जब हारे थे कैंडिडेट्स के वर्ल्ड कप में तो उन्होंने सैड इमोजी ट्वीट किया था। जब वो जीते उन्होंने स्माइलिंग इमोजी ट्वीट किया। सो Yeah. दैट टेल्स यू कि अब दीज टू गाइस आर लाइक अब तो मुझे सब जीतना है भाई, हटाओ वर्ल्ड चैंपियनशिप, हटाओ कैंडिडेट्स, वर्ल्ड नंबर 1 बनना है मुझे अब भाई, बस दैट मस्ट बी देयर गोल। You just reminded me of something, कि जो फाइनल्स था ग्रैंड स्विस का, इट हैपेंड बिटवीन अर्जुन एंड विंसेंट इटसेल्फ. विंसेंट को भी जीतना था, अर्जुन को भी जीतना था, टू हैव एनी चांसेस इन द कैंडिडेट्स, एंड वो मैच ड्रॉ हुआ था. So it's like that Fabi versus Nepo wala match sort of recreated, and now these players are facing each other since then for the first time. Insane. इनसेन एंड चैट, इनसेन से जल्दी से इनसेन नंबर ऑफ लाइक्स दे दो भाई, मुझे घर लेके जानी है भाई, अपनी बीवी को गिफ्ट करूंगा मैं। लाइक्स जल्दी से Nice. लाइक, लाइक कर दो Nice. भाई लोग। एंड मीनवाइल E5 के बाद विंसेंट सोचते हुए क्या हम मैग्नस की गेम पे एक नजर मार सकते हैं, बिकॉज ही इज प्लेइंग फैबियानो कारुआना, जो मतलब इज द लाइकली कंटेंडर, द अगर मैं किसी बंदे में मैगी लगानी होती साज भाई राइट नाउ टू विन द कैंडिडेट्स, इट माइट बी फैबी। सो वो कैसा खेलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस पोजीशन जहां पे बार ऑलरेडी कारुआना को फेवर कर रहा है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पोजीशन दोनों साइड के लिए, बट आई थिंक मैग्नस को थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज सी, मैग्नस को F5 पुश करना है किसी तरह से,
and he wants to break the harmony of the structure. But like you pointed out previously कि white ने जो कासल कर ली है उसकी वजह से white का king भी थोड़ा डेंजर में पड़ सकता है. So हम्म. it's like you have to time this correctly. However, with Magnus's last two moves, last three moves, that is Bishop G4 was a mistake. Knight E2 was a slight inaccuracy, and D3 was also a mistake. यहाँ पे Wow. फाबी के पास एक बहुत crazy idea है, which is to play H5, kick the bishop away, and play H4 and kick the knight away, and then gain space. And eventually, Black is the one who attacks on the king side. भाई he doesn't find it and h5 h4 एक ही पॉन से लगातार लात पे लात मारे जा रहे हैं, मतलब मैराडोना शर्मा जाए. बट क्या होगा यहाँ पे, क्वीन C7 प्लेड एंड एक सुनहरा मौका है मैग्नस कार्लसन के पास. आई लव दिस सीन बाय द वे समय भाई. दिस इज अमेजिंग. मैग्नस के एक्सप्रेशंस देखने को मिल रहे हैं हमें एंड ही कुड पोटेंशियली प्ले दैट पॉन मूव. सहज, हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ इजी इज इट टू प्ले f5 हियर? I think it is something. If it is not the first move that comes to your mind here, then something is wrong. Like I think I'm 100% sure if Magnus doesn't play f5, it's because he analyzed it and then he didn't like it. The fact you cannot convince me that Magnus is not looking at f5 right now in this position. And now what he analyzes and whether he decides to go for it is a different story, but definitely he's looking at it. But so let's go a bit deeper, भाई. f5 के बाद problem ये है कि ब्लैक जी पॉइंट से मार सकता है इसको. एंड द प्रॉब्लम इज कि यू कैन नॉट रिकैप्चर एज योर G4 बिशप इज हैंगिंग. यू हैव टू फाइंड बिशप H5 and somehow you have enough compensation, like you take away this knight, you bring the queen in like this. Something like this is probably his idea. Yeah, and if you take on e4, suddenly f6 falls. Yeah, bishop f6 aa raha hai, and it's just curtains. So maybe this is like a Magnus kind of move. f5, he should be able to find it, but पिछली दो तीन चालों में he's made a couple of inaccuracies. So I'm not still sure. And this tells you, Saj bhai, again कि जितने भी आप strong player हो, freestyle chess really is gonna test you. Absolutely. And इस चीज से मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग sort of pattern देखा फ्री स्टाइल में. And maybe Sahil, you'll disagree, but कल भी जब मैंने पूरा commentate किया, and you are also I mean we also commentated two different events of freestyle event. Like जब भी H4 और H5 जैसी चालें होती है ना, जो बेस्ट मूव्स होती है, वो प्लेयर्स खेलते नहीं है. लाइक आई डोंट नो इफ आई एम क्रेजी हियर और नॉट, बट बिकॉज मे बी H4 H5 क्लासिकल में डजंट मेक एनी सेंस. बट जब भी H5 बेस्ट मूव होती है, कोई खेलता ही नहीं, किसी के दिमाग में नहीं आती है. कल कितनी बार हुआ था कि अर्जुन को H4 रुक H3 ऐसे करके कुछ निकालना था, और ब्लैक को H5 रुक H6 करके निकालना था, और किसी ने नहीं निकाला. Actually, इट that's a वाज great क्रेजी. point, Sajbhai. You know why they don't do it? I think it's because कि usually normal chess को पता होता है king कहाँ कैसल करने वाला है. You have an idea, तो जब push करना है h pawn a pawn, you can be free about it, right? You have some idea. Freestyle में कैसल कहाँ करना है, कब करना है, किस तरफ करना है, दाएं करना है, ऊपर करना है, बाएं करना है, नीचे करना है, कुछ पता नहीं होता. So that means कि भाई, if I push the h pawn, I'm basically saying goodbye in some cases to my king side castling options, and he doesn't want to do that. And that's a great point mentioned, Sahaj bhai. Chat. H5 तो नहीं खेला. अब Magnus about to play F5 now. Can he find the only move? Meanwhile, let's jump back to the Indian superstar Erigesi Arjun playing Bishop C7 खेला. आखिरी move. Can you go back a couple of moves? Bishop C7 he plays, white goes knight E4 and black plays bishop to B6. and किसी ने बोला Arjun is losing now. भाई आप कौन से बार को देख रहे हो? Because ये पोजीशन किसी मतलब ये कोई भी जीत वो सकता है, अलग कोई बार भी को हार देख रहे सकता हैं भाई. वो देख नहीं रहे हैं भाई, वो ज्यादा ही विजिट कर रहे हैं अभी. हाँ. है. इन्फ्लुएंस इज अ थिंग भाई, इन्फ्लुएंस इज अ थिंग. एंड अर्जुन भाई, लेकिन अर्जुन को ये पोजीशंस बहुत पसंद है भाई, वो बहुत केओटिक बंदा है. तो आई थिंक he's gonna love what's gonna happen here. अभी यहाँ पर भी you can go C4 apparently to stop black from pushing this and gaining sort of this activity for the bishop. C4 I really like for white here. एंड कुछ कुछ तो क्वीन को लाओ यार, वापस क्वीन को लाओ कुछ H5 पे कहीं कुछ ना कुछ करके, एंड देन अटैक. रिस्की आई थिंक फॉर हिम. For This is Vincent. that kind of position. अगर आप notice करो, pattern recognition है chess at the end, and both black players, be it Fabi as well as Keimer, have not castled yet. That's very interesting, and I think कि because white moves first, I think bishop on a1 जो है ना, that's on their minds कि भाई castle करूंगा ना, तो suddenly that bishop can be a beast, and दोनों players I think यहाँ पे थोड़ा सा hesitant है. And that's why I think maybe practically this might be an easy position for white. But okay, the advantage might be temporary. But फिलहाल के लिए You black said players you are said castling. Fabi, right?
Yeah, Fabi as well as Keimer, both black players, not castling. That's very You interesting to know, me. Fabi just Magnus just found f5. It's on the board, Oh wow, wow. So and now Magnus Carlsen ef5 only move for Fabi, or otherwise he's cooked. and Guy EFI position. UFF के बाद क्या है? Let's say take. ef5 उसके बाद भी ओनली मूव है भाई, नाइट सी e5. Yeah, that's not difficult to find, I think. Knight c5 तो Yeah, निकल जाएगी. E5 is, I think, more risky, tricky, I think. and the bishop is kind of stuck on G4. Yeah, I don't know where you go with the bishop now. H3. Apparently you take here. h3 पे जाओगे तो कुछ खराब है उसमें. I'm हाँ. guessing g5 g4 आ जाएगा भाई. Oh, बिशप ही ट्रैप. बिशप यही wow. आ रहा है क्या? Oh wow. हाँ, भाई Oh g5 is wow. like winning. g5 g4. Wow. Like one like sort of hand move and you're cooked. Oh, by the way, he goes e5 knight c5 हो गया बोर्ड पे. Wow. So Magnus Carlsen बहुत. is facing some pressure, counter pressure from Fabiano Caruana. And time wise though, Magnus के पूरे 15 मिनट है. Saraj bhai, how much of a factor was time yesterday? I think pretty big, because every single match was going down to the wire, like in seconds. Even the game that Arjun defeated Magnus, like it was दोनों प्लेयर seconds में खेल रहे थे. But then again, जो प्लेयर जीत रहा था ना, उसके पास usually at the end में 20 सेकंड 25 सेकंड ज्यादा होते थे. Like that, Hmm. those 20 seconds matter so much. I think in any format, but freestyle में सबसे ज्यादा, because it's such a Yeah. interesting and creative position. या मैं तो कहता हूं दोस्त 20 सेकंड्स की वैल्यू जानना बहुत जरूरी है. हम कम समझते हैं बट दैट कैन बी द डील ब्रेकर एट द एंड ऑफ द गेम. सो मीनवाइल, बाय द वे, वन गाय इज कंप्लीटली विनिंग आउट ऑफ ऑल दीज फोर बोर्ड्स. दैट्स लेवॉन अगेंस्ट हैंस, एंड हैंस ने कर दिया है ब्लंडर. ही इज लॉस्ट. व्हाट? Oh my God. भाई And साहब. this doesn't even look like a freestyle position anymore. This is proper classical position, and you're dead lost. Why Aronian also, let's not forget him. Yeah, like he's the defending champion. He won the previous edition, and now here also he finished second. Like tidy हुआ था उनका. Last match Sindarov जीत गया था, और Aronian को draw हुआ था Magnus से. It's like he's in the या form of his life. He chose Hans, has a winning position, and भाई, in between breaks, वो भाई सनग्लासेस लगा के एकदम टेक के एकदम आराम से सोफे पे बैठ के एनालाइज कर रहा है. He is here to have fun. He is having so much fun, and I think he's acing it. भाई ही इज एसिंग इट. एंड एस 4 पे ही आएगा बिशप भाई. अभी जल्दी से रुक को अटैक आ गया है, अटैक आ करते गया हुए. हो. एंड रुक d8, नाउ नाइट f5. एंड कस्पारोव सर ने कहा था गिव मी अ नाइट ऑन f5 एंड आई विल गिव यू अ चेकमेट, ऐसे कुछ कहा था. एंड सडनली द ब्लैक किंग इज हैविंग नो, ब्लैक हैज नो स्पेस, नो पीसेस, नथिंग. G3 और एक और नाइट को पीछे जाना पड़ेगा. दिस इज जस्ट सो सैड फॉर ब्लैक. आई थिंक लेवॉन अरोनियन अबाउट टू विन हिज फर्स्ट गेम, एंड टाइम पे भी 6 मिनट आगे. Another thing that I would like to mention is that king side तो ठीक है मान, knight f5, great point there by you. But let me ask you a question. भाई ये जो knight a6 पे पड़ा है और ये bishop जो 8 पे पड़ा है, इसका क्या future है? Like this knight has no way to escape. This bishop is blocked by both of my pawns. You need at least 3 to 4 moves to activate, actually ज़्यादा, to activate both या of these pieces. Basically you're playing like with two less pieces on the board. आपको नाइट बी 8 वापस ही जाना पड़ेगा. वेरी इनफैक्ट द बेस्ट मूव इन द पोजीशन इज नाइट बी 8. यू नो Bye. एआई इज स्टीलिंग जॉब्स, बट ये बंदा का कोई जॉब ले नहीं सकता भाई. खुद ही डिप्रेस्ड है भाई. नाइट बी 8 इज द बेस्ट मूव बैक. सो दैट जस्ट टेल्स यू हाउ बैड दिस इज. एंड आल्सो क्वीन इज डिफेंडिंग द नाइट, राइट? सो मतलब क्वीन कैन नॉट इवन कम आउट. बाय द वे, what are the squares for the black queen? Can't come to d7 or e6. I mean, and if you move the queen to b8, b7, that's already stupid. So black has no moves literally. क्वीन g4 आ सकता है, बट यू जस्ट किक इट विद h3. क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ही प्लेस g6 टू अवॉइड नाइट f5 वाले आइडियाज. बट इट्स जस्ट पोजिशनली लॉस्ट, लाइक बिकॉज ऑफ आई थिंक दीज टू सॉर्ट ऑफ, क्या कहते हैं इसको, ब्लैक शीप बोलते हैं. और व्हाट डू यू से, like the piece that is like completely like the reason why the position is so bad. I think that's the word. But yeah, knight a6 and bishop 8. That's used to be called Sahil Tikku of the position, but now थोड़ा change हो गया. अब not अब तो completely भाई useless. सभी चेंज हो गया है. अब तो सब भाई कुछ चेंज हो गया भाई. भाई फर्स्ट स्ट्रीम that साहिल भाई is doing after being married. भाई भाई कैसा लग रहा है? भाई मेरे Tell us बहुत सारे about it फर्स्ट आ भाई. रहे हैं. First meal after getting married in my own home, that was Maggie. First stream, Oh, first ये, respect भाई. first वो,
फर्स्ट चेकमेट भाई, बहुत सारी चीजें फर्स्ट होंगी अभी तो. ग्लैड टू हैव सो मेनी फर्स्ट. एंड साज भाई, होपफुली यू आल्सो फाइंड अ सेकंड सून. आई मीन चेस वाला सेकंड. मीनवाइल गोइंग टू द गेम ऑफ अर्जुन एक बार जल्दी से, बिकॉज अर्जुन भाई इज भाई अपेरेंटली भाई बेटर. सीरियसली भाई मिस्ड यू भाई भाई ये आई अरे सीरियसली मिस्ड यू भाई भाई यार अरे मजा भाई, आ गया मिसेज भाई. यू भाई, मिसेज यू भाई. अब लेट्स गो भाई. Okay, he goes queen c7, and now Arjun, I think, in the driver's seat with these two sort of advanced pawns in the position. We were talking about this queen being a bit sort of out of place, and now one of the best moves for white is apparently to go queen d1 and to put it on this diagonal, basically, where the bishop kind of moves away maybe to h5, and the queen sort of joins the attack with queen g4. And then this king on f8 is, matlab, I mean, I'll be nice. It's in some danger. That's me being nice. And I mean, just to show you a sample variation, I thought queen d1. Let's say a black says, I just want a castle, yeah? But my rooks are connected now. And suddenly e takes f6. And if you take g takes f6, for example, just to show you, there is bishop takes f6 already that works. Wow. You भाई take, EF6 पे क्यों नहीं काम कर रहा था? Takes and this hangs, yeah? ef6 पे I think maybe the knight on e4 is hanging. Yeah. Oh, it is working actually. ef6 पे knight f6 works though. Why, what? Oh, bhai sahab. Knight F6 is crazy. Knight F6 is absolute. GF6, Bishop F. Woof. Oh, Bhai, खत्म. Arjun Erigaisi is going to destroy, I think, Vincent Keimer. बहुत ही जल्दी. The important thing is that he finds Queen D1, bhai. That's the most Yeah. important thing. Let him find Queen D1 and we are in. एंड चैट बहुत जरूरी है प्रिंसिपल समझना. इन अ चेस गेम इट्स वेरी हार्ड to attack without a queen, so get a queen in your life just like I did. Meanwhile by queen d1 incoming. Oh, भाई भाई अब जोक्स थोड़े absolutely. चेंज करने पड़ेंगे साज भाई. इट विल टेक सम टाइम. पहले के Falcon बोल रहे हैं to become world number one must start with winning Tata Steel Chess Classical 7 times like Magnus did. I don't think so. I think I would disagree with you. I think if you want to reach GOAT status, then yes, world number one means current world rankings में अगर आपकी rating number one पे है तो you're world number one basically. That's what it means. अगर and I think Magnus के case में what you're trying to say is कि Magnus is the not just world number one, he's the one of the greatest, is the greatest player of all time. And वो अगर आपको reach करना है, then yes, you have to win everything that you play, and Tata Steel is being one of them. Yeah. एंड टाटा स्टील इंडिया में कौन कौन खेल रहा है? आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द प्लेयर्स, राइट? आई थिंक अर्जुन, एक नहीं है विदित. भाई, वो रिवील नहीं करना, ठीक है? एक नहीं है वो, आपको अच्छा पता है. अच्छा, रिवील नहीं करना है क्या? ए- अच्छा अच्छा, ओके, माय बैड. एक देन आई एक विल. एक है जो, एक ही है जो नहीं करना है. यू नो विच वन. रियली? आई नो. आई नो बट आई नो यू नो, बट वो रिवील नहीं करना है बस. वो पता नहीं है लोगों को भी. अच्छा ये सबसे अच्छा, क्रेजी ओके, वाला मे बी. है. हाँ, तो मैं गलत वाला बता दूंगा, तो लेट्स जस्ट नॉट रिवील एनीथिंग हाँ फॉर हाँ, नाउ. एक्चुअली आई नो. ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो. वो मत ही बट बोलो. एनीवेज, साज भाई, यू नो, अच्छा नहीं, what is this suspense, Levon? No suspense, bhai. I think we will have the position right now. By the way, time situation. I know we mentioned ki by the time control 30 minutes the kya at the start. It's very obvious they took a lot of time. Look at this. 30 minute थे clock पे. Arjun has already used 22 minutes out of that for just 9 moves. That's insane. भाई जब ग्रैंड स्विस में उनके पास 2-2 घंटे पड़े होते थे, तब वो 9 मूव्स के अंदर 1.5 घंटा लगाते थे भाई. इधर ऐसे चेस प्लेयर को जितना टाइम दे दो वो यूज कर ही लेंगे कुछ ना कुछ करके. तो इट्स लाइक 10 मिनट है तो 10 के 10 यूज करेंगे. मतलब इट्स अ स्ट्रेटजी फॉर दीज गाइज यार. बट या, Yeah. at least he's utilizing his time at his position well. He's thinking in the critical moments. Queen d1 is not an easy move. If he finds it, he has, I think, a very very good chances ahead. But yeah, the follow up is not so easy. Yeah. And also black at c4 ka. At some point he will give that check. But of course we can just put the king in the corner. बस वो g pawn push नहीं करना है. I think usually साज भाई कहते हैं f pawn मत करो. But g pawn f तो कर दिया. एक गलती हो गई, but okay, attack के लिए कर रहे हैं. But g pawn push नहीं करना है. Otherwise, वो bishop on a8 suddenly starts smiling and there could be some tactics, knight takes e5, something, कुछ crazy हो सकता है. So Arjun's for now looking in the driver's seat. साज भाई 2 गेम का मैच है सिर्फ. So अगर पहला गेम जीत गए, it's like the World Cup, yeah? इन मेनी मेनी रिस्पेक्ट्स, कि मतलब 2 गेम का मैच Exactly. है, अगर 1.5 कर दिया तो आप अगले राउंड में चले गए. Exactly. तो फर्स्ट राउंड जीतना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट दैट मोमेंटम. And I think Arjun is on track. By the way, whoa, great. Bhai, what an update. I'll just quickly switch. Look at this chat. The tournament leader
Sindarov Javokir, the birthday boy, is losing against the guy who scored 0 out of 7 भाई yesterday. ये है तो चेस भाई आपके लिए. I just want to say something कि if I had played this event, me and Param would have the same number of points, which is not परम great. भाई, Param परम bhai, भाई sorry, मैं love you, नजर bhai. था. I absolutely love Parham bhai, but I think 0 out of 8 is so hard to imagine. Like I just saw this, like the rankings today. I was shocked. I was like, this must be an error, yeah. There is no way You he know, scored 0 points. but you know what the sad thing was? He was 0 out of 6, and going into the last round, he had Magnus. That is By the way, bhai, Bishop F6, भाई brilliancy, उदय bhai. भाई उदय चोपड़ा की तरह खेल रहे हैं भाई, पहले पीछे जाके कम बैक कर रहे हैं. बिशप टेक्स F6. आइडिया क्या है इसका साज भाई? व्हाई कांट ब्लैक जस्ट टेक बैक? Sorry about that. Bishop takes f6, and I think the point is if you go gf6, let's actually have that on the board. We have f5, and this queen very smartly Oh, looks at the h6 knight, alongside, of course, the g6 knight as well. So he is nothing short of being absolutely cooked. I think Sindarov का wow. बर्थडे वाला वो जो क्या कहते हैं, बर्थडे का जो मोटिवेशन था, कल उसका बर्थडे था बाय द वे, and Oh. वो चला गया, and we can see Parham actually taking down the tournament leader भाई, जिसके 0 वो tournament leader से बाहर आ रहा है. कल वो अनबीटन था सिंडारोव. भाई साहब चूल्हा जल चुका है एंड पक रहा है यहाँ पे. सिंदारो भाई, जैसे साज भाई ने कहा, ही इज बीइंग कुक्ड राइट नाउ. क्वीन C1 से नाइट पे अटैक, G6 नाइट अटैक, एंड बाय द वे बिशप 6 ऑन द बोर्ड. अभी मारेंगे वापस. आई डोंट थिंक यू कैन इग्नोर द बिशप, बिकॉज वरना बिशप वापस जाके बैठ जाएगा, या G7 भी मार देंगे हम लोग, हमें कोई शर्म नहीं है. सो अनफॉर्चुनेटली सिंदारोव अबाउट टू लूज टू द लोएस्ट रैंक प्लेयर इन द स्टैंडिंग्स. मीनवाइल आई एम गोना चेक द गेम ऑफ मैग्नस. क्या वहां कोई अपडेट है साहज भाई? Magnus is the, oh, by the way, a very fun update for you guys. 4 games are going on. 3 games में, 2 of them white is winning, and 1 is white is better. The only game where white is worse is the game of Magnus. That's crazy, no? Magnus है भाई. एक गेम And जहां पे आप जहां पोजीशन खराब है वो मैग्नस है. And That's to be freestyle honest, you for look at the position, it looks like white should be better to me at least, because 94 आ रहा है. I can see the, imagine मेरी क्वीन और रुक एक फाइल पे है, आपका किंग है उस फाइल पे, और इकलौता एक पॉन रोक रहा है उसको. I would assume it is better for white. So why is black better here, Sahaj? I have no clue, but I think Fabi does have to play some, let's say, critical moves in order to get his advantage. Like, you know what the best move here is? Chat से तो पूछ भी नहीं सकता मैं, because it's so crazy. The best move is Rook G7. इसका मतलब समझ आ रहा है, समझा दो. समझ आ रहा मैं है. मैं जरा पूछता बहुत हूँ किसी बहुत से अभी. आई थिंक पॉइंट है कि किंग G8 जाके उसको सेव करना है. ओके, हाइंडसाइट मेक्स सेंस, बट भाई रुक G7 कौन खेलेगा यहाँ पे? रुक F8 जाओगे ना, ताकि किंग G8 पे आके एटलीस्ट रुक तो यहाँ पे नजर मार के रखे. एंड एक रुक और चाल देखो G7 कौन साज भाई. जाएगा? व्हाट इज दिस? एक और चाल देखो, एक और अच्छी चाल है, क्वीन C6. सो बेसिकली थ्रेटनिंग चेकमेट इन वन. नाउ बिशप H3, बेस्ट मूव, डिफेंडिंग G2, एंड नाउ रुक H8, threatening rook takes H3 followed by queen G2 mate. So white now plays queen takes C5, knight free ka because pawn is pinned. Rook takes H3, and now उफ. knight E4 only move. भाई सब कुछ hanging है, and this is going to be fire on the board because knight G5 check आ रहा है भाई, क्या क्या आ रहा है, and God knows who's better here. Yeah, and by the way, we do have an update. Doesn't go for any of this. He plays bishop D8, and now Magnus has that blue arrow on the board. I don't think, by the way, H4 is the only move here. There's also knight E4 that works. But yeah, he has 2 moves, knight E4 and H4. If he doesn't find this, Magnus is going to be a lot worse. Like almost -1 का advantage है. Wow. Chat, Magnus Carlsen. Oh, Bishop actually mistake and suddenly rook H8. Magnus Carlsen is worse. Fabiano Caruana statement मारते हुए यहाँ पे कैंडिडेट से पहले, क्या वो हरा पाएंगे? We'll come back to this quickly. So let's jump to the Arjun game. क्या वहां कोई अपडेट है? Because Black ने B4 खेला है, which feels Why? like positionally dubious. What? Arjun played Queen D1. Arjun actually Ooh. played Queen D1. What is going on? And B4 and King H1 he plays king को साइड स्टेप करते हुए ताकि C4 चेक ना आए. भाई दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव, बिकॉज B4 का पॉइंट ये था, उसको एक चेक हाँ. देना था अटैक करते हुए. किंग हटता तो फिर C3 करके बिशप बंद कर देता वो. Oh, एंड उसने deadly. किंग H1 खेला. अब C4 खेलने नहीं दूंगा मैं आपको. वेरी वेरी स्मार्ट मूव बाय अर्जुन.
And now, भाई ये king is super 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 dangerous. अरे हुरैन भाई, थैंक्स लॉट फॉर द विशेस। बिल्कुल, अभी यहाँ पे अर्जुन को हम चेयर कर रहे हैं। अर्जुन ऑन द लेफ्ट, काइमर ऑन द राइट। साज भाई, अगर हम प्लेयर्स को हटा दे, फ्री स्टाइल में एक ट्रेंड होता है, दे हैव डिफरेंट कलर सूट्स। इफ यू वर प्लेइंग फ्री स्टाइल, यू गिवन अ चॉइस कि भाई किस कलर का सूट आपको पहनना है, तो आप कौन सा चूज करोगे? Black. ब्लैक या? 100% always black. Always black. Once you go black, you never go back. साहिल भाई शॉक्ड है। भाई सूट की बात कर रहा हूँ। भाई बट या थोड़ा खांसी आई आ गया, थिंक पानी पानी but नहीं है अभी। black, I think black suits are amazing. So yeah, that would easily be my color. What about you, Sahil bhai? Let me guess, let या me guess, let me guess, let me guess, let me हाँ guess. I think you would क्योंकि शादी में आपने ब्लैक ही तो पहना था आपने. हाँ, You had रिसेप्शन that में bow ब्लैक पहना tie. था, हाँ। हाँ, रिसेप्शन में ब्लैक पहना था, हाँ। तो ब्लैक ही या आई चूज थिंक, करोगे. नहीं, आई थिंक आपने ब्लैक ले लिया, एंड आई गेस यू लव ब्लैक अ लॉट, सो आई एम गोना गिव यू दैट वन, नॉट गोना स्टील दैट फ्रॉम यू साज भाई। आई थिंक यू डिजर्व इट। तो आप कौन सा चूज करोगे. Sensing some deep love there. I would maybe choose blue. I think मेरे ख्याल से अर्जुन is definitely wearing it, so एक वो connection भी है कि तो अर्जुन पहन रहा है। तो I'm going to choose blue. Chad, which color suit would you choose? I think, even yellow is a bit different, has that tangy color. I love that as well for Kaimer. So lots of interesting choices. Yeah, for sure, for sure, for sure. Falcon ji बोल रहे हैं, when someone like Keimer Levon wins freestyle, everyone appreciates them. But when Magnus gets 9 out of 9 and Grenke freestyle wins Paris freestyle, say who cares about freestyle anyways? But nobody says that. I think nobody ever says that. In fact, we have said this hundreds of times on stream that Magnus winning Grenke Classic 9 out of 9 is one of the, I think, the biggest not achievements तो नहीं बोलूंगा मैं, but one of the biggest like things for me, because open event में 9 out of 9 score करना is no joke. No Hmm. joke, like that is so impressive. तो Yeah. I think वो थोड़ा गलत है. I think people do Yeah. appreciate Magnus doing that, but it's just Magnus wins everything. Yeah, that's why it's, कोई और आता है तो ज्यादा मजा आता है लोगों को, because नया Yeah, नाम है. true. True. And no joke is also the title of my upcoming stand-up special. तो बिल्कुल आना भाई। फिलहाल के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, बिकॉज नाइट D4 खेल दिया है यहाँ पे विंसेंट काइमर ने, नाइट को सेंटर में प्लॉन्क कर दिया है। एंड इफ यू टेक दैट नाइट ऑन D4, then suddenly the C file opens up, but it also gives white some advantages, of course. So काफी interesting decision. Does he take that knight? Does he play knight D2 or develop, and does he play something else? तो बहुत क्रूशियल मोमेंट फिलहाल के लिए, बहुत डायनामिक पोजीशन साज भाई, स्टिल नो क्लैरिटी ऑन हुज बेटर। Yeah, I think you summarized it well there. However, I feel after bishop d4, cd4, this file is open, but I think my knight on b1 has this future of sitting on c4, which is okay, not an outpost, but it's a really nice square because it blocks your access to the c file, and my knight on c4 is a beautiful piece. So maybe I think bishop d4 is possible, technically speaking, but let's see what Yeah. he goes for. Yeah, and by the way, 5 minutes versus, I think 5 minutes. So neck to neck chal raha hai chat. We're reaching the final crunch moments of game number 1 of day number 2 of Freestyle Chess South Africa. दो गेम का मैच है, अगले राउंड में जाना है तो 1.5 स्कोर करना है, and he takes the knight, and that was the best move Sahaj by Arjun, and E6 played best move again. Wow, Arjun Erigaisi in full force today, breaking the king side. Black goes d takes e6, forced here, then bishop takes e6, and I'm so close to your king. I am so close. And then let's not forget, Sahil bhai, after bishop e6, the queen also jumps into h5. भाई ये Yeah, तो I मेट हो think सकती है. बिल्कुल, यू मेंशन दिस वे बैक, या दैट इज द पॉइंट। बिशप हटा, सडनली रानी गेम में बिशप का आया E6 पे, क्वीन आया H5 पे, एंड सडनली थ्रेटनिंग मेट ऑन F7। वो घोड़ा कह रहा है भाई ये मेरे साथ ट्रेजेडी हो रही है, मुझे हटाओ। एंड ऑल्सो द H7 पॉन विल बी हैंगिंग, एंड रुक भी F1 पे, रुक है E1 पे। व्हाइट के पीसेस क्या बढ़िया लग रहे हैं। सो ऑफ कोर्स ब्लैक हैज काउंटेबल, बाय द वे। लेट्स नॉट फॉरगेट द बिशप ऑन 8, लेट्स नॉट फॉरगेट द क्वीन अटैकिंग C2, बट फिलहाल के लिए मोमेंटम, इनिशिएटिव व्हाइट के पास है। Yeah, I think initiative, momentum, सब कुछ I think Arjun के पास. By the way, one of the only moves for black here is to play g6 to avoid white to go queen h5. एक बार queen h5 आ गया बोर्ड पे तो खत्म है. Played by Vincent, and now Arjun has to strike again. Let's go f5. Break open the position, open both files, and just attack the black king with everything you have.
अरे थैंक यू चैट फॉर द विशेस, लव यू चैट। अभी बहुत क्रेजी कंटेंट पीसेस बनाएंगे हम लोग, बिकॉज नाउ आई हैव वन मोर प्लेयर विद मी, बिकॉज वो भी चेस प्लेयर है। सो इट्स गोना बी लॉट्स ऑफ कंटेंट कमिंग अप सून, बट मीनवाइल कौन अगर सा हम चेस पोजीशन प्लेयर है पे, भाई? क्या है क्या? कौन सा चेस प्लेयर है भाई, हमें भी बताओ। भाई हमारी नई नई दुल्हन। ओ अच्छा। भाई रिवील करो ना यार, अब तो रिवील कर दो ना। पता है भाई चैट ने अर्जुन को कितनी बार जीतने दो, पूछा उसके मेरे बाद से कर। करते हैं। अर्जुन को जीतने चलो के बाद एक गेम करते हैं। जीतता है, फिर उसके बाद साहिल भाई रिवील्स। हाँ ठीक है। ठीक है चैट। Meanwhile, knight 2 played, he doesn't play f5, and now by the way knight 2 was the best move in the position, and black के पास कोई भी आसान मूव नहीं है। For example, the best three moves are castles, king g7 and rook d8, and all three of those don't have a clear plan, they are defensive moves, so फिलहाल के लिए पूरे की पूरी बाजी अर्जुन के हाथ में। And I also think out of the three moves you mentioned, maybe King G7 makes the most sense because at least मैं हाँ King को कोने में लेके जा सकता हूँ। थोड़ा हाँ safe feel कर रहा हूँ मैं temporarily. I think that's what I would play. But this bishop on e6, wow, what a piece, यार. I mean, after you go f5, you provoke g5, queen h5 incoming. Who is going to take care of this bishop? कोई नहीं भाई, कोई नहीं। मे बी इट शुड हैव आल्सो गॉटन मैरिड, बट मीनवाइल नाइट कमिंग टू D2, Hmm. क्या करेंगे यहाँ पे? नाइट आल्सो कमिंग टू C4, बाय द वे वो सी फाइल ब्लॉक करते हुए, एज यू मेंशन साज भाई। एंड आल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट कि व्हाइट के रुक लिफ्ट भी पॉसिबल है, रुक F3, रुक H3, लाइक इट्स स्टिल अ पॉसिबिलिटी एट सम पॉइंट, सो अटैकिंग पॉसिबिलिटीज काफी। एंड 4 मिनट से कम है विंसेंट काइमर के पास, ही इज फीलिंग द प्रेशर। कैन वी गो, डू वी हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग फुल स्क्रीन? आई वुड लव टू काइंड ऑफ सी द नर्व्स on Vincent Keimer's face. इंडिया बहुत बार आए थे, साज भाई। व्हाट डू यू मेक ऑफ विंसेंट काइमर? 2025 में बहुत बढ़िया खेले, चेन्नई जीएम जीते, बट ही मिस दैट कैंडिडेट स्पॉट। क्या लग रहा है उनके अगला गोल क्या है उनके हिसाब से 2026 का? I think, of course, to qualify into the candidates and try to, win the candidates and challenge the world champion. I mean, he's already 2750. He's done basically everything that, one can sort of hope to achieve as a chess player. A Taiso can be a goal as well, but I think this would be my goal for now. Hmm. Arjun, Keimer, both in similar situations, missed out on the candidates. यहाँ पे looking at the clock, Arjun knows, Sahil as you bhai, mentioned, साज भाई। हाँ साज भाई। Sahil bhai, just give me like 1 second. I'll be right हाँ back. हाँ हाँ। एज साज आई मेंशन अर्लियर कि भाई वो 20 सेकंड्स का जो डिफरेंस होता है ना इन द फाइनल फाइनल मिनट्स ऑफ द गेम, दैट मैटर्स अ लॉट। तो वही टाइम एक्स्ट्रा अभी अर्जुन के पास है, ही इज अ मिनट अहेड, 60 सेकंड आगे चलते हुए। वो बहुत क्रूशियल फैक्टर हो सकता है गेम में। उनको सिर्फ मोमेंटम मेंटेन करना है। अभी ब्लैक ने क्वीन C6 खेला, ही इज अटैकिंग द बिशप ऑन E6, दैट्स अ थ्रेट। ही इज आल्सो पुटिंग प्रेशर ऑन द G2 पॉन। अगर मान लो मैं यहाँ पे नाइट को हिला दूं, नाइट F2 खेल दूं, तो क्वीन टेक्स G2 इज मेट इन वन, सो आई कांट डू दैट। सो व्हाइट को यहां पे खेलना चाहिए F5, दैट ओपन्स अप द F फाइल, दैट डिफेंस द बिशप, एंड ब्लैक किंग की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। लेट्स गो F5 भाई, धुआंधार बल्लेबाजी करनी भाई, सहवाग की तरह खेलेंगे आज। चैट बताइए, स्ट्रीम लाइक करते चलो भाई, लेट्स कितने लाइक्स हुए चैट यार, कम ऑन यार, लेट मी चेक। सो लाइक्स है हमारे भाई लोग 400 वॉचिंग और सिर्फ 85 लाइक्स। ओ माय गॉड भाई, अर्जुन रो देगा, मैं भी रो दूंगा। चैट कम ऑन, जल्दी से 200 लाइक पहुंच जाने चाहिए भाई, जल्दी से। क्वीन को G4 पे लेके H4 ऐसा कर सकते हैं। क्वीन G4 डेफिनेटली एन ऑप्शन। द ओनली थिंग इज क्वीन G4 जब भी आप खेलोगे, आपको ध्यान रखना है ब्लैक का कुछ H5 F5 या नाइट H6 ना है। बट क्वीन G4 डेफिनेटली गुड ऑप्शन, बट आपको ओपोनेंट की सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी पड़ेंगी उससे पहले खेलने के लिए। F5 तो आप आंख बंद करके खेल सकते हो भाई, इट्स अ नेचुरल मूव। कर दिया, बढ़िया भाई। एंड चारे पास जितने लोग चैट में हैं, एक बार सबकी सब लोकेशन है तो कहां कहां से आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं? वी आर लुकिंग एट फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम साउथ अफ्रीका। भाई मैं पता है साउथ अफ्रीका की उनकी रील्स देख रहा हूँ भाई, चेस बेस इंडिया की, फ्री स्टाइल की, भाई क्या अर्जुन की, इनकी हेलीकॉप्टर राइड्स पे जा रहे हैं भाई, इतना मजा आ रहा है देख के। मैं सोचा काश मैं भी हेलीकॉप्टर में जाता भाई, फील आती। बट ओके, आई मीन सो नाइस टू सी द प्लेयर्स एंजॉयिंग फॉर अ चेंज, बट नाउ वी आर ऑन द बोर्ड, अब तो स्ट्रेस हो ही रहा होगा। बिल्कुल भाई, बट रा- लेकिन what a beautiful resort it is. What a beautiful, like, so naturey. हाँ I mean, it's भाई, amazing. I've been to Cape Town, bhai. It's my favorite, one of my favorite cities to be in, bhai.
दो चीजें. पहली चीज, बाय द वे, आई कैन सी कोलकाता, रांची, उत्तराखंड, वाकांडा, पेरिस, गाजियाबाद, प्लूटो, मार्स, मतलब इंटरस्टेलर व्यूअर्स भी हमारे. दैट्स अमेजिंग टू सी. मैंने एक देखा, विदित का एक थंबनेल देखा था कि वो कह रहे थे $5,000 पर नाइट. तो प्लेयर्स क्या ऐसी जगह पे रुके हैं क्या भाई? क्रेजी है फिर तो. हाँ भाई, $5,000 a night. Yes, I also read this. It's unbelievable, yeah. But Cape वाह. Town, like Cape Town के जो ये जो nature reserves होते हैं ना, they're super expensive, but they are like one of the best places you can go to. Like it is so good. वाह भाई, तो $5,000 पर नाइट, क्रेजी क्रेजी होटल बुक हो रहे हैं, तो होपफुली परफॉर्मेंस भी क्रेजी क्रेजी होगी. एंड मीन वाइल अर्जुन यहाँ पे सोचते हुए, आई लव दिस कैमरा एंगल, वी कैन सी द एक्सप्रेशंस. बाय द वे, आई वाज अ बिट बिजी साथ में विद द मैरिज, सो आई डोंट नो, लाइक विदित इज नॉट प्लेइंग, नो, सो व्हाई इज ही इन No, केप no. टाउन? आई वाज क्यूरियस. I'm also wondering the same thing. I'm not sure वो क्या कर रहा है वहाँ पे, but I'm not sure. I thought maybe commentary कर रहा होगा या फिर हाँ. कुछ होगा, कॉन्ट्रैक्ट में होगा कुछ, but I'm not sure. But वो खेल तो नहीं रहा है भाई. But सही है भाई, हाँ, एग्जैक्टली. वेकेशन बढ़िया. It's a nice हाँ, vacation बट to be in. हाँ, maybe it's a vacation, but at first I thought he's commentating, but would love to know कि वीडियो में क्या कर रहे हैं. By the way, look at this move, rook to g7. We saw this move in an earlier position. Sahaj, you mentioned this. Finally, black finds it, defend किया knight on f7, and now we see that crucial brew arrow. Only move for Arjun to maintain the advantage, or everything he has built up so far evaporates. Yeah, 100% agreed. Oh, by the way, there was a cool tactic here as well, which I think would be nice to see. The bishop was hanging here on e6, but if black goes queen takes e6, then white has this beautiful move, knight to c5. And the idea is कि Oh. आप queen को हटाओगे, then knight e6 check Oh. and you're forced to give up the queen. Wow. Oh, he doesn't find it. He did not. Arjun has not found that move, and now he's worse. That's a big mistake by India number one, Erigesi Arjun. Bishop goes back to c4. I think he was gearing up for that move, Sahaj, that knight e6 idea, right? If black goes f5 here, suddenly my knight jumps to g5, knight comes to e6, and I'm winning the position. But unhone overestimate kiya. Maybe he felt the push was a bit slow, and now black has a chance to unravel. What is black's best idea here? I can see one crazy tactic here. I'm not sure how to like implement it. Like if I play knight d6, it's not working. Sahil bhai, आपका कैमरा and हाँ, मैं knight कैमरा लगा रहा d6. हूँ. Knight d6 I think में नहीं चल रहा. Knight h6. Oh, by the way, best move played by Vincent Wow. Keimer. And now we see the blue arrow once again for Arjun. Knight g3 to save the position, because if the knight jumps to f5, the knight can go to e3. And that can be a huge problem. Knight g4 से भी आ सकता है, but point is कि knight g3, knight g4 के बाद I don't have to restrict my rook anymore. I can play rook e6. And तब आप knight e3 पे बिठा भी लोगे तो कुछ होगा नहीं उससे. But tough position for Arjun here. Wow. So, chat, we went from much better to slightly worse in one move. And what did Arjun play? He plays queen d2. I think also a good move. Black goes, I think knight f5 is the move. I think point is कि आप b4 के pawn को मार सकते हो. So knight e3 में थोड़ा concession मिल जाएगा आपको. Oof, चलो मेरा कैमरा तो आ गया एटलीस्ट. दैट्स वन गुड न्यूज. बट होपफुली अर्जुन की इवैल्यूएशन भी वापस आ जाएगी. क्वीन d2 साज बाय, एज यू मेंशनड, ब्रिंगिंग द क्वीन आउट, नॉट अलाउइंग एनी फोक्स ऑन e3. हाँ, हाँ. And chat, by the way, क्या लग रहा है पूछेगा? Do you think Arjun still wins? Yes or no? Spam कर दो. Saj bhai, what's your prediction? He was much better. Now he's slightly worse. Does he win this game? I think he can definitely win this game. Definitely. Sahil bhai, sorry, एक second वापस आया. Something is happening. Just be right back. ऐसा एक सेकंड में साहस भाई कौन सा काम कंप्लीट करने वाले हैं? चैट, डू लेट मी नो. मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है. एनी गेसेस बता देना मुझे. मीनवाइल a5 ऑन द बोर्ड. सो वेरी नाइस मूव होता है ना. यू डिफेंड द पॉन ऑन b4 जो क्वीन अटैक कर रही थी, एंड यू आर गेनिंग स्पेस. कल को ये पॉन a4 जाएगा, मार दोगे. कल को यू कैन इवन प्ले a4 a3, एंड वो a2 पॉन कुड बी अ ह्यूज वीकनेस इन रुक एंड गेम. एनी रुक एंड गेम, एनी किंग पॉन एंड गेम, ब्लैक विंस, बिकॉज मेरे को सिर्फ a2 पॉन मारना है और a पॉन क्वीन जाएगा. सो ब्लैक इज नाउ स्टार्टिंग टू अक्यूमुलेट a bunch of these advantages. So मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे कि अर्जुन has to be very very careful now. Otherwise, विंसेंट काइमर, जिन्होंने अपना बड़े स्टाइल से अपना कॉलर एडजस्ट किया था 2 मिनट पहले, could be fighting for an advantage. The tide is turning. चैट करिए yes yes, Arjun will, no he will not win, draw maybe. Chat was confused. Arjun, by the way, still in thought. Time situation 1 minute and 12 seconds for the India number one. Suddenly, Vincent Keimer, the German legend.
German prodigy, I'm going to say, actually, not actually legend. He's still kind of rising up the ranks. He is the one who has almost double the time. So, pura situation, palatte hue. He has to play now. Plays with what? Knight g3 played, nice move, and now pawn to e6. वो जो f5 break है वो रोकते हुए, also blocking the bishop on c4. But guess what, chat? The best move for white. कौन गेस करेगा चैट? व्हाइट की बेस्ट मूव. आपको खोलने हैं दरवाजे, आपको फाड़ देने हैं सारे रिस्ट्रिक्शंस. क्या खेलना चाहिए व्हाइट को? बेस्ट मूव. कम ऑन चैट. What is the move that gives white the best chance? Arjun about to play. Can he find that move? F5 Indian merchant नहीं खेल रहे. Arjun is not playing F5. He has to play F5. Come on, Arjun. You have to play F5. That is the best move. Looking at the clock. 50 seconds on the clock now. Oh, he plays H3, second best move. Okay, not a bad move though. Not a bad move. That's the good news. Prevents knight G4. Very important. And now he can next maybe try F5. So black को खुद F5, knight F5 खेलना चाहिए block करने के लिए. So Arjun still in the race, still in the race. Chad, you were all correct. F5 was the move. Just opening things up. Black की king की तरफ जाना है. Bishop खोलेंगे, knight खोलेंगे, rook खोलेंगे, सब कुछ खोलेंगे भाई. ध्यान रखो, black के piece देखते हैं. Bishop on 8, well placed. Bishop on b6, okay, kind of well placed. Queen c6, well placed. You know, the rook e8, well placed. एक बार ये knight h6 और ये रुक G7, जो ये दो पीस है, अगर डेवलप हो गए, थोड़े एक्टिव हो गए, तो अर्जुन कुड बी इन अ वर्ल्ड ऑफ ट्रबल हियर. अर्जुन टाइम आई नो बैड. दिस लुक्स रियली बैड. रियली बैड. सहज भाई, इतना खराब है क्या? भाई पोजीशन तो उतनी अच्छी नहीं लग रही है. नाइट F5 लुक्स वेरी वेरी टेम्पटिंग. और वो अटैक F5 से ही आना था, बट लेकिन वो F5 अभी तक आया नहीं है बोर्ड पे. एंड आल्सो टाइम, it can go either ways, but I don't like. Let's hope so. By the way, chat, I'm going to give you an overall update. Magnus is slightly better now. Arjun is slightly worse. Levon is much better. And Maksudlu is now much worse. Somehow Sindarov turned that game around. We'll check that later. Wow. But knight F5 played and taken. And it goes GF5. Mistake. What? Mistake by Vincent Keimer. He has to go EF5 in this position. GF5 ruptures the pawn structure and the E6 pawn becomes a target. But Sajva, it makes sense, right? I think EF5 is a hard move to play, right? Because आपका bishop खुल रहा है C4 वाला. So kind of understand what he did there. But now Queen F2, best move played. The queen is coming into H4, potentially grabbing the pawn on F6. That could be curtains. Queen H4, very very nice move. Also, let's explain to the chat why he went GF5, because of course pawn structure तो खराब हो ही रहा है, but I think Vincent wants to connect these bishop and the queen with the rook and connecting it on the G2 square. That's, I think, is what he wants to do. Yeah, for example, can we move the knight on F3 maybe to D2 for a second? just to unleash the drama. So Queen F2, let's play like King F7 maybe from the black side, and Knight D2 and Rook G2 is just GG. Khatam. Khalas. Ghar jao bhai. By the way, Vincent about to play. By the chat, look at this. Wait, I can see 0 time on his clock. What's happening? What's happening there? Okay, Rook E7 he plays. He finds the best move. And by the way, he has only 30 seconds on his clock. Sahaj, we are reaching the final seconds of the game. Chat, final prediction. Arjun Keimer draw. Sahaj, what's your prediction? I think it can go either ways. But now after GF5, I kind of like Arjun's chances. By the way, only move for Vincent. He has to play Queen D6 or he is done. And he plays it. Wow. Wow. The point is, Rook E1 के बाद Black can go Bishop D5 and save his pawn on E6. Wonderful find by Vincent Keimer. Wow, both the players battling for survival now. Maybe Queen H4 is the move. I was thinking कि भाई Queen को लाके F6 पे attack करते हैं. Also defends the pawn on F4, by the way, which is now kind of being attacked by the Queen. So interesting position. क्या करेंगे यहाँ पे Arjun? He has 26 seconds to figure it out. Oh, that's not enough time. But hopefully he makes a move quickly. Knight H4 is the move that we are thinking of. By the way, quick update for everyone. Magnus is completely lost against Fabiano Caruana. What? Oh my God, Magnus is losing. Magnus is completely dead lost. Wow. We'll jump to that, but yeah, let's look at this game, because of course यहाँ पे एकदम crunch moment चल रहे हैं, hoping Arjun can pull it off. But Magnus is down at game 1 with the white pieces, not looking and great he lost. for him. It's over. He lost. He resigned. Magnus Carlsen has lost to Fabiano Caruana, and that is a huge upset. We'll come back to this. This game too will be very interesting. Let's go back to the Arjun game. Meanwhile, 10 seconds for Arjun. 9, 8. भाई थोड़ा जल्दी चल. भाई 52. चलो. This is exactly
This is what I was telling you, that at the end, सब जिसके पास time pressure होता है, जिसके पास वो 40-50 सेकंड ज्यादा होते हैं, that person wins the game. Not looking By the great for way, Arjun. he has to take on f3 now. Vincent Keimer has to grab that knight on f3. Otherwise, he could be in for a world of trouble here. Wow, bishop d5 is also possible, but that's the weaker move out of the two. Bishop f3 is not easy to find. Let's see what he plays. Definitely not an easy task, but he does have some time, 25 seconds. Come on, Arjun. You can do this. Kal Magnus ko haraya hai. Ab Vincent ko hara do. Vincent thinking. 17 seconds. Can he pull it off? Feeling the pressure. Pulls up in his chair. Looks at the clock. 10 seconds now for him. He has to move the bishop. Where? That's the question. 5 seconds. Bishop d5. Mistake by Vincent Keimer. And now bishop takes d5, queen takes d5, gives Arjun a sizable advantage. The next move is a bit difficult. The queen h5 is what he has to play. Not, I think, a completely unreal move, though, because you're getting knight h4. And Sahaj, the point is, it's the knight versus bishop battle now. Which is the stronger piece? For now, the knight feels like a stronger piece. But if the bishop somehow comes to f4, then it's going to completely destroy the game. So I'm quite curious ki yahan pe kaun jeetega. This feels equal, but I'm not sure it'll end in a draw still. I don't think it's ending in a draw. I think definitely one player is going to win, and I think it's going to be Arjun now, because this bishop is a horrible, horrible piece. Even the rooks are super passive as well. One is stuck defending e6, and the other one is stuck, attacking nothing, basically. Knight, he reroutes the knight to c4. Nice outpost, bishop or queen to attack hote hue. And then the queen can go to f3. I think Arjun takes this one. Come on, Arjun. By the way, bishop c7 pe, you know what the best move is? Played, by the way. You know what the best move and the only move is? It's hard. Knight f3. Knight f3 is insane. Bhai sab, it's not easy. Bhai, I'm not sure now. Something is... Black has some ideas as well. या बिशप f4 पे बहुत डेंजरस लग रहा है भाई. रुक g7 भी आ सकता है इस पोजीशन में, क्योंकि रुक e6 पे रुक g2 भी मर सकता है. So lots of tactics hanging in the air. What do you even play in a position like this? यार ये bishop on c7, I thought this is a bad piece, but बहुत ही बढ़िया transfer to the right diagonal by Vincent Keimer. Now Arjun, 14 seconds. Knight d2 played, only move in the position. Not an easy decision to accept कि भाई knight c4 पे सही नहीं था. He accepts his mistake, retreats the knight back. Maybe he'll put the knight back to f3, and the game is on. Yeah. Also rook h6, rook takes h3 threat, by the way. Chat, let's get the streamline. Let's get more people into the game. Arjun battling it out. Who knows? He might play Magnus next. Jaldi stream like kar do. Let's get to 2, 3, 4, 500 likes. Vincent Keimer under pressure. 20 seconds on the clock. 18 seconds for Vincent. Queen d6. Mistake. Knight f3 is now the move. Queen f4 ko sack karte. Oh, he defends it. He doesn't have knight f3 in his cards right now. That's a very difficult move. Look at the best move, Sahaj. It's king e8. I mean, Pluto will be a planet if king e8 is a move. Yeah, it's not going to happen. It would be amazing if he actually plays king e8 right now. Queen d5. Misses. Is Pluto a planet? अब तो है. Apparently not, bhai. It was, but उसको downgrade कर दिया, bhai. Queen f3? But now? Yeah, Queen f3. I love that move actually. I like कि queen straight हो जाएंगे. Then मेरा king safe है. I can then start walking the king to d1 or some other place, trying to defend my weaknesses. And I don't know how do I win this, but oh no, he doesn't do that. Wait, bishop f4 पे d4. Knight d4, yeah. Okay. So he wants to take d4 if you take f4. Chat, do you think black should take on f? Oh, he takes it. Black now knight d4 is not the best move. Queen takes d4 is what he has to take, but not an easy decision. Knight d4 is where the hand goes, yeah, because it's the most simplest of the two. Yeah. Queen d4 is the better move. I think both players still confused who's the one attacking. I think both of them are attacking actually, because once the queen enters for white, the black king could be weak. But right now, black's piece is also up to like 8 seconds. Oof, takes with the queen. Queen nice d4 move. Taken. Come on. Chat, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है? Bhai, 10 seconds is so hard to play chess when your nerves are betraying you like this in crunch moments. Queen d6. Queen d6, best move in the position. Now rook e1 is possible. Queen takes d6 is also possible. दोनों players एकदम crunch moments पे. Play fast. Rook f e1 is logical.
He's going for it. Oh, Oh, he goes queen c4. wow. That's No very trade. interesting. And now look at this. Best move for black is bishop g3, which honestly, I mean, it's a decent move, but I'm not sure black will find What's it in the 6 seconds. what's the point of even bishop g3? No ways, yeah. And now King rook g7, f1. okay, Let's mistake. Mistake, rook mistake, bhai, f1. mistake. Ooh. Rook f1 is possible, attacking the e6 pawn. By the way, rook कब f1, से knight h4, and knight g6. Oh, wait, what? He sacrificed exchange. wait, knight takes g6 पे exchange मर गया है तो सीधा. The question is does, oh yeah, he takes it of course, at g6. But the position is still not winning for Arjun. को black के पास ये बहुत बढ़िया pawn structure है, and I think that's his compensation in the position. He goes And, d4, only and move look at for this. Vincent. Oh, wow. e5, the e5. only move. Wait, what if black plays king f7? Like, what does white play? Does he play queen c5 or what's the. Or Rook rook f3 f3. is the move, Rook f3. apparently. Wow. क्योंकि रुक f3 के बाद आप e5 नहीं खेल सकते ना, क्योंकि g3 मर जाएगा. Hmm. So e5 is a crunch move for black. He has to do it now. Otherwise, Arjun Eric. Oh, plays it. Wow, what a battle this is. Wow. Insane, by the way. Insane game by both players. Now d takes e5 is the move, and black का pawn structure untangle हो जाएगा after f takes e5, and then the game is on. He does have more than enough compensation in this position. And taking was the only move, by the way, played by Arjun. If d5 killed, to black would have been clearly better. And now you have to find a way to infiltrate with your rooks. You need, for example, the queen on 6, c6, the rook on d6, before black can coordinate all these pieces. Well, imagine the bishop on f4 and the queen on g3. You resign as white, yeah, sometimes. Hmm. तो queen d3 goes best move yet again, and now e4 only move for wins. भाई दोनों players only moves पे only moves निकाले जा रहे हैं. भाई 6 सेकंड में निकाल रहे हैं मूव्स ये सब जस्ट टू कीप दैट पर्सपेक्टिव इन माइंड चैट दे हैव नो टाइम ऑन द क्लॉक एंड नाउ e4 इज द ओनली मूव एट फर्स्ट ग्लांस इट फील्स कि भाई क्वीन d3 मार के मैं उसका पॉन से डैमेज करूंगा बट दैट पॉन कम्स टू d3 एंड स्टॉप्स e4 फ्रॉम ब्लैक सो कहीं ना कहीं पे ये पॉन एडवांस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैक For sure, 100% agreed. By the way, quick update for everyone. Levon Aronian and Hans Niemann have drawn their match. So वाओ two games have finished so far. And looks like Parham is going to lose against Sindarov as well. He goes queen takes d3. That's a mistake. Arjun ओके has a chance to take advantage with rook e3 in this position, but not easy. Not easy. I think the idea is can I distract the bishop enough to just gobble that pawn on e5, like rook e3, g3 at the right moment, and just pick up e5 and then push that d pawn all the way? As of now, doesn't feel likely. He goes rook d1. I think aiming for the d4 push. यही एक problem है इस position में. If you can remove these two pawns, and the rooks have open files, and Arjun will be virtually winning. Oh, chat, by the way, almost 800 people watching. Do like the stream. Let's get to 500 likes because Arjun यहाँ पे fight कर रहे हैं. इकलौते Indian. You know, when you're the only Indian playing an event, you know you've done pretty well to be there. And Magnus Carlsen भी खेलेंगे तो कल ही Magnus को हराया है. दोबारा मैच भी हो सकता है. Vincent Kai, by the way, raising his eyebrows. Still not sure about the valuation. Saraj भाई, practical play में which side would you be? White or black? I think I would still be white. I would still be Hmm. white because I think white can make a draw here. Black का भी कुछ ऐसा कोई crazy idea नहीं जिससे black win के लिए push कर सकता है. Black can only win Hmm. if Arjun over pushes. That's what I Hmm. feel. True. King True. e6, by the way, nice move putting the king on d5 ताकि ये pawn अगर आप d4 push करो भी तो मैं e4 खेल के सारा block कर दूं. I don't want to open up any files because then the rooks become super active. He goes बिल्कुल king ब्लॉक f1, कर दूं. bringing the king to the यही center again. या दिल्ली की हवा का भी यही मोटो है सब ब्लॉक कर दो भाई नाक हो या कुछ भी एंड फिलहाल किंग F1 सो किंग ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड ऑल्दो इट्स नॉट दैट इजी कहां जाओगे किंग लेके इट्स नॉट सुपर इजी यार रूक e3 बट व्हेन यू प्ले रूक d2 there's bishop f4 by the way bishop f4 He only goes move rook in the e3. position या बिशप f4 f4 खेल दिया तो rook e4 मिल जाएगा ना मुझे. तो he cannot give me the c file. That's the oh problem. So bishop साज f4 भाई goes rook f3, and now g3 का plan. Yeah. अच्छा g3 okay I thought rook c2 was deadly but okay oh king d4 यार this अब आई एम is नॉट श्योर कि मैं किसको पिक करूंगा. अब मैं थोड़ा this is ब्लैक को प्रेफर कर सकता हूँ. exactly this is a bit scary you are very passive and rook c2 आ रहा है उफ मुगी जी कह रहे हैं नाइस Yeah, पॉन that स्ट्रक्चर ब्रो आई मीन इट्स अ क्रेजी पॉन ऑन e5 ये पॉन ऑन e5 इज सो इंपॉर्टेंट राइट नाउ डिफेंडिंग द बिशप पोटेंशियली कमिंग ऑल द वे टू e2 ऑन अ गुड डे रुक c2 भी भाई इतना स्केरी मूव लग रहा है. आई एम नॉट इवन श्योर इफ आई थिंक नाउ विंसेंट इज प्लेइंग फॉर अ विन हियर. Risky, risky, risky. वाओ By the way,
Parham completely losing against Sindarov, so Sindarov might continue his streak of he's definitely going into the finals. I feel after भाई today. स्टार्टिंग में लगा था 3 वाइट प्लेयर जीतेंगे एंड कुछ क्रेजी होगा एंड सडनली हैंड्स का भी ड्रॉ हो गया. ही वाज कंप्लीटली लॉस्ट. सिंदारो वाज कंप्लीटली लॉस्ट. ही मैनेज टू विन एंड नाउ मैग्नस आल्सो लॉस्ट एंड अपसेट्स ही अपसेट्स हैं फ्री स्टाइल में. कुछ भी हो सकता है कभी भी. एंड H4 बाय द वे नाइस मूव आई थिंक आल्सो स्टॉप्स G5 and now you can when you play G3 black के पास भी G5 square नहीं है, so multi-purpose move just kind of connecting everything. And now the question is Hmm. rook C2 as strong as it looks? Yeah, rook c2, rook f2 खेल सकते हो to control this, but my question is, can I take this and just bring the king just to take your अरे pawns? बाप That looks a bit scary to me. अरे बाप रे साज भाई थोड़ा 9 डराओ seconds कम for भाई. Vincent. Plays rook c2. Rook Super f2 भाई played. forced ही अब तो खेलो फटाफट खेलो. By the way, if no rook f2, black is better. So let's keep that in Yeah, mind. Played. played. And now what do you do as black? I think as Vincent, probably you want to hold on to the rooks. Even if rook f2 is okay, I think it gives you more possibilities of a Yeah, but mating attack. Maybe rook king c3. c3. Yeah. I thought king c3 looks so tempting in this position. King c3. But he has a Like draw maybe, आप yeah? रुक से Saj रुक. bhai. He has a draw. Rook f3, rook Yeah, c2. Rook f2, rook c3. Maybe it's a draw instantly. but does Vincent want to draw? I think he will take it, yeah? He's Yeah, he repeating. plays rook c2. Now rook f2 only move. And Oh, he's he's taking, they're repeating. taking a draw. Now Arjun, by the way, also has one more move, by the way. That is G4, which is not going to happen. I know you could change the gravity of the planet and that's not going to happen. So G4 to kabhi nahi aane wala. Don't even know what the idea is there. So rook f3, I got very likely, and it's going to be a draw. Unless he overpush. Oh, like, okay, no, he plays rook f3. Yeah, I think it is clear Arjun is okay with a draw. Now Vincent having that final think to decide whether Hmm. he wants to take a draw or not. He does have the momentum, he has the active pieces, but the question is, does he believe in the position to continue? There is bishop e3, for example, trying to win the d3 pawn. I don't have king e2 because of check. So if Vincent wants to continue, he has ways to create nuisances here for Arjun. Exactly. Vincent has the option, Arjun does not. Bishop e3, nice move by the way. King e2 would be horrible. Okay, rook c2, Nah. that's a repetition, threefold. Yeah. Threefold repetition. Both players take a draw. That was a tough match. Both players, oof, वो exhale जो last में निकलता है ना, that tells you how relieved both Hmm. the players are. Saj bhai, crazy game ends in a draw. इसका मतलब अगला game is a knockout straight. Yep, knockout straight for Arjun Erikaisen. By the way, one final game remaining between Parham and Sindarov. And this game looks like Sindarov is definitely going to win. But yeah, by Arjun saves the day. And अब black से खेलना पड़ेगा. But it's freestyle, तो I think black का वो इतना disadvantage नहीं है. It just depends on what type of position you get. But I definitely don't think this is a bad thing, yeah, to start off with a Yeah. draw. I think freestyle में ऐसा है कि you could get a completely lost position as black in 2 moves, but you could also completely equalize in 2 moves. So it's a double-edged You sword, can yeah. also win. If You might हाँ actually be winning in like 5 moves as well. ऐसा भी हो सकता है. हाँ true. Time control is 30 plus 10, I think, if I'm not mistaken. And 10-second increment is very, very helpful. For example, Arjun ने पहली 9 चालों के लिए ही अपनी 30 minutes में से 22 minutes use कर लिए थे. So starting के moves पे players are really focusing a lot. And Parham, by the way, this is just a heartbreaking event for him. If you can go to the live position, Saj bhai, वो refresh वाला दबा दो. I think he's going to lose his 9th game in a row now. Wow. Wow. Okay, this is completely lost. Rook g5 hanging. It's rook versus knight, two pawns each. इनमें से एक pawn तो मर ही जाएगा for sure. And that is it for Parham. Parham को फिर black से Sindarov को हराना होगा, which is a Herculean task, considering that he's 0 out of 8 going into this event. Yeah, I think Parham is भाई about to be knocked out. भाई 9 गेम लगातार यार. आई मीन दैट्स गोना चैट. आई डोंट नो कितनी गेम आप लगातार मैक्स हारे हो जिंदगी में, बट फॉर मी इन क्लासिक इन ओवर द वर्ल्ड चेस इट्स 4. एंड इन ऑनलाइन चेस आई एम नॉट इवन श्योर इफ आई लॉस्ट 9 गेम्स इन रो. आई एम श्योर राकेश भाई स्टैट निकाल के मुंह पे दे मारेंगे, ये ले 200 गेम हारा है तो लगातार, बट 9 गेम्स इज इनसेन. Yeah, he goes knight e4. By the way, rook versus knight. He's trying to hold on to this pawn, but it is not going to be enough there. The rook is too powerful because it's too active. Even if you play something like d5, it still should technically be winning.
Now it's just a matter of how he converts. Yeah. And also, Chad, I mean, you're playing strong player after strong player. So एक भी weak player नहीं मिलता है. तभी मैंने फ्रीस्टाइल से तो कहा था कि मुझे भी खेलने दो, एक प्लेयर बीच में वीक डाल दो, जो भी हार रहा होगा उसको एक विन तो मिलेगा, बट सुनता नहीं फ्रीस्टाइल चेस. एंड नाउ परम मकसूदलू इज सफरिंग. नाउ नाइट अटैक, you have to bring it back maybe to d2, but then black starts moving his king forward. And also I think the main thing is रुक को बहुत दूर रखा है उन्होंने नाइट से. That's very very smart. कोई Hmm. भी रैंडम चेक पे कोई फोक नहीं लग सकता because there's too many files in between. Also, like for everyone in the chat, this is the best formation you can have against a knight because knight को एक दो तीन चालें लगती है just to give a check. So if you think the knight is a tricky piece, diagonally king को रखो दूर, and that's it. He goes rook Yeah, h2, attacking the pawn. He plays a4. अब a5 करके ब्लॉक कर दो इसको, and then bring the rook to a2. absolutely. And meanwhile a4 played, thinking Param Maksudlu कि भाई क्या मैं यहाँ रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता हूँ. I think the answer is no, but he's still gonna try. Meanwhile, Sindarov just running away with the tournament, continuing from where he left at the World Cup. भाई क्या ही celebrations हुई थी साज भाई. We were there जब वो दौड़ते दौड़ते गए थे ऊपर अपने उस पे celebrate करने के लिए. Hmm. And this could be another event back to back that he could win. I remember he got like some apartment, no, from the federation or something like that, Yeah, yeah, yeah. from the president itself. Crazy. भाई 3 BHK apartment. भाई मैं क्या जीतू कि मुझे भी कोई 3 BHK गिफ्ट कर दे साज भाई. मुंबई में गिफ्ट कर देगा तो मजा आ जाएगा भाई. भाई आप तो जीत ही गए हो, आप तो लाइफ में जीत गए हो भाई. दैट्स वाह मोर वाह 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 इम्पोर्टेंट. भाई. क्या ही शब्द साहज भाई से भाई. बिल्कुल सही बोला. बट कोई गिफ्ट करेगा 3 BHK तो भाई डोंट वरी भाई, यू कैन डू इट भाई. मीनवाइल A5 पॉन कर दिया है पुश, ए पॉन को फिक्स कर दिया है. एंड नाउ रुक A3, रुक A4 कुड बी अ थ्रेट. या दिस इज जस्ट लॉस्ट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली. Yeah, you can see from Sindarov's body language as well. He knows he's winning. It's just a matter of how or when Parham decides to resign. या Looking sad यार for Parham यार. कब केप टाउन गए, 5,000 का कमरा भी लिया, and then this happens. Yeah, बाय द it's वे, so sad. there was a tweet by the World Chess Federation just an hour ago. FIDE and Norway Chess have agreed on the key qualification pathways for the Total Chess Tour. That is the tour that symbolizes the Total Chess World Champion, the pilot tournament of the new World Championship concept. The format is part of the broader Total Chess World Championship Tour that will crown an overall champion across Fast Classic, Rapid, and Blitz, and is officially approved by FIDE. And इसमें उन्होंने लिखा है कि so qualification is out. 24 प्लेयर होंगे चैट. एंड लुक एट द क्वालिफिकेशंस. 2 प्लेयर होंगे द रीनिंग वर्ल्ड चैंपियंस, both open and the women's world champions. So Gukesh and Wenjin Chu directly qualify. Next is 3 medalists of the World Rapid Championships. So World Rapid top 3 आओगे, you qualify to the tour. Next is finalist of the World Blitz Championships. So top 2 of the World Blitz. Next is top 9 players in the classical rating as of 1st Jan 2026. So Hikaru is in. Next is winners of the candidates Oh. tournament and the women's candidates. Now I'm not sure like okay, candidates जीतने के बाद आप qualify कर रहे हो ऐसे इवेंट में जो candidates में qualify हो रहा है. It's like a Hmm. time loop सहज भाई, but okay, candidates winner. Next is top 3 players in the classical rating as of June 1, 2026. So अगर आप जैन में हाई रेटिंग नहीं है तो जून में करके भी आप क्वालिफाई कर सकते हो. एंड फाइनली 3 स्पॉट है फिडे सर्किट. सो आई एम अज्यूमिंग कि फिडे सर्किट से कोई टॉप 3 समथिंग दे विल क्वालिफाई एज वेल. सो काफी इंटरेस्टिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ऑल्दो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग बट इट्स गोना बी एक्साइटिंग. And there we have it, by the way. Sindarov Javokir resigns. Sorry, he wins. Parham Maksudlu resigns, and Sindarov is one step away from qualifying to the finals. आई थिंक तो सेमीफाइनल ना साज भाई, आई थिंक Semi-finals, sorry. Yeah. सेमीफाइनल्स. या Crazy. सो चैट. By 95% की accuracy के साथ. What a player. या एंड परम मकसूद के लिए दुख हो रहा है भाई, 9 गेम में लगातार हारे. एंड अगला गेम में भी इट्स नॉट गोना बी इजी राइट, 8 बिकॉज भाई. ही हैज टू गो फॉर द विन. He has to go for the win. 8 भाई, 8. And you know what happens when you go 8 है for the भाई, win. Yeah, you 8. lose. 8 कैसे? 8 है अच्छा कल भाई. 7 थे क्या? कल 7 अच्छा थे कल 7 थे, और 7 अभी थे. एक हाँ हुआ. ठीक ठीक. 8 गेम्स.
So hard luck for बट Param, but स्टिल okay. 9 भी हो सकता है भाई, सेंडारोव से ब्लैक से खेलना है उसको। आज में गुड कमेंट वो बाय भी चैट यार। की नीड अनदर विदित एक्सप्लेनर वीडियो। बिल्कुल भाई, वीडियो भाई, लुकिंग आउट फॉर दैट रील। बाय द वे, देयर यू सी Param walking out of the players hall, and you know chat, I've heard amazing things about the venue, the accommodation, the players and the commentators and everybody staying at, like it's so good कि you know you all South Africa miss कर रहा हूँ साथ। I've not even been there and I'm missing South Africa. Bhai, I have been not to this reserve, of course, but I've been to Cape Town many times, and it is beautiful, beautiful, Hmm. beautiful, beautiful. कभी कोई टूर्नामेंट वो कॉमनवेल्थ वगैरह नहीं खेला आपने कभी, जो भाई 2011 व्यू में हुआ देखो था एक यार, बार कॉमनवेल्थ? भाई व्यू देखो यार, ओहो क्या व्यू है भाई, वहां बैठ के जो चेस में इट इज आई टेलिंग यू, साउथ अफ्रीका का जो नेचर है, इट इज अनमैच्ड, कंप्लीटली अनमैच्ड। हम्म, बट आपने वो बढ़िया। कॉमनवेल्थ नहीं खेला था क्या? 2011 में हुआ था जोहानिसबर्ग में, देन उसके बाद पी में नहीं हुआ था भाई, मैं 2014 में। मैं मैं चेस नहीं, मैं लूडो का चैंपियन था उस टाइम। भाई मैं बता रहा हूँ आपको, इट्स वन ऑफ द बेस्ट लाइक कॉमनवेल्थ लोकेशंस दैट आई हैव बीन टू, वाज द वन हम्म। इन जोहानिसबर्ग एंड इन पी में। तो भाई इतना इतना क्रेजी था वो, सो हम्म। सो ब्यूटीफुल। एंड बाय द प्रोड्यूसर साहब, अगला राउंड कितने बजे चालू है? अगर हमें कुछ आइडिया मिल पाए जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कितना ब्रेक है अब, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर कोई कंफर्म कर पाए हम ये चीज तो, बिकॉज आई होप 1 घंटे का ब्रेक नहीं है। 1 घंटे में तो, 1 घंटे में तो मैं वर्कआउट करके आ जाऊं भाई सहज भाई। भाई वर्कआउट कर ही लो मेरे हिसाब से, बिकॉज आई थिंक वी हैव क्वार्टर फाइनल्स का गेम 2 इज एट 7 PM, 1 घंटे में है भाई। बट मे बी दे काइंड ऑफ डू इट अर्ली, या बिकॉज गेम जल्दी खत्म हो गई। आई एम जस्ट होपिंग फॉर इट। वरना मुझे साउथ अफ्रीका की टिकट भेज दो यार, फ्री स्टाइल वालों यार। आई मीन आप मुझे और साहज भाई को टिकट भेज दो। आई थिंक हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम वहीं आके 1 घंटा वेट कर लेंगे, क्यों साहज भाई? इसी इसी प्लेस में, वही इसी काउच में जाग बैठेंगे हम। भाई, इस टाइम पे तो वहां की फ्लाइट लेके पहुंच के कमेंट्री कर सकते हैं हम। एग्जैक्टली, 1 घंटा अगर एग्जैक्टली, वेट करना है तो। एग्जैक्टली। सो फ्री स्टाइल वालों हाँ भाई, टिकट भेज दो भाई। इट्स एट 7 PM भाई। Oh damn. So I think we can probably take a break. I don't know how long a break we take though. That is leaving me in utter confusion. 1 घंटा इज अ लॉट ऑफ टाइम भाई। ठीक है। So एक काम करते हैं, before we go on a break, I think we can decide the time later, basis updates that you might have समय भाई. Can we look at how the game between Parham and Sindarov changed? Because just before we leave, because I think at some point it was +4 or something, right? We saw Bishop F6, like crazy idea, completely winning for Parham, and somehow he collapsed after that. Just to understand what happened there for a minute. He played f5, attacking both knights, king g7 I up, can't see the board, fg6 San was a भाई, mistake here. वो दिख नहीं रहा है अभी स्क्रीन You पे। can't see the, अच्छा नहीं दिख रहा? अरे नहीं। एक सेकेंड ना, मैं वापस चेंज कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। सो लंच दिस ब्रेक इज हो द गया कह रहे विवेक पोजिशन। भाई। बिशप सी f6 माइंड। आया यहाँ पे, विच वॉज द ब्रिलियंसी। अब दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। बिशप f6, रुक f6, नाइट f6, ये अब f5 खेला उसने। एंड लुक एट दिस, बोथ नाइट्स वर अटैक थैंक्स टू द क्वीन एंड द पॉन। ब्लैक प्लेस king g7, एंड यहाँ पे परहम sort of slipped his advantage. He took the knight, which is the logical हाँ। move. He had to play knight g3, छोड़ दो नाइट्स को, एंड नाइट h5 चेक देके ये नाइट को मारो। दैट ओह। वाज द आइडिया। हम्म। But he made a mistake with fg6, and इसके बाद already the position is not lost for Sindarov. fg6, okay, he's an exchange up, but थोड़ा compensation है। But हाँ, हारना यहाँ से is maybe tilting is a factor. Takes हुआ, rook knight f7. This position like Sindarov won with the black pieces is nothing short of insane. Like what या, technique? आई थिंक इट्स h4, bishop कॉन्फिडेंस राइट, c6, यू काइंड धीरे ऑफ धीरे करके एज। like उसने आउटप्ले कर हाँ। दिया उसको बेसिकली। ओह वाओ, व्हाट अ, या द स्मूथ कन्वर्जन, या। एकदम एंड गेम एकदम स्मूथ कन्वर्जन हुआ। ऐसा नहीं कि मतलब उसने कुछ एक गलती कि g4 was a mistake, but okay, bishop f3 is also like -1 itself. तो या धीरे धीरे एक छोटी छोटी गलतियां करके like he just outplayed him. या Great play by Sindarov. अमेजिंग प्ले। एंड इसका मतलब कि नाउ इन ऑल द 4 गेम्स मैग्नस कार्लसन इज इन अ मस्ट विन गेम, राइट? अर्जुन काइमर इज अ नॉकआउट, लेवॉन हैंस इज अ नॉकआउट, एंड परम मकसूदलू इज इन अ नॉकआउट गेम एज वेल। सो सेकेंड गेम होगी चालू 7 PM IST. We'll try to come back earlier as well बीच में, but I don't know exactly. Maybe we take a 1 hour break. That's my guess. Or 40 minutes. We come back at 6:45. That's my guess. What do you think, Saj bhai? What do you think, chat?
Yeah, done. I ठीक mean, है good चैट. either ways. हाँ, so let's see you in around half an hour maybe. We might come early, तो उस टाइम पे भी आ जाना. And we'll take a very short, not short break. We'll take a break and we'll be back on the other side. Hmm.
एंड वी आर बैक आफ्टर दैट वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। साज भाई, मतलब पता ही नहीं लगा वो टाइम कहां से चला गया। मतलब मैं उठा कुर्सी से एंड इट वाज टाइम टू सिट बैक। क्या हाल है साज भाई? मतलब आई डोंट नो, मैं गया, मतलब मैं कहीं बाहर भी नहीं गया एंड समहाउ मेरे हाथ में कॉफी है। लाइक इतना जल्दी ब्रेक हो गया कि कॉफी भी आ गई मेरी। Yeah, क्रेजी। it happens. Yeah, I think we have the flash among us. It's very obvious, but मजा आ गया भाई। I think वो क्या ही चल रहा भाई है मैं भाई, आपको मतलब एक बात इतनी। बताऊं, मैं हाँ। आपको एक बात बताता हूँ। लाइक लिविंग इन बुडापेस्ट एंड देन उससे पहले लिविंग इन साउथ अफ्रीका, आई लर्न वन थिंग कि इंडिया की कोल्ड कॉफी का कोई जवाब नहीं। क्या बात कर एंड रहे हो? चैट, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया की कोल्ड कॉफी इज 10x बेटर देन एनीवेयर दैट आई हैव बिन। मैं अपनी बात कर रहा हूँ उसे, एनीवेयर, वाह। लाइक फॉर मी। एंड ट्रीट योर सेल्फ टू कोल्ड कॉफी चैट, बिकॉज ये बहुत मतलब प्रिविलेज चीज है हमारे पास, जो आई थिंक सारी दुनिया के पास नहीं है। मैंने स्टारबक्स ये सब ट्राई किया है भाई, कॉफी प्रॉपर कॉफी प्लेस में इटली में ट्राई किया था भाई, घटिया। ये कोल्ड कॉफी का कोई जवाब नहीं है। यू नो, आई थिंक साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छी कॉफी हो सकती है अगर फ्री स्टाइल वाले हमें वहां बुला लें एंड देन कॉफी टेस्ट कराएं। कॉफी टेस्टिंग पर्पसेस की वजह से वी कैन रियली नो कि इंडिया की बेस्ट है कि नहीं। साज भाई, आई थिंक वी नीड मोर डेटा, आई फील। हाँ 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 हाँ, केप टाउन में ही चाहिए भाई, क्योंकि जोहानिसबर्ग चले गए तो लग जाएंगे भाई। Yeah, not all जोहानिसबर्ग इज heroes wear capes, but they do drink coffees. इन देयर Meanwhile, होम, वेट इन देयर होम टाउन। मैं सोच रहा था mean- कैसे कनेक्ट करूँ। meanwhile, साहिल भाई शादी में साहस भाई को जरूर बुलाना। आई ट्राई माय बेस्ट भाई। हाँ भाई भाई, मतलब अब तो बुलाना बनता है भाई, जब दूसरी होगी। अरे यार, कृष्ण को भाई शो जस्ट सम किडिंग मैरिज भाई। फोटोज। आई विल पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम भाई, जैसे ही मुझे भाई भेजेगा वो फोटोग्राफर। अगर इफ शी इज देयर देन आप उनको लाइक लाइक कुछ टाइम 1-2 मिनट के लिए तो बुला सकते हो, जस्ट टू लाइक शो एवरीवन। आई एम श्योर पीपल वुड लव टू नो हु हाँ, इट अभी इज। मे बी आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। अभी पता नहीं मुझे, बट लेट्स सी। बट मे बी एट सम पॉइंट इन देख लो ब्रेक आपके ऊपर है। जस्ट। आप नेम रिवील कुछ तो रिवील करो यार, मतलब तो हाँ, लोग नेविल कर इतने टाइम से सकते हैं एट द कल, एंड ऑफ द स्ट्रीम कल फॉर पता श्योर। है भाई, कल पता है भाई, लाइक कल लाइक इन 6 आवर्स, लाइक एवरी लाइक 15 मिनट्स आई वाज गेटिंग अ क्वेश्चन, कौन है कौन है कौन है करके। मैंने गॉट बोला भाई इट। मैं तो नहीं बोलूंगा क्योंकि इट्स नॉट अप टू मी, बट चलो, आई थिंक चैट को पता ही है कई लोगों को, बट आई विल रिवील इट एट द एंड ऑफ द कई स्ट्रीम लोगों को तो इन पता जन। ही है। हाँ, हाँ, कई लोगों को पता है। मीनवाइल परम कुछ लोगों मकसूद ने बोला लुकिंग। किसी ने हाँ। बोला कि फर्स्ट लेटर ये है क्या। तो मेरे को पता लग गया इनको पता है। बाय द वे, परम भाई बड़ा चिल कर रहे हैं यार। मतलब अर्जुन एंड अच्छा एनालाइज कर दो। ओके, दे हैव द स्टार्टिंग पोजीशन एंड डू आई हैव द रॉन्ग? अच्छा, वी हैव द न्यू पोजीशन। द बिशप इज स्टिल ऑन A1 दो। It's very interesting chat. Look at this. Magnus Carlsen trying to analyze by himself alone. एंड वहां बाकी लोग ग्रुप में एनालाइज कर रहे हैं भाई। ये डायनामिक्स काफी इंटरेस्टिंग है। मैग्नस आई थिंक आफ्टर द लॉस इज अ बिट शेकन। या इज लाइक भाई ये क्या हो गया? Of course भाई, now he knows कि it's up to him and now he's gonna use the goat mind to his advantage. Black pieces से जीतना है, वो भी फाबी के against, it's no joke, and if he's able to do it then it will be I think insane, and I think हम उतना surprised भी नहीं होंगे honestly because it's Magnus, but आज but honestly raw thoughts, I think Magnus नहीं जीतेगा ये मैच। ओह I think वाओ। ये ब्लैक से जीतना बहुत मुश्किल होता है भाई मस्ट विन सिचुएशंस में। he's गॉट also इट। सो changing his चैट, routine, so I व्हाट डू यू yeah, थिंक? क्या मैग्नस कम बैक करेंगे? आई थिंक शायद करेंगे कम बैक, इज माई फीलिंग। बट फिलहाल के लिए एज यू कैन सी सारे टॉप प्लेयर्स पोजीशन एनालाइज कर रहे हैं। वी हैव द बोर्ड इन फ्रंट ऑफ अस। बिशप A1, क्वीन B1, नाइट C1, बिशप D1, एंड दोनों बिशप्स लेफ्ट साइड पे हैं। एंड देन नाइट E1, रुक F1, किंग G1, रुक H1। सो क्लियरली थीम इज सिमिलर दो साज भाई, राइट? द रुक्स एटलीस्ट आर ऑन द sides of the king। या मतलब पिछली बार भी सेम चीज थी, बस कपल ऑफ फाइल्स शिफ्टेड। I एक can फाइल show एक्चुअली। the chat as well. So this was the original भाई, ये सेम नहीं, या स्लाइटली चेंज हुआ बट किंग सेम है। तो ये थी हाँ। ओरिजिनल पोजीशन जो पहले वाले राउंड की थी, और ये है सेकंड। मतलब बिशप सेम है, किंग किंग थोड़ा सेम है, नाइट इधर था, बट या मोर और लेस सेम। बट लेट्स सी क्या होता है या भाई, सॉरी ये मेरी चाल है, दिस इज नॉट व्हाट हैपेंड ऑन द बोर्ड।
Meanwhile, of But course, yeah, Magnus ka must win hai, and also it's must win for Param if he has to do something here. But Param ki, I think Param also has the black pieces, so gonna be equally difficult. Arjun ka, of course, I know he has the black pieces now, and draw would push it to the tie breaks, जो इस गेम के बाद चालू होंगे. But हम उम्मीद कर रहे हैं साज भाई की tie breaks में ना जाए. Like we don't want to see tie breaks, we want to see it get done in classical. By the way, is that Levon's, I think, wife, right? If I'm not mistaken. yeah, that's Anita. भाई वो जहाँ खड़ी Anita थी भाई, आई वुड Aronian. हैव लाइक अ पैनिक अटैक है, फिर मेरे को हाइट्स का वो डर लगता है भाई. दैट ग्लास डिड नॉट लुक एज स्ट्रांग भाई, बट या. But you can see the pawns b6 c5 पे पड़े हुए हैं. Aronian, look at him, like the chilling. भाई इनकी Levon के like the fashion sense है, it's insane भाई. I love his shirts भाई. Oh, Crazy. his shirt looks fiery, yeah. मतलब insane shirt there, and I think he's also had a comeback of sorts. I think we've seen him play very well. He won the last freestyle event, as you mentioned. And by the way, who's that? I wonder. Who's that? भाई ये क्या चल रहा है भाई? हर्षित दादा जी तो नहीं है? ये तो हम्म Meanwhile, Magnus डुअल हीरो Carlsen का जी था ये तो. क्रेजी. अकेले बैठे हैं कुर्सी पे, सोच रहे हैं कि क्या खेलूं मैं. डू यू थिंक इन दिस मोमेंट ही इज थिंकिंग अबाउट चेस? इन दिस मोमेंट डू यू थिंक सो? Yeah, for sure. I think he's आई locked डोंट in. थिंक सो. आई थिंक इज Bro थिंकिंग ऑफ is समथिंग locked एल्स. in. Bro is completely locked in, I think today. वाह. बाय द वे, कोई पूछ रहा था कि कल 10 मिनट की गेम थे, आज आधे घंटे के. यस भाई, बिकॉज अभी क्वार्टर फाइनल्स चल रहा है, तो आधे घंटे की गेम्स हैं. एंड देन टाई ब्रेक्स में वापस सेम टाइम कंट्रोल होगा विद 10+5. हम्म. भाई फ्रीस्टाइल में कैसलिंग होता है, बिल्कुल होता है भाई. सो बेसिकली कैसलिंग इज वेरी सिमिलर. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कैसल करना होगा, तो सेम रूल्स होते हैं. देयर शुड बी नो पीस इन बिटवीन द किंग एंड द रुक. द किंग शुड नॉट हैव मूव्ड, एंड यू कैन बेसिकली स्वैप. लाइक जो जो कैसलिंग होगी, दे विल एंड अप इन द फाइनल पोजीशन, या एज दे यूजुअली डू इन कैसलिंग, राइट? ऐसे आप समझो कि ये नाइट बिशप और नाइट यहाँ पर नहीं है, ठीक है. इमेजिन करो ये चले हम्म. गए, लाइक नाइट को हटा दिया, बिशप को. लेट्स मैं वो चाल ही चल देता हूँ. um, और मेरे को करनी है लॉन्ग कास्टलिंग, तो मैं यहाँ पे हाँ. ये किंग को मैं इधर रख सकता हूँ और लॉन्ग कास्टल हो हाँ. जाती है. उसी तरह से अगर मेरे को शॉर्ट कास्टल करनी, तो इस रुक को हटाना पड़ेगा पहले मुझे. एंड देन आई विल हाँ. जस्ट पुट द किंग ओवर हियर एंड शॉर्ट कास्टल होगी. बेसिकली सेम वे में होती है जैसे क्लासिकल में होती है. सो नॉट रियली अ बिग डिफरेंस देयर, बट या, एंड ऑल्सो ऐसे साज होती है भाई, भाई. आपका एक रूल है गोल्डन रूल का, ओ, राइट? वेट व्हाट? गोल्डन पॉन भाई, गोल्डन पॉन टच्ड एंड परहम भाई, मेक्स अ मिस्टेक ऑन द फर्स्ट मूव इटसेल्फ. that's a big mistake, by the way. Look at the evaluation. It's already like +2. भाई मूव नंबर 1 पे +2 कभी देखा है चेस में? दिस इज इनसेन. मूव 1 पे +2 इवैल्यूएशन. वाओ, 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 वाओ. परहम डेफिनेटली टिल्टिंग. आई थिंक गोल्डन पॉन भी था तो टच कर दिया है, वो भी पहली चाल में, तो गलत ही होना था ये तो. Bro, look at this. Another mistake now after move 2. It's +3. It's basically saying it's over. Queen B2 and it's just over. What? बाप रे, नाइट F6 नहीं आ रहा क्या मेरे पास क्वीन B2 के बाद? I have no clue what's happening. Yeah, Queen भाई बहुत B2. क्रेजी है. दो चालें चली, उसमें दोनों मिस्टेक्स थी अभी परम की पता भाई. है परम की एक्यूरेसी क्या है? इट्स 33%. अरे यार, वाओ. that is really, really, really harsh. But yeah. Meanwhile, सैड है, checking हाँ. out. But the thing is, Saj bhai, Param was preparing with the other guys. So if he made a mistake, have some of the other guys made it as well? So let's check it out. This is Levon versus Hans. Levon did not play F5, he played B6 and E6. F pawn को उसने अभी भी यहीं रखा हुआ है, तो पोजीशन इज स्लाइटली बेटर फॉर Hans. अर्जुन वर्सेस विंसेंट पे ये पोजीशन है C4 B6 CU, एंड अर्जुन इज, सॉरी, विंसेंट इज थिंकिंग. And Magnus versus Fabi में ये position है. He played C4 and Magnus played B5. Wow. C5 and B4. So technically Magnus जो अकेले सोच रहा था, he actually has the best position right now so far Wow. out of the So opening. very interesting. And also going back to the Arjun game, I think B6 के बाद B4 खेला गया, and if F5 happens, we will transpose directly into the Maksudlu game. I'm really hoping he does not touch that F pawn. By the question by Ayush bhai, Style bhai, if you have to pick only one chess piece as a favorite, which one would it be? Same question for Sahaj also. Sahaj bhai, which one will be your favorite piece? अगर एक pick करना हो तो. Knight for sure, I think for I think me, all because Hikaru also mentioned knight. Very interesting.
Yeah, because knight is the like the sort of the dark horse, yeah. No pun intended, but like वो किसी it doesn't follow the rules of chess. It sort of bends the rules, and I really it's the most unique piece for me. आपके लिए तो क्या व्हाइट नाइट भी डार्क हॉर्स है साज भाई? हो सकता है भाई, हो सकता है, क्यों नहीं हो हो सकता सकता भाई, बिल्कुल हो है, सकता ठीक है। मुझे लगा आप बोलोगे क्वीन क्योंकि अभी शादी हुई है आपकी। है। भाई भाई, मैं कहने वाला था मेरी क्वीन का फेवरेट पीस भी नाइट ही है भाई, मैं तो ये कहने वाला था एक्चुअली। ओह, तो आपका क्या फेवरेट पीस है? मेरा एक्चुअली क्वीन ही है, सो इट टर्न्स आउट वेल। मैची मैची, लेट्स गो। Meanwhile, e6 खेला उन्होंने, no f5, and now I think apparently the best move is actually h4, which as you mentioned साज भाई इतना आसान होता नहीं है यहाँ पे कोई नहीं खेलता खेलना। ये, nobody Yeah. plays h4 ever. It's always the best move, like ये बहुत बार होता है फ्री स्टाइल में, h4 is the best move but no one plays it. Hmm. Very interesting. And Arjun, by the way, was having a not a winning position, but a much better position in game one. But he kind of botched it up. I think Gamer defended very well and actually had even some slight winning chances. He could have potentially pushed, but he agreed to a draw. And now I think Arjun with the black pieces, I think as we discussed, white black pieces say, it's very subjective. You could equalize or win with black in 5 moves, but you could also be completely done and dusted as the situation in the Param game. सो साज भाई क्या लग रहा है, मतलब विल वी हैव अ मिनिएचर? बिकॉज अगर हम परम की गेम में जाएं, इट्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। Oh bhai, bishop a4 was the best move here, attacking the d7 pawn. Very very weird move by the way, and he goes c6, accuracy थोड़ी बढ़ते हुए, he goes d4, mistake by Sindarov, and now if Parham pushes b5 he's back. वाओ, बट बी कितना फाइव डजंट मुश्किल लुक होता होगा यार, लॉजिकल। कितना मुश्किल होता होगा यार डिसाइड करना, लाइक मतलब if players like that are making mistakes, that it just goes to show how difficult freestyle is. Like accuracy पता है इन दोनों प्लेयर्स की क्या है? Sindarov has 66% and Parham has 51%. भाई It just यूजली goes मैं to show how difficult this is. डीयू का जोक मारता हूँ, इसमें तो सीबीएसई में बेरली पास होंगे यार ये लोग। चल क्या रहा है भाई, Hmm. 51 एक्यूरेसी, दैट इज इनसेन। And that tells you, as you mentioned, how difficult freestyle chess is. There's some beauty about freestyle to see these players blunder like this. By the way, e6, another mistake so far. Literally, almost all the moves Param has played have been blunders or mistakes. 3 out of 4 moves, by the way. That's crazy. Hmm. Yeah, but kind of like a stonewall structure if he pushes d5. I get like what he's trying to do. He's trying to keep all the pieces on the board ताकि जीतने का chances थोड़े बढ़ जाएं. But it comes as at a cost क्योंकि आप simplify नहीं कर रहे हो. You are willingly kind of accepting a worse position. I think that's his strategy. And also look at his time. Parham still having over 30 minutes on the clock means he has thought about this and he's there to win. True. So let's go back to the Arjun game now. By the way, Arjun has pushed the pawn to f5. परम मकसूदलू के साथ जो प्रेप करी थी उन्होंने, that was not perfect. There is clearly some flaw there. f5 played, and that's the first big mistake by Legacy Arjun. And suddenly यहाँ पे knight c d3 is the move that really is giving white an edge. Somehow ये knight d3 plana is a good idea. Yeah, what's the plan behind that move, Saj bhai? I'm guessing that after knight d3, you want to go knight e5 or knight f4. If the knight goes to f4, then I think you can go knight h5 and put pressure on the g7 pawn. And if you go knight e5, then it's a central square. And maybe you Hmm. provoke d6, which might be another weakness and sort of loosening up the pawn chain. I think that's the point here, more or less. और also c1 पे knight activate तो करना ही है ना, इसको c1 पे थोड़ी ना रखना है, Hmm. इसको Also, तो I think activate ही once you करेंगे. play d6, then you take away the square from both your knights, and then e6 also is weak somehow. So Hmm. I think कहीं ना कहीं में बहुत सारे drawbacks हैं. White का first move advantage again could prove to be crucial. Even apart from that, even knight f3 apparently is very very strong. So White is not really struggling for choice. And Arjun under some pressure right now. Time situation 27 minutes each. Last time हमने देखा था 9 move तक ही 22 मिनट यूज कर चुके थे। साज भाई, आर वी एक्सपेक्टिंग समथिंग सिमिलर दिस गेम एज वेल? I think so. I think so. And I think tie breaks मुझे एक भी गेम जाता हुआ नहीं दिख रहा अभी. वाओ, I think every game will be finished in the classical section itself. That's my prediction. What do you think? कितने गेम जाएंगे टाई ब्रेक में? आई एम गोना गेस कि एक आउटलायर होगा, एक ना एक गेम जाएगा शायद, बट व्हाट यू आर सेइंग कुड टोटली बी ट्रू एज वेल, बिकॉज
यहाँ पे रिजल्ट्स की probability बहुत high है basically. The fact that you get a हम्म result is very very high. And also, I mean, Magnus maybe game goes to a tiebreak. I think Magnus will come back. That's my expectation. बाकी हम्म। गेम्स में आई थिंक परम डिफिकल्ट ऑलरेडी वर्स. अर्जुन गेम में क्या होगा साज भाई, उसका क्या लग रहा है? अर्जुन के गेम पे बैठे, बाय द वे ही गोज 93, द बेस्ट मूव इन द पोजीशन, एंड राइट नाउ अर्जुन इज इन ट्रबल, बट बहुत सारे पीसेस है बोर्ड पे, तो मिस्टेक्स तो होंगी दोनों साइड से, बट सो फार आई थिंक विंसेंट लुकिंग वेरी गुड. हम्म. रिजल्ट आई डोंट नो, आई डोंट नो. अभी थोड़ा गेम चलने दो, फिर उसके बाद पता लगेगा. आई थिंक टाई ब्रेक यहाँ पे होगा तो आई वुडंट बी अनहैप्पी क्योंकि आई थिंक वो अर्जुन के फेवर में होगा, क्योंकि इफ आई हैड टू से अ रिजल्ट, आई थिंक विंसेंट इज विनिंग दिस, इफ आई हैड टू से अ रिजल्ट, बट आई थिंक इट्स टू सून टू से. वेरी इंटरेस्टिंग चैट. मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि विंसेंट काइमर is somebody who's always gonna come back. Like even if you're completely winning, you can never be sure that the game is gonna end. So I think end तक fight करनी पड़ेगी यहाँ पे एरिगेसी अर्जुन को. He has to maintain his calm and um, he is capable of it. But like on knight ct3 played, as you mentioned, Saj, by controlling e5, maybe pushing c5 as well. Bishop could later come to b3 एंड वो एक बढ़िया से डायगोनल बैठ सकते हैं जहां ब्लैक का किंग कह रहा है भाई मैंने एफ पॉन पुश कर दिया, बट सडनली आफ्टर बिशप b3 लाइक दिस कुड बी वेरी वेरी स्कैरी. हम्म. लेट्स से बिशप f6 अगर आता है तो नाइट e5, या ओ d7, भाई नाइट d7 आ रहा है मेरे पास सीधा. दैट अरे इज बाप जस्ट रे. जीजी. Knight अरे d7 बाप रे. like is a threat. Usually, yeah, we are used to seeing bishop on c8 defending the d7 pawn, but that's not the case here. मुझे याद है एक बार Ian and the Botte sisters were playing a game and he somehow just put the knight on b7 and it was checkmate, like something like Hmm. that. So it's very easy to miss checkmates even like this, like बहुत crazy position हो सकती है. Okay, no Absolutely. moves. Both players struggling to come up with the best idea. ये इतना टफ है फ्रीस्टाइल चेस राइट नाउ. ऑल द 4 games वाइट इज बेटर. इंटेंसिटी मैटर्स कितना बेटर है, बट चारों गेम में वाइट इज बेटर. दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर अर्जुन साज भाई. Because I think the original position maybe favors white a bit. Yeah, it's not like one of या those positions जहाँ पे equal situation रहती है and all of that. Yeah, exactly. And that means कि practically white के moves easier हैं. The fact that Arjun thinks f5 is a good idea, Parham thinks f5 is a good idea, already tells you position कितनी difficult है. So let's see what happens. Meanwhile, still both the players thinking, come on. I think Let's what's do the a best move? let's do a हाँ. भाई let's do a quick roundup of all of the games to see भाई क्या Hmm. situation रह रही है, and then we can maybe go back to Arjun. What do you say? Hmm. Done. Let's Okay, go. so this is Sindarov versus Parham. This is the current position. Sindarov having a +1 advantage. Again, Sindarov ने भी Parham ने भी f5 खेला हुआ है, तो some problems along these lines. Maybe c5 or d5 can be a potential plan. So Sindarov looking very good. I think he's gonna qualify like very very easily. I think क्योंकि already जीत चुका black से. Parham not in the best shape. Moving on to Levon versus Hans. Look at Oh, this. this is wow. Very Look at interesting, this. by the way. भाई I don't even know क्या हो रहा है यहाँ पे. And also f5 here as well. So clearly f5 was a common thing all the players thought was a good idea. But इस case Hmm. में black is actually utilizing it. Now g5 फेंक दिया है, g4 could be incoming, e5 pawn पे attack, and the pawn on e5 kind of blocks the white bishop for now. So I think of course it also kind of dominates the knight on e8. But it's a very interesting position I think. बहुत मजा आएगा. h pawn भी आ रहा है h5 पे. हाँ h5 भी खेलो, g4 h4 फेंको, उसको सब basically. Yeah. So Yeah. Aronian, okay, objectively 0.6 का advantage है, but I would not say Aronian is worse here. I think बहुत Hmm. complicated है position. Moving on to Arjun, ये तो हमने देखा ही था. I think Arjun having a slight problem, more or less, +1 का advantage. इसने g5 नहीं फेंका, but f5 was not the best move here. And finally, we have Magnus versus Fabi, जहाँ पे it's the only position जहाँ पे objectively भी white की better नहीं है अभी. So Magnus clearly, when he applied his own mind, like he came up with some creative ideas and he didn't listen to the rest of the people, and I think maybe it has helped him a bit. वो ऐसा नहीं वो सुना नहीं बाकी लोगों को. ही जस्ट सैट इन अ डिफरेंट प्लेस. तो वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू गेट अहेड इन लाइफ गेट रिड ऑफ टॉक्सिक पीपल. तो वही मैग्नस ने कहा भाई मुझे सुनना ही नहीं किसी और का, मैं अपने दिमाग की सुनूंगा. आई एम गोना ट्रस्ट माई सेल्फ. एंड नाउ द नाइट कमिंग टू e7 मे बी कम्स टू f5, मे बी अटैक्स d4 एंड द बिशप ऑन a8 लुकिंग लाइक अ ग्रेट पीस cutting across the entire board all the way to g2.
So white has to be a bit careful as well. Philadelphia Magnus already 5 minutes up on the clock. Good signs for the greatest player of all time. Absolutely. And then follow up can also be some h5, rook h6, rook g6, something like this. Finally, I just want to see h5 by black. Bada maza aayega usme. So yeah, I think overall, only Magnus seems to be doing fine with the black pieces. Everybody else has a slightly worse position. Parham, I think, is looking even worse. By the way, queen c1 played by Fabi, and now h5, as we mentioned, is the best move in this position to stay in the game. Yeah, I think Magnus could definitely think about playing that idea. I think Magnus, by the way, jacket kahan hai yaar? He's the only one who's jacket I can't see. Saraj bhai, kya chakkar hai ye? भाई वहाँ एनालिसिस करते करते उधर छोड़ दी होगी. Or तो वो maybe तो I यही think एनालिसिस that's कर the रहा था reason. भाई. He was literally analyzing on the board itself. So I'm not sure कि कहाँ jacket रह गया. नहीं चाहिए जैकेट. तो जैकेट पहन के हार गया, मैं जैकेट उतारूंगा बेसिकली. या बढ़िया है भाई. तो मैग्नस जी सोचते हुए मीनवाइल इफ वी कैन जंप बैक टू द अर्जुन. अर्जुन गेम. हमारा हो गया ना राउंड अप. आई थिंक वी कवर्ड ऑल द या 4 या games. एग्जैक्टली. Knight f6 was played. So bishop f6 was the best move, but knight f6 also very logical. And now white is thinking time situation dead equal. But problem is na Saj bhai, like 95, like even now it doesn't feel so bad. But to be honest, the best move knight f3 is very very good. मैं knights आराम से develop कर रहा हूँ. Bishop will next come out maybe to b3 or some other square. And black के pieces थोड़े से ज़्यादा awkward लग रहे हैं मुझे. Look at the bishop on a1 by the way, beautiful piece. व्हाइट का पेपर, ब्लैक का बिशप भी तो बढ़िया ही है ना वैसे तो. दोनों के बिशप ये बढ़िया है. बात भी है. बट या ये लेकिन ये बिशप थोड़ा ब्लैक का अच्छा नहीं लग रहा. आई गेस हम्म. क्वीन भी बी8 पे थोड़ी ऑडी लग रही है. व्हाइट की क्वीन थोड़ी ज्यादा, इट हैज मोर स्क्वायर्स टू लुक. हम्म. By the way, best move for white here is bishop a4, which is an insanely difficult move to play. Idea is, of course, to take on f6 with this bishop and take on d7. भाई ये कहाँ से चाल निकल रही है? It is beyond me. दिस टेल्स यू यार, मतलब इंजन कितना मटेरियल पे फोकस करता है. फॉर एग्जांपल लाइक इट्स क्रेजी. एंड फॉर Hmm. एग्जांपल ब्लैक का बेस्ट मूव यहाँ पे इज नाइट d6. एंड इफ यू नाउ टेक ऑन f6, bishop takes f6, bishop takes d7. Not knight c4, which I originally thought was it because the bishop e6. Knight c4 पे ये देखो, bishop e6 and the king is literally stuck white. That is crazy. Done. And now you have to play And king to f7 by only move. bye. This is too much. Yeah. Too much. So Arjun, I think, in some trouble for sure. In Yeah, freestyle some tennis, trouble. 2800 players play like 1200. Actually, that's not far away from the truth. Yeah, maybe 1200 नहीं, but maybe like 1500, 2000 की तरह कई बार खेलते हैं पहली चालों में. Definitely possible. I mean, yeah, but they make it up, yeah, towards the end. But yeah, हाँ, of freestyle सबके course. लिए नया है, तो 1200 तो नहीं बोलूंगा, तो that's too harsh. I think they play like me probably, yeah, 2500. वो Like वो इतना लेवल भी नहीं 1200 करता. actually धवल की रेटिंग है ना भाई, तो that's why he mentioned 1200. Like there's a reason behind Hmm. धवल personal भाई, reasons. catching strays. Sorry Rating भाई. reveal. Rating reveal when, धवल भाई. Meanwhile, Okay. चारों गेम में Knight still f6. white better. Mm-hmm. Come on, let's go अर्जु भाई. थोड़ा फास्ट खेलने का, थोड़ा जल्दी खेलने का. बिकॉज गेम में टाइम अगर हम 5-10 मिनट आगे निकल जाए तो भाई दैट कुड बी अ किलर ब्लो towards the last part of the game. फिलहाल 3 मिनट का edge already है. Vincent trying to think what to play. H4 is still a good move, which is shocking to me. You can still kind of just push the H pawn all the way and that still works out. I was also thinking maybe Yeah. bishop f3. Is that a possibility, Sajbhai? But or is it just exchanging a strong piece? Whoa, H4 आ गया भाई on the board. क्या बात कर रहे हो? Vincent Keimer plays H4 finally. Wow. A good H4. sign for Arjun bhai. And now look at this. So, for example, if black plays a normal move, let's say knight to, I don't know where you even put the knight. Let's say bishop b7. D6. Let's say bishop b7, just a waiting move. Apparently, it's already +2. H5, and H5, yeah. you can, you know what the best move is now after H5? Chat, take a guess. Come on, चलिए guess करना पड़ेगा भाई. The best move after H5 for black. कौन है वो जो ये move निकालेगा? साज भाई, do you think anybody can guess this? I mean, अभी तो ये सेम चाल हमने गेस करी थी कुछ टाइम पहले in the analysis But chat. अगर now आप it's attention, if you were हाँ. paying attention, you would know the move. You know, anybody can dance, but anybody can't find this move by. There is no doubt. No bishop, no bishop d2, no g5, no g6. Yes, Lakshay bhai and Aman bhai. King to f7 is the move, which
आई मीन कहाँ दौड़ लगा रहे हो भगवान जानता है, बिकॉज नाइट E5 के बाद देर इज किंग E8 as the idea. So God forbid, by I know where the king is running to. So that means H4 is super deadly. And इसका solution साज भाई क्या है ब्लैक की तरफ से जो खेल सकते हैं वो? Only move is, well, there are two moves. One is h5, which I think is logical, but you're giving up the g6 square, so maybe not the easiest decision. The other one is knight d6, which I feel is more logical. c4 के pawn Played. को attack. Played. Let's go. Yeah. बढ़िया. And now Vincent has to go knight e5. c4 को बचाते हुए outpost बन गया more or less. And d7 के pawn पे भी attack होते हुए. So साज भाई knight E5, knight F7, knight D3, knight D6. Offer draw. Yeah. Who do you like to draw? Tablash. Come on, come on, ए come on, Carl. डॉक्टर कैंकनस्टाइन बोल रहे हैं सहज सर जैसे मतलब 2400 नॉट 2500 भाई 2475 यहाँ तो थोड़ा तो कंसेशन दे दो भाई 25 पॉइंट ठीक है यार मतलब 2500 तो मान लो यार मेरी मेरी राउंड बेइज्जती कर ऑफ देते हैं राउंड ऑफ करना जरूरी है लाइफ में भाई, यू नो लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिसने भी 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं, दे नो हम्म, कि लाइफ लॉन्ग अब वो अपवर्ड्स राउंड ऑफ करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल मेरे परसेंटेज, यू नो, आई थिंक इट वाज तो आप 2100 हो 86.8. मतलब आप 2100 हाँ हो मतलब कोई नहीं आपको नहीं, राउंड बोलेगा अप करना है ना आपकी भाई, राउंड 2100 अप रेटिंग करना है, राउंड अप तो करना है. सो 2100 ही फॉर हुई ना एग्जांपल, आपकी तो आपकी नहीं बट 2185 है 2186, 2186 है भाई. तो 2186 भी 2100 ही हुई तो राउंड अप तो 2200 हुई ना भाई. राउंड अप मतलब कि वो हाँ अप. तो फॉर तो एग्जांपल जैसे अगर 2190 आपकी, हुई भाई वो नहीं नहीं, वो टू वन एक नाइन दो डेसिमल राउंड अप कर रहे हैं ना भाई. तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हाँ इफ योर बोर्ड परसेंटेज 86.8 थी, मेरी अगर 86.2 होती, तब भी आई वुड स्टिल से कि माय परसेंटेज 87. इट्स जस्ट कॉमन कॉमन नॉलेज यार. हम्म बेइज्जती हो रही है बाय द वे, मेरी यार अब तो रेटिंग स्किल, बढ़ानी पड़ेगी भाई साल में ओ रेटिंग बाय द बढ़ाएंगे वे बिल्कुल. चैट में लोग बोल रहे हैं टिक्कू वर्सेस एज हो जाए एंड पता है मैं ट्विटर पे एक चीज पढ़ रहा था लाइक आई थिंक सुतोस्की ने कुछ तो लिखा था कि व्हाट वुड यू लाइक टू सी डिफरेंटली फ्रॉम कमेंटेटर्स लाइक यू नो कमेंट्री में क्या क्या डिफरेंट देखना चाहिए एंड एक बंदे ने सजेस्ट किया कुछ व्हिच आई फाउंड वेरी आई थिंक इट वाज चेस नंबर्स बाय इंडिया हु पोस्टेड दिस कि अगर प्लेयर ज्यादा सोच रहे हैं तो कमेंटेटर्स को उसी पोजीशन से मल्टीपल ब्लिट्स गेम्स खेलने चाहिए एंड आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया हाँ, इट्स अ नाइस आइडिया. आई थिंक क्लासिकल चेस में इट कुड डेफिनेटली बी इम्प्लीमेंटेड. आई थिंक आई Yeah, लाइक दैट आइडिया एक्चुअली. exactly. What do you think about that, chat? Like, do you find that interesting? क्योंकि उस position से अगर हम blitz खेलेंगे तो you can see different ways that you know the game can turn out to be, and commentators are doing that. What do you think about या that, chat? I think idea अच्छा है. I think only difference is in the real game. I think both players are evenly matched, and commentators may usually, I think that's very rare actually. कि they'll be evenly matched. But I like love the idea because you might even see the plans better in that case. कि अगर कोई it's not evenly matched. But meanwhile, Hmm. knight e5 on the board, played, defends the c4 pawn, and ये knight d7 पे नजर मार रहा है. अगर आप कुछ फैंसी फैंसी करने चलो, नाइट को f6 को हटा दो, तो नाइट d7 will be deadly, game over. So black has to stay on his guard. Now queen c8 is one move, defending the d7 pawn, थोड़ा knight को आजाद करते हुए. But the best move is actually knight f7 back, Sahaj bhai. And उस केस में white क्या करेगा? Knight f7 के बाद I think आप मारो मत इसको. You go knight f3 or knight d3. Like I would rather Hmm. have you take on e5 and then I put my knight back on e5 again. Hmm. Played by the way knight f7. Wow. Commentators can't live without engine. देखो भाई कल मैंने सबसे पूछा था कि डू यू वांट मी टू कीप द इंजन लाइंस ओपन और डू यू वांट मी टू कीप देम ऑफ एंड सबने लाइक आई वुड से 90% ऑफ द पीपल सेड उसको ऑन रखो तो ये चैट की तरफ से आया था दैट्स व्हाई इट्स ऑन नहीं also I also need it by, but I think in general नहीं नहीं एक बार तो कर बहुत सकता जरूरी है है. ना I think lines you can avoid. I think that is okay. But bar you need. I feel. I think bar is या very important because वो जो ऐसे फुटबॉल में जब वो गोल होता है या बॉल जब पास जाती है गोल पोस्ट, या क्रिकेट में जब वो यू नो MS धोनी comes used to come out, या somebody else, you know, विराट कोहली comes out and you see the ball going. I think वो बहुत जरूरी है. वो movement दिखना of the evaluation changing just means something. Otherwise वो पता नहीं लगता. So I think bar is important. Maybe the lines are not so important. अग्रीड Agreed. By the way, knight f7 के बाद I think Vincent is still thinking 4 minute difference between these two players. Some pressure on Vincent. I think he has to find either h5 or knight f3. I think one of these. If I was white, I would go knight d3 or knight f3 just because you take my knight, I take your knight, and that's it. और Also games you check could कर just, रहा हूँ
हाँ, By the फिर way, उसके लिए again, h5. only H5 is like the main move of the engine here as well. But by out of all the games, only Magnus has equalized. Yeah, we should really keep an eye on it because I think Magnus might actually pull off a win with the black pieces, which would be insane. He will, भाई. I mean, Magnus does not give up ever. And Magnus थोड़ा disappoint हो गया. You know, a loss wakes him up. I think imagine chat, imagine करो, ठीक है? कोई भी skill जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें painting पसंद है, dancing पसंद है, you know, mathematics पसंद है, you are the best in the world. कोई आसपास भी नहीं है तुम्हारे, ठीक है? And sometimes you relax. Sometimes लगता है अरे यार क्या ही हरा दूंगा भाई, नींद में हरा दूंगा इस बंदे को. And then you lose a game. You lose again, and suddenly you wake up, and then you're tuned in, focused, 100%. You know, then Goku goes Super Saiyan in that situation, right? He realizes कि भाई ये तो Hmm. opponent तगड़ा है, and that's where you strike. So I think Magnus woke up, and now he's gonna come back in this match. By the way, Knight F7 played directly. Maybe he feels कि 90 से 95 anyways मुझे tempo मिलेगा रुक के ऊपर, but definitely not the best move, Saj bhai. Allowing black to exchange a pair and developing a rook. Not yeah, developing. अब also black castle भी कर सकता है. Let's not forget. And दोनों rooks F5 पे आ गए, which is a Hmm. nice thing I think for Arjun. So slight improvement in Arjun's board. I think he's looking more or less decent. Hmm. But let's see what Vincent does. 5 minute difference between these two players. Thank you, Palak bhai. Meanwhile, 17 minute, 22 minute, as you mentioned, and the longest thing in this game so far was around 5 minutes by Vincent when he played that impressive move h4. So time lete hue log, I think, although the last move was played quickly because it was a capture. Saj bhai, मेरा सवाल ये है. So do we know कि who plays whom in the next match if they win? So let's say Magnus wins. Arjun wins, do they play each other? Do we know that yet or no? I think वो players decide करेंगे किससे खेलना है. I think एक बार वो समय भाई, if you have that graphic जहाँ पे वो क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स का हम दिखा सकते हैं just for a minute, that would be great. बिकॉज वहाँ पे लिखा हुआ था ये, बट हाँ नहीं, फॉर्मेट जो जो वो था एक कुछ बार अब ग्राफिक है क्या? लाइक लेट्स से कि अर्जुन विंस एंड मैग्नस विंस, लाइक who do they play next? Do they again choose और या क्या सिस्टम है? I think they choose still, right? सो टॉप फोर Top from राउंड्स round one लेग, select opponents. हाँ. winners of quarterfinals keep playing to decide first to fourth places, losers of quarterfinals keep playing to decide fifth to eighth places. या अच्छा, वही आई थिंक फिर. सो मे बी लाइक जो लोग जीतेंगे लाइक दे कीप. choosing, yeah, तो they सो will वही है ना, choose. देन बेसिकली एनीबॉडी कैन विन, लाइक टेक्निकली इवन परम अक्सुल्लू कुड विन द इवेंट, राइट साज भाई? या तो फर्स्ट राउंड, फर्स्ट जो डे था उसका पॉइंट ये था कि आप अपना ओपोनेंट सेलेक्ट कर सकते हो. सेलेक्ट कर सकते हो. या बढ़िया भाई, परम भाई का जीत गया ना. That will be insane. Actually, 0/7 के बाद. But yeah. Okay, anyways, chat h5 played on the board. I think इसका plan simple है. You want to push that pawn to h6, force even g6. आपका bishop on a1 is now smiling. There is a square on g7 that you control with the pawn. So I think कहीं ना कहीं पे white की position practically looking great. Typical alpha 0 h pawn push, yeah, Saj bhai. H4, H5, H6 incoming, and also to just to add on to your point, black H6 खेल के इसको रोक सकता है, बट उससे फिर वो G6 का स्क्वायर वीक हो जाएगा. देन हम नाइट F3, नाइट E5, नाइट G6 करके इसको यहाँ पे लेके जा सकते हैं, या फिर नाइट D3 इन केस यू डोंट वांट कि बिशप मार दे इसको. जैसे नाइट D3, नाइट F4, नाइट G6 इज अ ग्रेट वे ऑफ फिक्सिंग ऑन द G6 Can we स्क्वायर, सो can we दैट show वुड बी that? अ. Let's say h6 and वो rook इससे h8 पे अटक जाए हमेशा के लिए, for example. knight D3, actually in this position the only move for black is bishop E4. If you don't play bishop E4, Wow. you're lost. Wow. Like that goes to So I say show. And bishop I b7. actually, on top of that, just एक और चीज explain करना चाहता हूँ यहाँ पे. The best move for this reason for white is to play F3 first. कि उसके बाद आप knight D3 करो ताकि black bishop E4 ना खेल Wow. सके. How crazy is Wow. that? So going back to your line, let's say you play bishop B7, sorry, bishop B7. You go knight F4, then knight E5, whatever. Rook goes somewhere and knight G6. मतलब मैं knight H8 मारूंगा भी नहीं, मैं knight को यहीं रख दूंगा. And the best part is जैसे rook f7 पे भी है. Let's say I don't even take the rook. Let's go back a move. Let's go back a हाँ. move. Let's say knight e5 के बदले मैंने खेला bishop e7, ठीक है? I don't even save the rook. And now knight g6. This rook is This also, permanently trapped, right? This rook yeah, can never come out. Like this is it's gone. exactly. अब रुक H7 खेल के भी रुक क्या कर रहा है, मतलब ये तो हाँ. खराब ही है ना. तो यू कैनॉट प्ले H6 एज ब्लैक.
तो दैट्स द Yeah. डिलेमा फॉर अर्जुन कि h6 अलाउ करोगे तो डार्क स्क्वायर्स वीक हो रहे हैं, अगर आप h6 खेल देते हो तो g6 का स्क्वायर वीक हो रहा Man, I think this is very hard, yeah, very, very hard. So I think Arjun needs to come up with a clear solution, chat, which I think is not easy as of now. For example, Black का best move is castling in this position. But उसके साथ ही आपने king को, रुक को हटा दिया, that is great news. But h6 anyways. And now again, you have the same dilemma, right? Do you play g6? Do you take? Do you allow white to capture on g7? I am not sure I have the solutions. Sabi, can we castle for black? है. And now Castles h6, h. h6. Like, how does black deal with this? There is no clear solution. If I play g6, for example, I am perpetually scared about something landing on g7 with checkmate. Yeah, चाहे Hmm. middle game में, चाहे end game में रुक आ जाए, like it's just too scary. This pawn is just too. It's an asset in White's position. Even now, Yeah, Queen B2 is very strong with the idea of Knight F3. Just always keeping an eye on these two squares. Knight हिल ही नहीं सकता. It's pinned. yeah. It's So a very big very. asset. Yeah, By the way, and the chat pawn. में Priya Huh. Mishra is writing, my rating is not increasing. I'm 2248 from last 4 months. I win two and lose two and no increment. What should I do? भाई देखो 2248 की रेटिंग में लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव जनरलाइज्ड एडवाइस. ठीक है, बिकॉज हर प्लेयर, आप बिगिनर नहीं हो, आप इंटरमीडिएट एडवांस लेवल के प्लेयर हो. और एडवांस लेवल पे आई थिंक हर प्लेयर का अलग इशू होता है. कुछ प्लेयर्स होते हैं जो, लाइक मैं आपको एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. फॉर एग्जांपल, मैं बहुत ज्यादा सोचता था. लाइक आई यूज्ड टू थिंक अ लॉट इन द ओपनिंग, एंड देन उसके बाद मैं बहुत जल्दी टाइम प्रेशर पे आ जाता था. दैट वाज माय इशू. बट कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी खेलते हैं. कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल मोमेंट्स में मतलब स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाते. आई एम जस्ट गिविंग यू डिफरेंट एग्जांपल्स. तो सेइंग दिस कि आपकी ये रेटिंग है, इट आई एम सॉरी बट यहाँ पे कोई भी आपको जनरलाइज एडवाइस आपको कोई हेल्प नहीं करेगा. यू शुड गेट अ कोच, show them 10 of your games and then get specific like expert level You know, advice जो आपके लिए cater हो. आपने कहा कि एडवाइस नहीं है, बट क्लियरली चैट में कुछ लोग तो एडवाइस दे रहे हैं. कहता यू नीड टू क्विट. Chat Dani, by the way, a big news incoming, not maybe big, but significant one, that Nihal Sareen, he's cruising through the President's Cup, and now he's reached the rating of 2711.6. I think that's Yep, his highest rating. And he's yep, now ahead of Arvind, who's dot 2700. He's ahead of Vidit, who's 2708 now. So Nihal Sareen yep, is officially India number one, two, three, four, five. So if there was an yep. Olympiad, he would make it to the Olympiad team right now because top five in Rishi sir is not going to play, right? He would make it to the playing four of the Olympiad team right now. एग्जैक्टली एक्चुअली पता है, कल ये किसी ने चैट में बोला था एंड आई वाज शुक कि भाई निहाल माइट एक्चुअली बी इन द टीम. एंड लेट्स गो भाई, निहाल का इट्स लॉन्ग टाइम कमिंग. ही इज द चोजन वन या फ्रॉम द बिगिनिंग. निहाल का हाइप सबसे पहले शुरू हुआ था. चैट Yeah, मे बी यू डोंट रिमेंबर दिस, मे बी यू वोंट नो दिस, बट निहाल का हाइप मुकेश, प्रग, अर्जुन, सबसे पहले निहाल का हाइप शुरू हुआ था बिकॉज ही वाज द चोजन वन. But let's see, yeah. why he's there now. 2711 is a beautiful achievement. Let's hope he keeps going forward. Yeah, and world number 27 now, so he's rising up the ranks. And let's keep in mind, जो मुझे last time का याद है Olympiad का, the ratings, the deciding ratings were chosen over a span of 3 months. And those 3 months, if I remember correctly, were like March, April, May, or Feb, March, April, something like that. So it's not really August, September, and July. ओलंपियाड सितंबर में Hmm. होगा. सो अगर दैट मींस कि 2026 का जो आपकी रेटिंग होगी, इन लेट्स से मार्च अप्रैल में और फेब मार्च अप्रैल, is what counts to, let's say, qualifying for the Hmm. Olympia team. So if Nehal even maintains this rating, I think he's going to make it to the Olympia team unless Vidit or Hari Krishna or नहीं नहीं, somebody has विदित तो Arvind has a कोडिंग comeback. कर रहा है ना. विदित तो कोडिंग करेगा ना. भाई एक चीज, तो वाइब कोडिंग क्या होता है भाई? इफ यू हैड टू मुझे क्या डिफाइन. भाई, आई हैव नो आइडिया भाई वाइब कोडिंग पता नहीं क्या होता है भाई. बट विदित अब तो कोडर बन गया भाई. तो विदित तो सो अब लगता नहीं कि वो खेलेगा. बट आई थिंक वाइब खेलना चाहिए कोडिंग, उसको बिकॉज ही वाज द कैप्टन. huh, is a modern AI-driven software development approach where developers use LLMs to generate, refine, and debug code. So basically, मतलब हम कोड नहीं कर रहे हैं, मतलब ये are not really coding. It's AI doing it.
ये तो मैं भी कर सकता हूँ चैट जीपीटी वो के साथ। एग्जैक्टली दैट्स कॉल्ड वाइब कोडिंग भाई। ये मैं भी कर मतलब सकता मेहनत हूँ। एआई कर रहा है, हम लोग चिल कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं ये कर, चल ये कर, चल ये कर। एग्जैक्टली। कोडिंग ओनली यूजिंग एआई टूल्स, ये पॉसिबल पता नहीं था मुझे कि ऐसा पॉसिबल भी होता है, बट इसके लिए चैट, वैसे अगर कोई कोडर है हमारी चैट में, इसके लिए कौन सा लाइक एआई बेस्ट होता है, अगर आपको पता हो तो, जस्ट लाइक आस्किंग फॉर फन, अगर कोई है कोडर इंजीनियर कोई वगैरह। कह रहा है वाइब ए- कोडिंग ए- इज कोडिंग टू गेट अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैरिज। भाई मेरी तरफ टारगेटेड क्यों लग रहा है मुझे भाई, मैं नहीं कर रहा वाइब कोड भाई, नहीं करूंगा भाई। बाय द वे लुक एट द पोजीशन, या कमिंग बैक टू द गेम, h6 was played and Arjun responded with g6 as we expected, but now queen b2 is very strong. If you move the knight on f6, it's curtains, khatam, game khalas. So rook e8 played, but now the bard doesn't like that move at all. I think the idea is e5, but knight d3 or f4 just stops e5, and it's going to be extremely difficult for black to equalize here. भाई पॉइंट रुकी 8 का ये, ही वांट्स टू प्ले e5 एंड नाइट d3 इसलिए अच्छी मूव है क्योंकि e5 को रोक रही है, क्योंकि ये डायगोनल इज डेडली लाइक यू मेंशनड। Hmm. क्लाउड है क्या, क्लाउड क्लाउड सोनेट, ठीक है। इट्स गुड टू नो, गुड टू नो। साहिल भाई कुछ करना है कोड, वाइब कोडिंग, हम अपनी वाइब ले आएंगे हम, और आप कोड कर लेना। I'm not sure I want to code something chess related though. I mean, if I had to code, I would code something else. Maybe, जहाँ पे मेरे को तो नहीं, बट मेरे भाई किसी के लिए मैं कर रहा हूँ तो उसको सारे स्वाइप राइट उसी को मिले। बट फिलहाल के लिए नाइट एफ3 प्लेड। ओ ऐसा बाय द किसी वे ने नाइट बनाया एफ3 था की, ना। ऐसी एक ऐप ऐसा बनी था है क्या बाय द कुछ? वे। दो हाँ, लोगों ही ने मेड बनाया, समथिंग सिर्फ कि एक ही टू लड़का, दो लड़के अलाउड है, बाकी सारी लड़कियां। क्रेजी। एक ने बनाया था कुछ कि जहां पे अब ऑटोमेटिकली स्वाइप राइट हो रहा था, सो पीपल आर स्मार्ट। बाय द वे नाइट एफ थ्री प्लेड एंड बिशप एफ थ्री वॉज द ओनली मूव प्लेड बाय अर्जुन क्विकली, बिकॉज ये नाइट e5 g5 जा रहा है। एंड बाय द वे आई डोंट लाइक द मूव नाइट f3 Sahaj, because it gives black an out. Yeah, you want the knight to come to g5 and e5, and this was the last knight white had, so I feel like this is a miss from Vincent Keimer. For sure, and Arjun pounced on the opportunity with bishop takes f3, and now bishop f3 के बाद it's granted, okay, Vincent has double bishop advantage, but for now the danger is more or less averted. Knight नहीं है तो g5 g5 पे कुछ बैठ नहीं रहा है, I think he's more or less fine। अभी भी एडवांटेज है, बट वो लॉन्ग टर्म एडवांटेज है आई थिंक विंसेंट के पास। Hmm. But the bishop takes played, so now those strong bishops, but now c6 apparently. And धीरे धीरे करके we can bring the bishop out somewhere either via e7 or via c7. The only question is, Saj, like, what do I do with the knight and the rook? Like, I can't move the knight on f6, I can't move the rook on f7. So white को अगर expand करना हो, एक और weakness create करनी हो, so what is white's plan? Because black is tied down. Good question. I'm guessing some break in the center, like d4, d5 looks kind of logical. Bishops want open positions, so that would be my guess. Some d4, d5 type के ideas, but it's difficult to say, bhai. It's very Hmm. difficult to say. Another thing I like is like making sure, like आप castle तो मत करो, but g3 खेल के king g2 ले आओ ताकि रुक्स कनेक्ट हो जाए, थोड़ी सी पोजीशन उससे इंप्रूव होती है। बाय द वे चोरी चैट में कह रहा है वाइफ कोडिंग भाई, वो हर मूवी बाद में करेंगे। मीनवाइल apparently I think we already have one player who's completely winning, and that is Hans Niemann, जो +3.3 वैल्यूएशन लेके बैठे हैं अगेंस्ट हिज ओपोनेंट लेवॉन रोनिन। ये क्या पोजीशन है भाई? वी सॉ ब्लैक एक्सपैंड ऑन द किंग साइड, राइट? वी सॉ f5 g5 एंड व्हाइट का किंग भी b1 पे है, बट समहाउ व्हाइट इज बेटर। हाउ? उसने F5 G5 खेल के अटैक किया, उसने कहा चल मैं लॉन्ग कासिल कर रहा हूँ, देखो लेट मी जस्ट डू एन एक्शन रिप्ले हियर। दिस वाज द पोजीशन, वो पूरा एकदम अटैक H4 खेला उसने। उसने कहा जस्ट किडिंग, आई विल गो लॉन्ग कासिल, अब कर लो अटैक। दैट्स व्हाट हैपेंड basically, and this वाह। is why I think his position is a bit worse right now because he's really expanded here, and C7 also could be a target in the future। मुझे आपके जस्ट किडिंग पे एक एक्स जोक याद आया। नाउ आई रियलाइज क्या कह रहा हूँ, क्रैक एक्स जोक्स। आई थिंक नाउ वी नीड न्यू 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 थीम्स, तो वो ढूंढने पड़ेंगे। मीनवाइल देर कर दी भाई, आप तो पहले बताना था। एंड बाय द वे द क्वेश्चन इज नाउ, आई स्टिल फील ब्लैक कैन क्रिएट सम इनिशिएटिव, लाइक किंग ऑन b1 है, कुछ तो अटैक होगा यहाँ पे पॉसिबल। एंड फॉर नाउ d7 इज डिफेंडेड, c7 इज डिफेंडेड, सो इट्स नॉट ओवर, या आई फील। It's not over until it's over, that I'll agree with you। तो बट लेकिन बार के हिसाब से Hans having the best advantage so far, and then second is I think probably
सिंडारोव वर्सेस मकसूडलू, सिंडारोव के बाद भी ठीक ठीक ठाक एडवांटेज है। देन वी हैव विंसेंट वर्सेस अर्जुन, जहां पे पोजीशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मैग्नस इज आई थिंक मोर और लेस इक्वलाइज्ड। वेरी इंटरेस्टिंग बात। कहाँ पे C6 जाना प्लेड है? बाय अर्जुन। अर्जुन के साथ C6 खेल दिया उसने, सो ही प्लेस द बेस्ट मूव, फाइटिंग इट आउट। ही नोस कि अगर अभी हार गए तो सीधा लूजर ब्रैकेट में जाना पड़ेगा। लव यू टू क्यूट स्माइल एंड रेन ओपीजी। साल भाई, आप वाइफ की तारीफ वाले जोक्स करो। हाँ भाई, वही करेंगे बिल्कुल, तारीफ ही तारीफ, तारीफ ही तारीफ, तारीफ ही तारीफ। मीनवाइल, यार आप वेयर एक इज बार विदित? ही नेम वाज, रिवील कर दोगे ना तो मेरे दिमाग में बहुत जोक्स है जो मैं अभी कर नहीं सकता। नहीं, आई थिंक अर्जुन इफ ही विंस विल यार डू द इसलिए नहीं, नेम। इसीलिए नहीं कर रहे आप शायद, कि आपको पता नहीं 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 नहीं, इफ अर्जुन विंस वी डू द नेम रिवील। है। चलो भाई, इफ अर्जुन विंस, अर्जुन भाई कर दो यार। वेयर इज आपने विदित? कहा ही था वाज इन, स्ट्रीम के एंड में हाँ। करोगे। हाँ, तो स्ट्रीम के अर्जुन जीतेगा एंड देन वी डू इट। या विदित, मुझे पता नहीं व्हाई इज ही इन साउथ अफ्रीका। आई थिंक ही माइट बी ऑन अ हॉलिडे, बिकॉज आई थॉट ही इज कमेंटेटिंग बट ही इज नॉट कमेंटेटिंग, सो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या चल हाँ, रहा है। मतलब उन्होंने पहले टिक्कू भाई को बोला, टिक्कू भाई ने बोला नहीं यार शादी वादी हो रही है, थोड़ा बिजी हो भी मैं, तो उन्होंने कहा चल ठीक है विदत को ही बुला लेते। दैट्स व्हाट हैपेंड। राइट टिक्कू भाई? नहीं भाई, मैं शादी प्रीपोन करा था भाई एक दिन से, बुलाते तो दो। पोस्टपोन। मैं वो देख, पोस्टपोन तो देखा ना नहीं टिक्कू भाई स्मार्ट भाई। कैसे है। प्री पॉन बोला टिक्कू भाई। भाई भाई, द स्मार्ट थिंग भाई, इज, स्मार्ट तो हो यार। क्योंकि आज विटी। बहुत पता है, आई हर्ड ऑफ लाइक 40 लाख समथिंग वेडिंग्स हैपेंड इन इंडिया इन द स्पैन ऑफ 1.5 months। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, आपने देखा होगा आज भाई न्यूज में। सो देयर वाज अ वेडिंग भाई जहां पे दूल्हा दुल्हन ने अपना ही रिसेप्शन ऑनलाइन अटेंड किया बिकॉज दे कुडंट मेक इट। आई नो, एंड आई नो। एंड टिक्कू भाई आपकी आप ही थे वजह क्या? से, एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी गलती है और एनीथिंग, बट आपको बताया नहीं मैंने अभी तक है क्योंकि हमारी बात नहीं हुई, ऑफ कोर्स यू हाँ। आर अ बिट बिजी। बट लेकिन जब आपकी शादी के एक दिन बाद आई हैड टू ट्रैवल बैक टू दिल्ली, एंड गेस व्हिच एयरलाइन आई हैड। ओ, अकासा एयर। यप। आई विश, आई विश, हाउ आई वाज विशिंग कि मैं कुछ भी और ले लेता, बट ब्रो इट वाज बैड। अब मेरी 4 तो पीएम कैसे की किया फिर फ्लाइट थी। आपने, कैसे आए घर गेस, भाई? 4 बजे की फ्लाइट थी, आई टेल यू। एंड द फ्लाइट लाइक डिपार्टेड अराउंड लाइक 10-15 पीएम। एंड आई वाज लकी बिकॉज उस दिन इंडिगो की 5 फ्लाइट्स मैंने अपनी आंखों के सामने देखी हैं जो दिल्ली पे कैंसिल हुई थी। तो आई वॉज द ओनली Damn. फ्लाइट जो एक्चुअली गई है दिल्ली। पर फिर भी 6 घंटे वेट कराया उन्होंने भाई भाई, भाई, मतलब इट यू वाज वांट हॉरिबल। इंडिगो, आई विल टेल यू। ठीक है, एयर इंडिया का मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है, तो वी टुक अ फ्लाइट पहले मुंबई जाने के लिए। तो हम्म प्रीमियम इकोनॉमी में बीच की सीट टूटी हुई थी जिससे मेरी कजन बैठी हुई थी, ठीक है। देन द फ्लाइट वी केम बैक विद वाज द सेम फ्लाइट, सेम प्लेन, मतलब वो सीट तब तक टूटी हुई थी। हम्म। तो इट वाज लाइक भाई, वाओ। सीटें ही टूटी हुई है भाई। सो आज के जमाने में थोड़ा भरोसा करना डिफिकल्ट है एयरलाइंस पे। भाई बिल्कुल भाई, और ऑल्सो लाइक दैट फ्लाइट वाज सो ओवर क्राउडेड, मतलब और इतना लोगों का बैग्स था, मतलब आई couldn't even put anything in the overhead cabin, yeah. I वाह। put everything on my lap, and I had to go like अच्छा, यू that. It पुट was so एवरीथिंग ऑन योर लैप या? so लाइक बैग्स, भाई सब सब अदर। कुछ। अकेले था भाई, आपके यहाँ शादी में तो अकेले था भाई वो से। ओ बाय द वे, टिक्कू भाई नॉटी हो रहे। बी नहीं नहीं, फाइव बाय द B5 played, so he's trying to open the diagonal, but maybe C5, yeah? And now, even though you get the diagonal, at least D4 becomes less likely. भाई आई थिंक विंसेंट इज टेकिंग दिस वन, या आई एम सॉरी टू से। आई फील लाइक विंसेंट इज लुकिंग रियली नहीं रियली गुड टू यार, मी। नहीं यार, अर्जुन भाई भाई आप कुछ दोनों कर बिशप सकते हो। देखो यार, आप कितने इतने बढ़िया लग रहे हैं। भाई बिशप भी इंडिगो की या फ्लाइट बुक करके बैठे हैं भाई। कहीं ना कहीं पे तो रुकना पड़ेगा उनको, आई एम टेलिंग यू, नाइट्स विल हैव अ कमबैक। हम्म। डिड यू वॉच हांस एंड लेवॉन पुशअप चैलेंज वीडियो? आई सॉ बट आई couldn't सी द होल वीडियो। कौन जीता भाई बताओ हमें। हम सरप्राइज के दोनों मतलब 50 पुशअप, 50 पुशअप्स करने थे, हम सरप्राइज दोनों 50 पुशअप कर सकते हैं भाई, दैट्स इनसेन। रियली, आई सॉ देम। नहीं करे, आई थिंक आई सॉ सम अंडर वाटर चैलेंज, आई डोंट नो, पुशअप्स का भी चैलेंज था क्या कोई? पुशअप्स का था, पुशअप्स का था। Fabi did 40 Fabi push-ups. did Wow. 40 push-ups. Wow, crazy. Wow. Wow, impressive. भैया, मैं चेस Yeah, देख लूँ, मेरा Fabi कल won with फाइनल फाइनल 40 यहाँ। push-ups. हाँ चेस देखो देख रहा देखो। हूँ भाई, कोई बात नहीं यार, देखो यार, पेपर तो आते आते रहेंगे भाई। अर्जुन कब हराएगा गेमर को?
आज ही। अर्जुन ने तो मैग्नस को भी हराया भाई। यार आज तो मुश्किल लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, Slightly करेगा भाई। difficult, but okay, he has a time advantage, so that's a good thing. Meanwhile, I think looks like Hans has slightly messed up his position, and Levon is more or less kind of back. Still a bit worse, but kind of back. And yeah, Magnus again equal. Magnus की गेम पे एक बार नजर मारते हैं. Oh, look at हम्म। this last move by Magnus. He played G5, and it's like भाई कास्लिंग करनी है इस साइड पे करके दिखाओ. You know, my Oh, question blunder, is, mistake by Fabi. oh, I told you, Saj bhai, Magnus Carlsen ji हार नहीं मानेंगे. And to be honest, I only have one question in this position. यार, only one question. Is the bishop on 8 done and dusted या फिर उम्मीद है उसके लिए? बहुत उम्मीद है उसके लिए. ये बिशप भी तो फालतू है ना. बिशप A4 का एक्चुअली इज वर्स देन दैट बिशप ऑन एज. ये क्या कर रहा है. उसकी क्वीन भी बंधी हुई है इसके साथ. Maybe I can reroute it. Acha, I can't reroute it. Yeah, if I reroute to C4, then C6 falls. Oh, very interesting position. Yeah, bishop on 8 Crazy. stuck, but somehow black is attacking anyways. By the way, look at the move played by Vincent Keimer. It's insane. Let's go back. He just pushed the G pawn and the position is dead equal now. What just happened? What? Okay, this is an aggressive move. His plan is to go G5 and to attack, but Arjun can of course chop this pawn. White will go bishop takes G4, and now the next move for Arjun is ridiculously hard. Ridiculously hard. By King F8 is the move. How? In which world would you play King F8? अच्छा, idea is knight G8 and bishop F6. Na- समझ गया idea knight G8 bishop F6, but okay, नार्निया वर्ल्ड में ridiculous. भाई, नार्निया में खेल सकते हैं मे बी जी। हाँ हाँ भाई भाई crazy. साहब, G4, and apparently there are only two moves by the way. Either it is, taking this pawn on G4 or it is King F8 now. So King F8 तो खेलना ही पड़ेगा भाई, otherwise it's over, yeah? मतलब ये समझ आ गया कि विंसेंट ने किंग एफ8 मिस किया है. हाँ. And even if he saw it, like he विंसेंट ने फॉर feels श्योर it's मिस किया. हाँ. very unlikely to happen, so that's why he goes for this. And now I think Arjun should take that pawn, I think. And of course, chat question: Bishop takes G4 pay. Sahaj bhai, I mean, I still don't get it. Yeah, matlab my rook controls G7. Why can't I just take the bishop on G4? So FG4, Bishop G4. मार दो यार बिशप, क्या चक्कर है साज भाई? चैट, व्हाट डू यू थिंक चैट? बार को क्या हो गया चैट? आई थिंक द मूव इज क्वीन C3. नहीं नहीं ओ नहीं नो, नहीं ये साज चाल लिया. भाई, इट्स अ क्वीन सैक्रिफाइस में भी. क्वीन G7, रुक टेक्स, पॉन टेक्स, फिर रुक डबल करके रुक H7 एंड रुक H8 हाँ, क्रेजी. Chat finds it. Queen H8 checkmate हो रही है भाई. There are two squares. This bishop on A1 is a very very strong piece, so we have to be super careful. But yeah, that is indeed the move. I think G4 is a good practical try by Vincent. And now the ball is in Arjun's court. He has to find the best way forward. Otherwise, he is done. lol please. नहीं नहीं भाई, tough है, not easy. And by the way, he takes, best move played, bishop takes will be played in an instant. And now is the moment where Erigesi Arjun has to find King F8 and he will be absolutely back. He doesn't find it. Oof. He goes D5, trying to open up the position. Yeah, that's a bad move, but not really that bad. अभी भी मतलब दोनों साइड मिस्टेक्स अभी कर भी? सकती हैं. For अच्छा sure अभी भी possible. अच्छा. अभी भी है पॉसिबल. वो तो पॉसिबल तो है भाई, बट F4 खेलना है यहाँ पे व्हाइट को. ऑल्सो वेरी हार्ड मूव. गोल्डन पॉन को ऐसे थोड़ी ना टच करता. मतलब कितना वियर्ड लग या रहा है. लाइक ऐसा लग रहा है कि एक चाल खेली उल्टी सीधी तो पोजीशन एकदम से मतलब इट कैन बी जस्ट कंप्लीटली लॉस्ट. या सो डेंजरस. एंड अर्जुन भाई, साहज भाई की स्ट्रीम्स के बहुत बड़े फैन है, तो गोल्डन पॉन को पुश कर, विंसेंट भाई, तो गोल्डन पॉन को पुश करने से पहले 10 बार सोचेंगे. तो लेट्स सी. ही कुड आल्सो टेक ऑन D5 बिकॉज अगेन यू कांट टेक विद द नाइट, आपको पॉन से मारना पड़ेगा. दैट गिव्स व्हाइट्स बिशप अनदर डायगोनल टू अटैक. सो लेट्स सी क्या रहेगा. मीनवाइल, just checking the games, apparently Magnus is already better. I mean, उनका बिशप G5 पे आ चुका है, and it feels like it's and look at how he's standing, yeah. He is confident. ये Yeah, गेम I अपने think घर आ रही है. Fabi. Exactly. I think Fabi in trouble here. Also, time पे भी 5 minutes he's down. एक क्वेश्चन Also है चैट में. 93 is the सहज भाई, threat, I'm right? 19 years old. Yes, 93 is a very dangerous threat as well. Nicely spotted there, Sahil bhai. एक क्वेश्चन है चैट में. सहज भाई, I'm 19 year old doing engineering. I'm 2200 plus on Chesscom. Can I start chess as a career now? Um,
लाइक आई थिंक छोटे गोल्स रखो अभी के लिए. लाइक डोंट थिंक अबाउट कि मुझे आईएम बनना है, जीएम बनना है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. लाइक मेक स्मॉलर गोल्स, प्ले लाइक अ क्लासिकल टूर्नामेंट, सी हाउ यू फील, एंड देन उसके बाद डिसाइड करो. बट टू बी ऑनेस्ट 19 के बाद करियर बनाना, चेस में करियर आपको बनाना है सिर्फ खेल के, तो यू नीड एटलीस्ट 2650 रेटिंग या 2600 भी चलेगा आपको. एंड इतनी मेहनत अगर आप कर रहे हो तो यू कैन पुट दैट डिसिप्लिन इनटू समथिंग एल्स, बिकॉज 19 इज, इट्स अ बिट ओल्ड to make a career Yeah, out yeah, of, yeah. but you can use You it as know, a hobby. you know, if you ask a top chess player when do you start chess, usually they will say like 5 or 6 or 7, and even if you're 2200, 7, 8, yeah. they reach that level by the age of 11, for example. So you're like 8 years behind, and it's possible. Anything is possible, I think. But I think Mm. you have to be prepared for so much effort. Keep managing it while doing engineering is very hard. Meanwhile, by the And way, also knight c4. sacrifices. Yeah, lots of sacrifices on the board and off the board. By the way, knight c4 played, so black should not take on c4. I think he should take on a4 apparently, and that's what he does. Knight a4 played, queen takes a4, and now Magnus has to find queen e8 to attack this pawn on c6, and white has to play knight a5 to defend this pawn on c6, And basically. look at the Bhai, next look move, at Saj bhai. this. So yeah, 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 queen yeah. e8, knight a5, and chat black to play. What is the best move for? अरे भाई अच्छा, सॉरी यार, चल दिया मैंने. चलो वो मुश्किल था ट्रिक वैसे था भाई. ढूंढना. That's not the best move. Saj bhai is tricking you, chat. What is the best move in this position? कुछ और था भाई, कुछ और था. अर्जु uh, बेटर. अर्जुन इज क्या बात बेटर. कर. हाँ, स्लाइटली बेटर. मिस्टेक बाय विंसेंट. But yeah, it is indeed knight takes e3 chat. F takes e3, bishop e3, and okay, you have a lot of play here. Rook f2 के बाद आपको ये भी नहीं मारना. knight f2 के बाद, rook f2 के बाद भी रुक नहीं मारना है आपको. जस्ट f4 खेल के जस्ट दोनों बिशप के साथ खेलो. ये बिशप खेल नहीं रहा है, बट खेलो. भाई खतरनाक पोजीशन लग रही है या भाई. टफ, डेंजरस पोजीशन. यहाँ साज भाई. टफ, टफ, टफ. अर्जुन के बोर्ड पे जाए. टिक्कू को उसकी टिक्की मिल गई. थैंक यू भाई. मीनवाइल लेट्स गो टू द गेम ऑफ अर्जुन, जहां पे बिशप g4 d5 के बाद व्हाइट ने नहीं खेला एफ पॉन पुश. उन्होंने बिशप e2 आ गए. आई थिंक ही वांटेड टू गेट द बिशप आउट ऑफ द नाइट्स ग्रास्प. उनको अपनी क्वीन को आजाद करना था और रानी की आजादी में बेचारे फंस गए. एंड नाउ ब्लैक हैज टू फाइंड. साज भाई, व्हाट डज अर्जुन हैव टू फाइंड हियर? He has to find a crazy looking move which is d4. आई थिंक द पॉइंट इज आप ed4 मारते हो तो f4 का स्क्वायर क्वीन के लिए खुल रहा है. तो यू कैन ब्रिंग द क्वीन टू f4 एंड इट्स क्लोज टू द व्हाइट किंग. यू कैन स्टार्ट गिविंग सम चेक्स एंड इट कैन बी अ प्रॉब्लम. एंड d4 पे अगर आप नहीं मारते हो d4, देन दिस बिशप बिकम्स useless, more or less. So do you think Arjun finds this? I think yes. Yeah, I think he should find it, and especially because ed4 queen f4 pe black is already +1. So the tide will turn suddenly out of the blue. So I think Arjun definitely should consider it. Also because dc4 doesn't make any sense, right? You're developing white's bishop for free. The only other Hmm. alternative I see is कि ठीक है मैं bishop d8 develop करूं, but I don't see a good square for the bishop on d8. So for example, bishop c7, Hmm. but कर क्या रहा है bishop c7 वहां पे? Like I just don't see it happening. Hmm. So maybe d4 he will find out of elimination. Yeah, he doesn't see any other good move here. For sure. I think d4 for sure he will find. He must be looking at this move. Must be. Like I would be shocked अगर वो d4 नहीं खेलता है बताओ. Come on, Arjun bhai. Meanwhile, just doing a quick roundup. Hans is slightly better against Levon. Arjun का तो आप देख ही रहे हो. He has this one chance of d4. Sindarov slightly better against Parham, and Magnus slightly better against Fabi. चैट बाय द वे कितने लाइक्स हो गए यार? चैट के लाइक्स को देखिए भाई. इज चैट कीपिंग अप विद द लाइक्स आज भाई? नहीं भाई, चेकिंग. definitely not. चैट 500 लाइक पे डायमंड मेंबरशिप आपके हाथ में. चलो भाई लेट्स गो. वेडिंग सीजन है तो गिफ्ट देना बनता है. जल्दी से भाई लोग स्ट्रीम लाइक कर दो. लेट्स गेट टू 500 लाइक्स एंड d4 ऑन द बोर्ड. लेट्स गो. अज्जू भाई ऑन फायर भाई. आग लगा दी भाई, आग लगा दी. Crazy, crazy. Now the tide is turning. Now Arjun can take this for sure. Just look at this. White की only move is queen c2 here. ed4, knight e4 is just GG. बहुत सारा अटैक आ रहा है. एंड लॉन्ग कासल भी आपकी हेल्प नहीं करेगी यहाँ पे, बिकॉज योर क्वीन साइड इज ऑल्सो बिट डैमेज्ड. आपको क्वीन c2 खेलना है, देन लॉन्ग कासल करना है आपको. व्हाट इज दिस इवन? एंड ऑल्सो एक बार e5 आ गया ना, द बिशप ऑन a1 विल से कि भाई मैं एक टाइम पे स्टार हुआ करता था.
and suddenly I'm just Hmm. left to the sidelines on the bench, and I don't like it. So I think kahin na kahin pe black ka e5 is also very very strong. So white is stuck in a situation jahan pe he was just dominating the game, and suddenly he has to think about, okay, my this piece is bad, my rook on h1 is now suddenly not doing anything, my king on g1 is open, my queen on b2 is bad. Like every piece looks like a shallow shallow version of its original self. So I think kahin na kahin pe Arjun is pushing matters and has good chances here. Also, having an extra minute and a half only helps his cause. And yeah, Vincent in some trouble. E takes d4 looks very logical to me, but it is not good. I देखो would भाई, love to get like Vincent's reaction here. Do you think he has missed d4? I think he probably saw it, but I think he saw d4. He thought, okay, I don't have to take on d4. Like I can always find a solution. But maybe he underestimated this, and that's very very logical. And also d4 फ्री का pawn है ना, like you sometimes आपके आप तीसरी आंख से देखते हो कि अरे भाई ये तो मर ही जाएगा फ्री का, तो कोई बड़ी चाल नहीं है. Hmm. So possible to miss it as well. Nikman, why do you stream on two channels dividing viewers and likes, Chess24 India and Chesscom India? बस भाई अपन को अपनी attention divide करने का शौक है, between the wife and the work wife. So जल्दी से भाई लोग stream दोनों channel पे like कर दो भाई, Hey, ताकि what क्या is हुआ? this? Like people were also making jokes like this. आपकी शादी पे ही वो jokes चल रहे थे. वर्क वाइफ करके. अरे पॉप वर्क चैनल से वाइफ भी तो, चल रहे थे जो किसी ने. अरे तो चेसकॉम इंडिया हो गया वर्क वाइफ, Chess24 इंडिया हो गया वाइफ ना भाई, उस तरह से. हाँ, एग्जैक्टली. भाई डन भाई डन. आपको क्या लगा मेक्स था आज भाई? परफेक्ट सेंस. मैं बोलूंगा ही नहीं. मैं बोलूंगा ही नहीं जो मुझे लगा. By the way, Magnus played a brilliancy. Let's go check it out. Really? Oh, knight e3 played on Yeah. the board. Oh, He found queen e8, knight a5. Ooh. wow. Magnus Carlsen forcing matters into tie breaks. And Fabi is I told you, no, done by. भाई I think एक बार इसके बाद नहीं. Hmm. it's like a switch that you turn on as Magnus, and suddenly you know कि अब जीतना का time आ गया है भाई. You are relaxing, enjoying the beautiful view in the valleys of Cape Town, and suddenly game खेलनी पड़ती है. You're not fully turned on, but you lose a game and that wakes you up. Yeah, oh my god, ऐसे कैसे हो गया? And now I'm gonna cruise through. And black से धुआंधार यहाँ पे अटैक कर रहे हैं. And of course, even if you don't take, then मैंने फ्री का पॉन आपके घर में आके मार लिया, तो मारना तो पड़ेगा ही. And the king on g1 is kind of stuck, yeah, has nowhere to go. Exactly. Exactly. Fe3, not a good move. Apparently, h4 is the saving move for white, which is, I think, unbelievable. And also, let's not forget, भाई 16 चालें हो गई and this bishop is still on a1. उसने b3 नहीं खेला अभी तक. ये bishop मतलब क्या कर रहा है ये? Yeah, I think it's not an easy position for white now. And 5 minutes, by the way, we are, this is a longer time control, तो हम भूल जाते हैं कि ये टाइम बहुत जल्दी गायब होता है, because players take a lot of time for each move. 4 minutes 50 seconds for Fabi under pressure. I think we are going to tiebreaks in this game, very very likely, unless Fabi pulls off a miracle. So meanwhile, Arjun is winning. Oh my God, Arjun is winning. Vincent Keimer has blundered. He's pushed the F pawn, Saj bhai. आपने कितनी बार कहा विंसेंट भाई नहीं करने का ऐसी गलती, ऐसी ऐसी गलती से नहीं कभी मत करना. नहीं सुना भाई, आपकी स्ट्रीम नहीं देखता है भाई, समझ में आ गया मुझे साज भाई. भाई ही इज नॉट अ ऐसे ही ट्रू हार फैन. जाते हैं लोग यार. कितनी बार सेम लेसन लोगे यार. एफ पॉन जैसे ही गोल्डन पॉन टच कर, देखो भाई इक्वल थी पोजीशन, सब बढ़िया था. एफ पॉन टच किया, लॉस्ट. मतलब हाउ मेनी एग्जांपल्स मस्ट आई गिव यू चैट. लाइक ये तो अब तक भाई ये तो मैं रट जाना अगर चाहिए सबको. अगर 1.5 साल 2 साल में उसने एक स्ट्रीम देखी होती अब तक, तो यहां पे हाँ, वो हार नहीं रहा होता. एंड द बेस्ट पार्ट इज एरिगेसी मोस्ट अर्जुन इज लाइकली. नाउ विनिंग. भाई अगर वो हार तो ना रहा होता, बट वो मोस्ट लाइकली यहाँ पे खेल भी नहीं रहा होता अगर वो हमारी स्ट्रीम ये देख भी है, रहा था ये भी है. तो. एंड नाउ चैट देखो, नाइट गेम में आ रहा है. नाइट g3 इज अ बिग थ्रेट बाय द वे, फोर्किंग बोथ द रुक्स, अनफॉर्चुनेटली प्लेस्ड. ऑल्सो नाउ मूव्स लाइक e5 g5, बस क्वीन को गेम में लाना है. इफ यू कुड जंप ओवर द f, दिस इज वर्जन ऑफ चेस I called fly chess, जहां पे you can jump over one piece. In that variant, queen g3 would be game over, right? It's checkmate. So you just need to bring the queen to the game, Hmm. and it's all but over now. Unless you cast the Yeah, queen side, for Saj sure. bhai. क्वीन सेट कैसे करने का टाइम आ गया है.
हाँ, but then bishop f6 and then you're also cooked on this side, no? Like d takes e3 तो मर ही रहा है. ओह भाई साहब, गेटिंग Yeah, I कुक्ड think हियर, Vincent गेटिंग, is done. लगता है By the साथ way, में Magnus ब्लेंडर्स also इज, winning. हाँ, ही इज आल्सो विनिंग, ओह वाओ, Magnus winning. Magnus is winning, yeah. This is the current position. ओह, Okay, not winning, okay, like good advantage, but yeah, more or less winning, I would say. ओके लेट्स जंप बैक टू द अर्जुन गेम। एक पॉन था अर्जुन, ना, कौन सा पॉन? उसका पॉन चला गया. पॉन चला अपनी गया है. भाई, ही गॉट बोल्ड भाई, वो चला गया भाई। कहता नहीं खेलना रे हम्म. फ्री स्टाइल मुझे यार, क्या रे ऐसे फालतू में मरवा दिया यार, नॉर्मल चेस खेलूंगा मैं। नॉर्मल चेस में मुझे पहली हम्म. चाल पे चल देते हैं, यहाँ बंदे चलते ही नहीं मुझे यार, क्या बदतमीजी है यार, ही कुडंट हम्म. हैंडल इट यार, ये पॉन है। गंदी बात. So he goes 94 and now Vincent thinking 2 minutes है उसके पास in a dead loss position. I would be surprised. I'm really shocked अगर Vincent is able to save this. He goes rook h3 कैच and थ्री। now critical moment yet again. Blue arrow from Arjun's side. He अरे does not find it. That's a mistake. Played by the way ओ Queen c2 so quickly and he goes 90. भाई दर्द हो रहा है सहज भाई, बहुत दर्द हो रहा है यार, वी वर दिस क्लोज। भाई दर्द आपका ठीक करता हूं, रुको. अगर if white plays rook f3 in this position, chat black to play and win. आ You like it? It's nice, no? नो, इट्स नॉट वर्किंग। It is working. क्या देख रहे हो भाई आप? Chat black to play and win. Come on, quickly, अच्छा, quickly. दूसरा रुक एफ चला आपने, ओ आई थॉट रुक एच एफ थ्री, माय बैड माय बैड माय बैड Rook ff3. माय बैड। नाइस नाइस नाइस। Exactly, d3. Look at this. Attacking this, and boom, this bishop on a1 is done. What a nice tactic. वाओ। Oh, f3 पे चला उसने, बट उसने bishop चल दिया f3 पे. Oh, by the chat, Arjun losing his advantage wasn't easy, I think, but E5 खेलना चाहिए था उनको. He was winning, +3 advantage. क्या वो दोबारा advantage बना पाएंगे इस आज? I think it's still possible to win this game. हाँ, because 6 मिनट का टाइम डिफरेंस है. I think Yeah. within like 5 minutes, आपको within 5 minutes, I think Vincent will be under 30 seconds, and Arjun will have 6-7 minutes, something like that. And तब I think the possibilities of a mistake really increases for Vincent. So I think Arjun is taking this one. विंसेंट भाई मैग्नस का गलती अभी भी कर मैं दो। श्योर नहीं हूँ कि वो जीत रहा है कि नहीं. Come on, come on, come on. Now 8 minutes for Arjun by huge lead on the clock. वो pawn जो h6 पे था, जो एक खतरनाक beast लग रहा था, now suddenly there is no white piece that can ever land on g7, and the bishop h6 does a great job of controlling those g7 h8 squares. No pressure. The rook on h3 now rather looks stupid, to be honest. The king on g1 looks stupid as well. White के pieces इतने uncoordinated है, right? मतलब कोई भी कुछ भी कर रहा है, मतलब there is no coordination between them. I think यहाँ पे Arjun, Hmm. even though the bars is not that much winning, should be clearly better. Yeah. Practically very, very good. क्योंकि कुछ he can play multiple moves which will just retain his advantage. And white के Yeah. पास कोई वो अभी 2 मिनट भी है And उसके पास. That definitely increases his odds. कोई कह रहा है even Samarena won't play rook f3. Bro, even Samarena मतलब भाई he is the super pog champ भाई. Let's not forget that. Even Samarena मतलब of course he won't play that. भाई, I'm saying this with all respect. Put some respect on that name. Like 3 हाँ a.m. को खेला भाई, 3:30 बजे रात के. He defeated players who were professional chess players at some point in their lives. 2000 rating, 2100 rating थी उनकी. And 3:30 बजे he defeated those players. So put some respect on that name. Like yeah. you cannot say And कि also Samiran as a yeah, bad and player. Samay also like isn't like a regular player. Yeah, he is so busy nowadays. So to come from that and kind of uh, perform in the way he did was just insane. And meanwhile, Bishop f3 played. Arjun is still thinking he's using the extra time, but let's hope he doesn't really just waste that time away. Yeah, कई बार होता है ना, you have extra time, you use it for the sake of it. That's what you really want to avoid here. You want to use it to find a plan which likely your opponent Hmm. hasn't considered. मान लो second best plan भी हो, but if your opponent hasn't seen it, then this would be the perfect time to play it. And Sahaj bhai, what are the plans you are considering here? Some way to like, get this queen out of b8. Like I want to activate it somehow, but I'm not seeing a clear path yet. Like I would play something like queen d8, queen e7, just because queens are centralized है, and I'll prepare for something like e5. But e5 अभी possible नहीं क्योंकि मेरे पास bishop d5 है, and I can lose exchange over Ooh, here. So I have to tricky. plan it better. But अभी के लिए queen is the
ऑड पीस, क्वीन को थोड़ा एक्टिवेट करो, देन उसके बाद सोचते हैं प्लान. या पहले एक्टिवेट करते हैं फिर सोचते हैं, दैट्स माय लाइफ मोटो, यू नो, डू फर्स्ट थिंक लेटर। बट क्या करेंगे यहाँ पे अर्जुन? बट ही प्लेड समथिंग, क्वीन C8, सो कीप्स एन आई ऑन दैट रुक ऑन Yeah. H3 नाउ, सो E5 becomes more likely. Yeah, e5 is the threat, I guess. And if you move the rook, which seems like the practical choice, apparently that's a really bad move. I don't know why, but apparently that's a really bad move. I think rook g3 is GM knight Paul Murphy बोल f5. रहे हैं Oh, he moves the they rook. were He moves 300 the rook. rated. That's a mistake. बढ़िया, knight f5 incoming, और e5 पे तो bishop d5 है अभी. That doesn't work. Yeah. कोई चैट में बोल रहा है भाई they were 300 rating higher too. भाई that's chess.com rating. आप ये नहीं समझ रहे कि बोटेज is a 1900 FIDE rated player and समय रैना की FIDE rating है ही नहीं. So that is, I think, way more impressive than that 300 rating difference on Chesscom. FIDE rating is very different in that sense. Is Andrea Bottes rated So yeah, 1900, Saj bhai? FIDE. I think so, no? I think that's the other Bottes, yeah? Who's rated मैं check 2000, कर देता and हूँ. she was 2100, I think. Andrea is, I think, 16, 1700, I think, if I'm not mistaken. But Check yeah, कर देता very हूँ. strong, yeah. Like, जितना Chesscom है समय का उतना उसका FIDE है. So that in itself is crazy. By 1837 is her rating. क्या Standard. बात कर रहे हो? Andrea Bottes. Yeah. Wow. So 1837 is her. wow. Okay, my Her mind is peak blown was again. her peak was 1906, Wow. which was in 2024 June. So it's not really that far off. So like भाई 19, समय like भाई, मतलब जिसको छूते हैं भाई वो that's गोल्ड खाता है भाई, क्रेजी। भाई बाय द वे नाइट सीरियसली एफ। भाई साढ़े, और वो भी 3:30 बजे रात के भाई. Like ट्रू massive ट्रू respect. True. But to be honest, I think Samay loves playing at that hour also. But of course, yeah, matlab, he had a show next day, by the way. Let's keep in mind. So Hmm. crazy कि भाई वो जीत पाया and played so well. By the way, knight f5 played, best move by the India number one, putting pressure on that e3 point as well. The knight could hop into g3. There could be knight h4 ideas for all that matters. And of course, like, just activating a piece. Very, very good position for Arjun. Time pay 1 minute 26 seconds. Sahaj, 3x the time. Things looking good. Bhai, Vincent, I think, will be the most stressed about his time because 1 minute, मैंने बोला था 5 मिनट के अंदर अर्जुन के पास रहेंगे, 6-7 मिनट, 5 मिनट है उसके पास, and Vincent is now under a minute, and this is where I think people start to make blunders, and I think Vincent, there is a very little chance that he's going to be able to save this. Very little chance. By the way, Fabi has equalized more or less. Oh, wow. But then Fabi just needs a draw, right? He just needs a draw. So if he draws, Magnus is out. I mean, that would be an insane upset. He has to play in the loser. I mean, Magnus and losers bracket don't go together. Yeah, they're not synonymous. Like that would be insane. By the way, राकेश भाई every chess. predicted all the blunders. हाँ. सहज was in shock. हाँ भाई, राकेश, पता है राकेश भाई सब blunders predict कर रहे थे. वो कहते ही होता. Everything. भाई crazy था वो. But okay, let's come back to the game. Knight हाँ. f5. 23 seconds for Vincent. भाई चल 19 सेकंड भाई. He's scratching his head. He's still not convinced of a particular move. Yeah, I think in these moments, usually you make a mistake. And he's played bishop c6, I think. Slight inaccuracy attacking the rook. The rook can move literally anywhere, and Arjun is better. D8, But I cannot E7, believe he F8, took 3 squares हैं आपके पास. he took 2 minutes and 13 seconds for that move, Sahaj. I mean, he used like 80% of his time for that move. भाई समझ ही नहीं आ रहा ना क्या चल रहा है. कोई कुछ कुछ क्लीन वे नहीं है एग्जिट करने का. ED4 is द नाइस मूव, बट यू आर गोना गिव मी एन आउटपोस्ट ऑन D4. देयर इज नो क्लीन वे No ऑफ chance. एग्जिटिंग द पोजीशन. अब D3 भी आ रहा है भाई. D टेक C3 भी मर रहा है. 18 By the seconds way, for Vincent. Rook H3, best move for White, gives +1 for Arjun. Everything else is almost +2. He needs to find Rook H3. Not an easy move. He just came from there, right? It's almost impossible. Kuimithi, mistake. Yeah, predicted. Now pawn takes, bishop takes is better for Arjun. कुछ भी खेल सकता है अर्जुन यहाँ पे, बेटर ही है. Queen C7 also a good move just to activate the queen. Come on, Arjun. Let's see, This let's is see. the 23. moment, yeah? The only difference is the time, by the time is too little for Vincent. Come on, Arjun. You can pull this off. You can pull this off. It's possible. Which did Eric Rosen and Tikku marry on the same day? आपको पता है actually Eric Rosen also got married
Yeah, I know, but which day did Eric get married? I don't know which I'm not day it sure. was, but he got married to, I think, Irene, if I'm not Ah, mistaken. it's mentioned it's around December 7th or 6th, but date nahi mentioned. So could be the same day actually. Definitely Crazy, bhai. possible. Huge if true. Magnus was overconfident. He games a 60% chance to win. I mean, he's always overconfident, but I think for him, it's just called confidence. Hmm, साहद भाई बीवी crazy. और चेस में क्या चूज करोगे? साहद भाई आपके लिए क्वेश्चन. ये कैसा सवाल है भाई? वाहियात सवाल. बहुत ही वाहियात सवाल. मीम था ना कि माय Like गर्लफ्रेंड I टोल्ड have मी I इफ यू. have no idea. इसमें तो कोई जोक भी नहीं मार सकते भाई. एक अभी जोक है मेरे अभी पास वो. ताजा ताजा शादी हुई है भाई की, तो जोक भी नहीं मार मैंने सकते इधर. एक मीम था कि माय गर्लफ्रेंड टोल्ड मी इफ आई प्लेड दिस चेस टूर्नामेंट on Sunday then she would leave me. Then the guy says, okay, what did you do? Then the guy says, 1e4 as always. Nice, nice. Respect. By the way, Arjun This is like drinking the 3 oldest minutes chess and joke I 23 know. seconds. By the way, come on, भाई 20 सेकंड. सॉरी अर्जुन की चाल है. टाइम है, माय अभी बैड. सोचने दो उसको बेचारे को. भाई पर he's taking too much time. I feel like कहीं ऐसा ना हो कि you end up in the same situation. This is how you botch up a completely winning game. By the way, let's look at Magnus's game very quickly as Arjun thinks, but because Fabi also having 52 seconds on the clock and Magnus putting the pressure with f4. Hey, He how could is win this. this? The only problem is his bishop is kind of Yeah. stuck. भाई when Fabi decided कि भाई I'm gonna lock that bishop and I'm gonna hope that it just holds on the king side. If it holds on the king side, then I just win the game, yeah. Because or at least draw it. Hmm. And queen e4 looks like a Oh, logical move, but it's blunder. a mistake. Blunder and found by Magnus a6, and we are heading off to tie breaks. Most likely Wow. because Magnus is now completely winning. भाई टाइम प्रेशर Wow. में नहीं आना होता यार. टाइम प्रेशर में जब आते हो तो मिस्टेक ही होती है. बाय द वे, गोइंग By the बैक way, टू अर्जुन्स बोर्ड. Arjun has made a slight mistake. 97, not the best move. It wanted to grab the bishop. The bishop drops back, but that was not the best time in the position now. Okay. And now what? Do you go back knight f5? He plays e blunder. What? No, but I can. Arjun just oh, Oh! bishop e6. He Oh, completely huge messed Bishop. blunder. Look at Gamer's eyes light up. Look at him give Arjun a stare. He cannot believe what he just played. His opponent has blundered, given the giveaway. Sahaj, what just happened? Look at Arjun in shock. That is a huge blunder from India number one, Arjun Erigaisi. White attacks the queen. If you move the queen, then bishop e6, and that's just an exchange. And problem is, you will Oof, have to this is take. really bad. Oof. This is Oh, really, really, really look bad. at Gamer, yeah, how excited he is. He gave Arjun at least like 8 stares in 8 minutes, 8 seconds. It was crazy. And now Arjun is thinking, how have I bossed this up? It was in the bag. Yeah, and now that bag belongs to Vincent Keimer. And very important, you might think knight f5, I can block it back, but there is e4 and goodbye to the cute knight on f5. The horsey. Yeah. Gaye bhai. I mean, I wouldn't go as far to say that Arjun is lost. Arjun still has a chance. Queen c7 he plays, bishop e6 happens, he plays e4. Yep, that's the best way to play. He finds some Yeah. counter breaking. Knight f5 पे बैठ जाए तो rooks don't have any open files. That's very important in this position. You don't have Yeah. open files. Arjun can still win this. I would say he would even take a draw now. Meanwhile, white ke liye, I think he needs to attack the e4 pawn before black can regroup. So knight, queen b1 played. Wow. Knight Amazing. f5 only move for Arjun now. He has to play knight f5 or he is gone and dusted. It's over otherwise. E4 pawn marega and then white just steamrolls black on the king side. He needs to play knight f5. Yep, absolutely. Knight Because f5, queen e4 not an pe, easy move for Arjun. queen e4 there'll be knight g3, I'm guessing. Yeah, that's the idea, I think. Yeah, but not an easy decision. White can go rook g2 also and stop this idea of knight g3. And Arjun also Arjun. under a minute, so looking This is the difficult. worst scenario. Yeah, you suddenly drop below the clock. Oh, he blunders.
And And now now blue white is arrow for just Vincent. Critical moment. Rook g2 only move. If not rook g2, then Vincent is not winning. but Sahaj bhai, I mean rook g2 f5. I mean this is just collapse, yeah. I don't know f5 hai ki kya hai, but looks very dangerous. And now there's no knight f5 also Ah, because knight f5 is bishop f5. rook g2 is very, very strong. 28 seconds for Vincent. He is What a going for the rook. I turnaround. feel like he's looking on that side of the board. He's going for the rook, I feel. 19 seconds. Come on, Chat हम Vincent. लोग उफ हम लोग इतनी गलतियां करते हैं अपनी गेम में. Imagine making one mistake and just losing the game. Yeah, this is professional chess. Played. Oof, played. Wow. King f8. Okay, the rook on f7 is still trapped, by the way. You still can't move it anywhere. That's the sad part. You don't you don't have to take it. Like that's the worst part. You can take it like जब black knight f करके चाल वेस्ट करेगा तब मारो f7. Exactly. You can take, of course, Now, that's also by fine, the but way, you don't six have to. seconds. Oof. Six. Oof, he had Best limited move time on the. again. Wow. And now rook e1. Wait, how do you Best save the e4 pawn? I think it's over. I think Arjun rookie. is gonna lose. Yeah. Yeah, I think this still a bit complicated, but yeah, this doesn't look very promising for Arjun. By the way, Hans Riemann also winning, Sindarov also winning. So I think we'll have, unless Arjun, causes a comeback, I think losers bracket mein jayenge and winners bracket mein jayenge Sindarov, Vincent, Hans, and then only Magnus's game goes to tie. But if that's the only move played. Oh, And F5 f5. is Wow. just, oh, No. that's, Look at this. Knight f5, rook takes f5. Gf5, rook g7 check, and goodbye to your queen. wow. Look at how, emoted Vincent Keimer is right now. He knows the game is in the bag. Rook g7 check aa raha hai. Queen d1, queen h5 aa raha hai. And it just feels like even if Arjun had like 50 minutes on the clock, he would not save this. Yeah, very tough. Very, very And tough. Queen d1, by the way, very strong move to get queen h5 check in. yeah. ये And if queen Arjun ही है जो loses the chat, active नहीं है. Played यार. basically he Played. cannot finish in the top four, right? Saj bhai, now he cannot finish in the top No. four if he loses this match. 5th to 8th, I think, would be the. Yeah. पूरा गेम हाथ में था यार. पूरा गेम पूरा आउटप्ले किया एंड वन हाँ. मूव ब्लंडर. That's chess. No, that's why I personally found it tough because in tennis, if you score a point, it's yours. In football, you score a goal, it's yours. Nobody can take it away. But in chess, you could play well for 99% of the game, and then 1% can, that's all that matters at the end of the result. So, is this harsh? But that's what chess is. There we go. Queen h5 check incoming. Queen h5 आ गया. And now, yeah, the best move for Arjun is queen a8 by whatever that is. Maybe the idea is to prevent like queen e8 or something. But queen d7 खेलोगे ना आप then? Like to also have rook d2. Hmm. Very tough. I think Arjun likely to lose. By the way, no results so far. That's very interesting. On any board. Uh, Queen b8. queen b8. And now I think rook g7, then queen f7. It's just all falling. Queen f7 Played. coming next. h7 भी मर रहा है यार. Queen f7 भी आ रहा है, h7 भी मर रहा है. Yeah, And there's Arjun no is there's no out. counterplay now, right? Because queen f8 खेलना पड़ेगा only move. And then I just pick up h7. I mean, there is absolutely zero counterplay. I don't see it at least. Apparently rook takes e7 is also winning for white. ये खेलेगा नहीं He'll do वो. it, Rook yeah? h7 ही मारेगा, I think. I think नहीं he'll नहीं, do rook it. e7 is too. But why? So it's too risky. Really? एक चीज मिस कर दिया आपने तो मतलब it why would you Also risk that? true. You're Also winning. true. Rook h7 मारो ना सीधा. Also true. नहीं, Arjun eliminate नहीं होगा. He will play in the losers half, like 5 to 8 ranks के लिए he'll play now from tomorrow. So he can't finish first. He can't win the event, for example. But yeah, I mean, he had the game in the bag. Even the first game he was better. Second game he was winning, but just couldn't convert. By the way, Magnus completely winning against Fabiano. So that match going into Fabi tie breaks. still fighting back, Fabi though. Yeah, he's not giving up somehow. Like, okay, it's Yeah, lost though. for Yeah, sure. yeah, yeah.
Hands also completely winning, by the way. It's okay, not again another mistake made. So still interesting. Oh, Oh, Rookie rook 7 takes played, e7 and check that's played. that's game over, yeah. Because yeah, Queen F5 check, King D6, Queen G6 check, and you lose the Queen. Yeah, it resigns. You Oof. see Vincent. King D7, the rook comes to F7, King E5, rook F5 is made. So Arjun will have to resign, and Vincent pumps his chest. He knows the game is over. Unfortunately for Arjun, it is heartbreak, and he loses the game. And Vincent Keimer defeats Arjun Erigesi 1.5 to enter the semifinals, and Arjun goes to the losers bracket. So Ajbhai, I think that was unexpected. I think Arjun was almost through, yeah. I think the entire game he played so well. He outplayed Vincent to a certain point, and maybe we can do a quick action replay to show everyone where things were started to go wrong. This was the position. He had a great advantage. He actually had a -3 advantage earlier on. This is where the mistake started. He goes knight e7, kicking the bishop away, and bishop g2 ke aane ke baad, he goes e5, which was a huge blunder. He missed that white can go bishop h3 and then bishop e6. This tempo, this entire sequence of knowing that आपका रुक पिन हो रहा है was missed by Arjun, and because of this, he gets knocked out. And now he will play for the 5th to 8th place. Yeah. Hard luck for Meanwhile, Arjun. Let's go to let's Magnus's Magnus. board Yeah. So the game is because he's still on. completely winning. By the way, Magnus with the black pieces needs to win this game. अगर Fabi किसी तरीके से भी hold कर ले, but I think it's gonna be impossible. Three connected pass pawns. Feel like too much to handle. Yeah. For sure. And by the way, Sindarov again winning against Parham. 2-0 से उसने फिर से परहम को हराया. Insane performance by Sindarov here. Wow. By the way, no, Arjun is not eliminated. He will play tomorrow for the places from 5th to 8th, but he cannot win the event any longer. Um, so, yeah, Sindharov also about to win. I think the game is going to end soon. Also, Hans Niemann has an only move he has to find. That is knight d8. I think he messed up his advantage a bit. The game is both kings very weak, by the way, in this position. This is the most evenly matched. But H pawn could be running very soon. Oh, yeah. Look at these pawns. Crazy. Knight date also not easy, but however, Aronin's time is a bit low. 37 seconds only, and Hans can technically calculate his way out of this, but Levon might not have enough time. Come on, come on. And okay, still no moves by Parham. भाई कितना Yeah, टफ है यार checking. चेस आज भाई. Oh, mistake by Hans Niemann, knight c5, and now queen f1, only move for Levon. Not a very difficult one because Yeah, he he will wants to find it. get his queen close to the king and also to promote the h pawn. It's possible that even Played. Levon can win this. भाई played. By two queens incoming. a6, gh3, a7, h2, 8 queen, h1 queen. Two queens incoming. Oh, we could have four queens on the board. Let's go. I win. And it's a draw. It's still a draw. Wow. Yeah. But I would not want to be white there. I would want to be black there because your white's king looks a bit more unsafe to me. Yeah, because you have a bunch of checks because my queens are connected. But white gets the first check, no? Queen g8 check. So you never know. Rook g7. अच्छा कुछ repetition है तो then it's a different story. हाँ, queen e8 check and you have a draw, I think, at least. Tiku, which is the greatest game you played against? I think over the board it was against some 2000 player. I think it was crazy. वो कभी मैंने डाली हुई अपने चैनल पे, but yeah, but I think कोई कन्फोरिस था strong ना आपने GM. अपने लूकस को हराया था. हाँ, that was the biggest win, I think. But in terms of pure game, I think that was against some 2000. I love that game. But yeah, लूकस बेचारा उससे मिले हम बेचारे को उसने मेमोरी ब्लॉक कर दी थी भाई वो अपनी. Okay, a minute for Hans, 39 seconds for Levon. Calculating whether should we get 4 queens on the board or not. Chat, आज तक कभी 4 queens देखी है आपने बोर्ड पे? Or is this the first time you are seeing something like this? और किसी ने बोला क्वार्टर फाइनल्स में भाई वो तो क्वार्टर फाइनल्स था ना, ये क्वार्टर फाइनल्स नहीं था भाई.
अच्छा, एक्चुअली क्वार्टर फाइनल्स ही है। क्वार्टर फाइनल ही है भाई। क्वार्टर फाइनल। अरे भाई, क्वार्टर फाइनल्स कर्स फॉर अर्जुन, बट ही डिड विन दैट ऑन मैच अगेंस्ट विशी in Jerusalem just now. उसके Bishop लिए e3, क्वार्टर by the फाइनल way, था ही नहीं ना mistake by भाई। Hans. देयर वाज नो क्वार्टर फाइनल इन uh, द टूर्नामेंट, देयर वाज डायरेक्टली सेमीफाइनल, तो क्वार्टर फाइनल होना ही नहीं चाहिए, तभी अर्जुन जीतता है। hmm, By the way, Bishop 3 mistake, so just taking back gives Levon an edge now. Very interesting. yeah, blunder by Hans. Levon can Hmm. win this now with knight c4. By the way, Magnus completely winning, about to end. Can we switch that game? I think it's gonna be over in about a few. Rook f2 आ रहा है. पर ये मर Magnus गया ना रुके Carlsen. हुए. Yeah, I think Fab is gonna resign, and Magnus Carlsen will come back with a bang. Picks up the bishop. भाई, imagine he goes rook b2 or something and then it's a stalemate. Oh, no chance. Yeah. Okay, then again, like I will not take the rook. I will play check and continue the Like game. imagine he goes king g6. King g6 must be a draw. Ah, he corrects his mistake. Yeah, he corrects his mistake. See, अगर वो king g6 एक साल पहले खेलते था तो stalemate हो जाती. Damn. Now Rook G1 is mate, yeah? No defense. No, no defense. Sadly. नहीं Mate नहीं मेट है, थोड़ी king है, h2 है चूज मेरे कर है पास, भाई। but okay, मैं पता नहीं like. क्या देख रहा हूँ भाई। बट इवन आई नहीं एम नहीं, बट हेलुसिनेटिंग फिर नाउ। भी लाइक इट्स विनिंग, लाइक नाइट जी1 नाइट, इस नाइट को निकालना है बस यहाँ से, एंड वो निकलते ही यूर फाइन. हाँ. Okay, I mean he has to resign now, Fabi. Yeah, he can't be thinking of playing this game against Magnus. Yeah, that Would would be you play this insane. against Magnus, Sahaj? This position? As white as black, I mean, will you continue playing as white or would you resign? I would resign, of course. Because there is knight G1, knight F3. I mean, that's the simple solution, right? So Yeah, I'm knight not के sure. निकलते ही, I mean, you can resign earlier on also. Like there's not much to play for here, sadly. I'm not sure why Fabi is still playing. Knight G1, like, just feels very simple. Maybe I won't keep the king on f5 though, because then h5 could be hanging, but still feels logical. Rook d2. Was mm-hmm. He And wants to block the now, check, yeah? The rook potentially. कल को rook काम आ सकता है check block करने के. yeah, Lucina. हाँ, sideways Lucina, Lucina yeah? ideas. Hmm. By the way, Levon and Hans also in a completely dead drawn position, so we might get two tie breaks. Oh wow. So कहाँ से वो 4 queen होने वाली थी, लास्ट में draw हो गया भाई. Chess really is a draw भाई. मतलब disappointing. ऐसा तो नहीं है, मतलब हो जाता है कभी कभी, बट या यहाँ पे आई हाँ, थिंक ज्यादा but रिजल्ट्स मिल रहे हैं ड्रॉ से. हाँ, freestyle में I think it's Magnus Carlsen wins and इसके साथ ही जाती है गेम टाई ब्रेक्स में. So let's jump to the game of Yakubu Sindarov versus Param Maksudlu, which is also about to end. I think Sindarov cruises through with a 2-0 win against Parham, who is going to lose his, what, ninth game in a row now? नाइन्थ. यस, नाइन्थ गेम इन अ रो. Damn. भाई वो फ्री स्टाइल देखेगा ही नहीं इसके बाद, लाइक. Wow, that's really hard to लाइक handle actually. Now, I guess everything is winning. F4 is winning with Rook F7, Rook F5 to come. या आई थिंक कंप्लीटली विनिंग. एंड मीनवाइल लेवॉन एंड हांस में रुक नाइट वर्सेस रुक आ सकता है, साहिल भाई. आपकी फेवरेट एंड गेम. भाई आई थिंक मेरे को डिनर तैयार है साज भाई. डिनर तैयार होने वाला है मेरा, मुझे लग रहा है. By the way, they have drawn. So Hans and Aronian luckily agree to a draw. That goes to tiebreaks. And now we are looking at the final game that is between Yakovic Sindarov and Parham Maksudlu. Luckily, tiebreaks start एंड आई थिंक instantly. So सिंडर chat, ऑफ. जैसी game खत्म होगी, tiebreaks will या start, I guess, after a few minutes, right? या 8:30 it's supposed to begin, so hopefully I बढ़िया. think there won't be any delay. So Yes, I still think we'll no have two moves. games more or less, 10 plus 5K. Come on, come on, come और on. वही जो कल वाला सीन H4. था I mean, you कि have to रुक resign now. f7 अटैकिंग. You have to resign now, I feel. यार आप टिल्ट भी कितना कर रहे हो यहाँ पे यार. You can feel for Parham. Yeah. Yeah, you definitely feel for Parham here.
This is not ideal situation to be in. ये सेम कोट आई थिंक विदित का था ना, रेड वाला, लास्ट टाइम. I think it was red. I remember when he lost to Magnus, he was wearing a red coat. So yeah, you're probably right there. Okay, rook f5, king g7. I guess I can just pick up the h pawn. Maybe that should be winning. But maybe I will also play तुम rook g5 g5 ही because खेल I दो. corrected. Yeah, f5, connected pass. f5 6. Connected pass pawns is just easier. Tiebreak format is I think 10 plus 5, same as yesterday. Or maybe it could be lower as well. But stay tuned, chat. Well, I think Hmm. we'll get to know in just about a few minutes. Vidit was brown. नहीं Vidit was red. I think red कपड़े थे उसके. I also remember red. अच्छा नहीं, brown भी हो सकता है. I'm not sure actually. Okay, c4 he plays. f5, f6 check. Yeah, simple. Yeah, just सोचना ही नहीं है. f5 rook bishop d4 though. Then f5 bishop d4, rook g4, rook takes c4. दिखा देता हूँ. bishop d4, rook yeah. g4 and you just take this. इससे डरने की Yeah, जरूरत नहीं है. c2 के आते ही king d2 है मेरे पास. yeah, yeah, yeah. Rook Okay, he just e5 goes rook played e5, the simpler. directly. Now f5 is Very incoming, simple. so you have to take now, right? That means you lose the pawn. Hmm. Yeah, Okay, so that this is should over. be end for Parham as well. वाइफ रिवील भाई, अर्जुन हार ही गया है, जब जीतेगा तब करेंगे भाई, आज नहीं होगा अब. आज हारना नहीं था अभी ये क्या है भाई. भाई? आज विन करने के सबसे ज्यादा आरओआई मिलता है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू विन टुडे एंड you lose all the other days, you still finish at least fifth. You could lose today and win all the other games, Hmm, you still finish like sorry fourth, and you lose today, win all fifth. the games, you finish fifth. So आज जीतना बहुत जरूरी था actually. Hmm. And rook c4 also hanging. क्या king f3 खेल दो तो फिर rook c4 नेक्स्ट मूव में मार देना, ताकि king g4 भी ना है उसके पास. I think he wants king g4 maybe, but Played. yeah, I think time to resign now. Yeah, I think this is brutal for Parham. Goes c3, rook c4, rooks behind pass pawns. He's about to lose Yeah, his pawn I on think c3 as well, and there he it will resign is. now. He will resign now, I think. Yep, resigns. And Sindarov goes to the winners bracket with a 2-0 wins. आज भाई मतलब सिंदारोव का मतलब ये पिछले कुछ 2 महीने से क्या ही खेल रहा है भाई. वर्ल्ड कप जीतने के बाद से इट्स फील्स लाइक एवरीथिंग इज गोइंग हिज वे. Yeah, definitely. I think he's proven to himself, and I think वो confidence boost भी मिला, and now he's proving himself yet again amongst the best players in the world. Defeated Magnus as well yesterday. Today also a 2-0 victory. He's on a roll. He is on a roll and I think तो Seva, साहिल do you भाई, know कि हाँ मुझे आप एक 2 मिनट का ब्रेक दो. I'll just be right back. ठीक है, बोर्ड ये हाँ छोड़ दूँ. हाँ हाँ. Meanwhile, do we know कि कितनी देर में चालू होगा? We can see Sindarov there enjoying his win. That's I think भाई मस्त जगह है यार freestyle का. I think they host it in amazing places and get everybody hyped up. इतना budget होता है. They spend a lot of money, make the event exciting. It's so much fun to watch. Semi-final losers will also come in losers bracket. I mean, yes, no, actually no. I think because दो पार्ट में डिवाइड हो गया and now जो upper bracket है they can at worst finish fourth and जो नीचे वाले हैं they can at best finish fifth. So I don't think they will interchange. Arjun should stop playing and work on how to handle finish on games. He had enough time and he got defensive and made a huge blunder. I think also freestyle में it's sometimes easier to make mistakes, right? Because like कुछ भी हो सकता है. You're not used to. It's not a traditional finishing off of games. Like a bishop s3 idea is very rare. You might not see it in the structure in a normal chess game, but freestyle में कहीं से ही move आती है. आपने वो pattern पहले देखा नहीं होता. Otherwise, you would never miss such a move. So I think yeah, it's tough. Meanwhile,
कुर्सियां लगी हुई हैं भाई। ये कौन बैठा है? हैंड्स है क्या? वो हैंड्स पहले से बैठा हुआ है भाई, ही सिटिंग एट द बोर्ड रिलैक्सिंग, एंड द आर्बिटर शोज अप, इज सेटिंग अप द क्लॉक। हैंड्स जी बिल्कुल मस्त पोज में, गोइंग ओवर द गेम इन हिज माइंड, कहाँ पे गलती करी। आर्बिटर कह रहा है भाई कुछ खा लो थोड़ा सा, बाद में गर्म ठंडा हो जाएगा खाना। नहीं नहीं भाई यार, खाने की स्मेल अच्छी नहीं लग रही मुझे, नहीं 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 खाना, नहीं खाना है, भूख ही नहीं है। वियना तो फिर तो सहाज का नाइटमेयर है भाई। सहाज के बहुत सारे नाइटमेयर है, मैं क्या बताऊं तुम्हें यार, इतने नाइटमेयर सहाज भाई के। ओके चैट, आई थिंक द टाई ब्रेक्स विल स्टार्ट होपफुली सून। सो भाई डू वी नो कितने बजे टाई ब्रेक्स चालू होंगे? इट्स नॉट 10+5 एक्चुअली, 8:30 yeah? It's 5+2 actually. I just saw. So it's not really 10+5. That's even amazing. क्योंकि जैसा fast time control रहेगा। भाई tie break is 5+2, not really 10+5. Oh, amazing. 5+2. That's blitz basically in freestyle. That's gonna be insane. Do we have, I mean, it should be lift off soon, no? Yeah, I'm hoping so. I think Magnus Carlsen का tie break है, and we have Hans Niemann का tie break. So maybe we can have both the boards, both the cameras वाला scene once the games begin, and we can follow them in action. Yeah, so Magnus, I think, will have the momentum now. I mean, winning the last game and being Magnus, I think, gives you momentum. टिकू भाई मस्त हो ना? मस्त हूँ भाई, आप बताओ। भाई अपनी लव स्टोरी बताओ Crazy. भाई। दिस इज नॉट अ लव स्टोरी स्ट्रीम, वो कभी और बताएंगे भाई। वो भी बताई थी उन्होंने वर्ल्ड कप के टाइम पे, अगर आपने देखा हो तो। साथ में जब आप चले गए थे रिसेप्शन के बाद, उसके बाद गेम खेली थी हमने एक्चुअली। Really? हाँ, वी प्लेड द गेम आफ्टर सम टाइम दो, एंड देन दिव्या कमेंटेटेड ऑन दैट गेम। आई वुडंट अच्छा, कॉल दैट हाँ, कमेंट्री दो। आई मीन नॉट कमेंट्री, आई मीन लेट्स से कि शी जस्ट ब्लेटेंटली सपोर्टेड माय पार्ट। ओके बट आई मीन फेयर इनफ बट वो पर वो गेम खेली हमने भाई। सो जिस तरह से आपने कमेंट्री करी थी मेरी और वो केटी वाले मैच की। हाँ हाँ, सिमिलर विद PG-13 बट सिमिलर भाई, वेरी वेरी सिमिलर एक्चुअली। वैसी कमेंट्री थी। गेम भी कैसी थी तो भाई डालेंगे स्पैम वीडियो मत उसका। करो यार, वियन्ना। स्पैम मत करो भाई। वियन्ना तो सहज भाई का नाइटमेयर है, क्यों भाई? अच्छा, उसमें F4 आता है इसलिए। नहीं भाई, ओपनिंग में तो अटैक के लिए चलता है भाई गोल्डन पॉन, बट इट्स अ स्ट्रेटेजिक थिंग। Like बाय द Levon वे, fish attack is also like one of my favorite openings. That's also has F4 in it. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस स्टोरी, रियली आई हैव? आई डिडंट नो दिस, आई मुझे याद नहीं है। ओह वाओ। भाई आपको अभी बोला है कि आप ऐसे स्पैम मत करो, आप फिर से स्पैम कर रहे हो। व्हाई स्पैमिंग, स्टॉप इट। हम्म। स्टॉप इट भाई, स्टॉप इट भाई, मत करो स्पैम भाई। ऐसा कह रहे हैं समांता जी, तो सुननी चाहिए उनकी। साथ में क्या करे भाई, हैंड्स की तरह हम भी ऐसी वेट कर रहे हैं भाई। आई एम गोना हैंड्स का पोज ही कॉपी करता हूँ भाई यार मैं। हम्म। तो हैंड्स का स्टेयर But how कॉपी नहीं much कर time do पाऊंगा। we have until how much time do we have until liftoff? Do we know? सो 8:30 इज द स्केड्यूल टाइम। तो आई थिंक वो 10 मिनट का ब्रेक होता है फ्रॉम द लास्ट गेम। सो आई एम गोना गेस कि 2-3 मिनट लगेंगे, एंड द फैक्ट दैट हैंस इज स्टिल सिटिंग देयर मींस कि द गेम शुड स्टार्ट सून या otherwise he would take a break. And there we Yeah. see an interview being conducted with Vincent Keimer, who just defeated Arjun. All smiles there भाई। क्या व्यू है भाई यार, Hmm. मतलब मजा आ रहा है भाई देख के यार। ओह, Crazy, crazy, crazy place actually. What a view. But new users don't know story. Story भी पता लग जाएगी आपको भाई, लग जाएगी। Sajay, I'll be back in 2 minutes, yeah? I think chat is, yeah, sure. I think chat is more interested in story, सही में। मी टू भाई, मी टू। पता है मेरे को, बट यार वो आराम से करेंगे ना वो, तो लेट हिम डू इट। एचएम क्या होता है भाई? क्या डार्क जोक्स मारे भाई? What's the result of Arjun versus Vincent? Vincent actually won. Arjun was playing so well until a certain point, then he made a blunder, and then Vincent just did not make a mistake. He played perfectly after that and took the win.
That means Vincent will be in the winners bracket and Arjun is going to be in the losers bracket. अब Arjun technically जीत नहीं सकता tournament, but he can fight for between 5th and 8th places. That's the story. And there we see Vincent having an interview with Fiona, I believe that is. बड़ा खुश है Vincent. ये queen आगे क्यों पड़ी हुई है? Queen ही है ना? It's just on A4 or something. Must be some analysis. और बताओ chat. What's going on? अर्जुन का थोड़ा sad हो गया यार. I feel. फर्स्ट डे हैज हार्डली एनी वैल्यू. डे टू अच्छा जाना चाहिए. आई डोंट लाइक द फॉर्मेट यार. आई थिंक फर्स्ट डे के भी हैं. आई थिंक बेनिफिट्स तो हैं. लाइक इमेजिन सिंडारोव. आई मीन सिंडारोव सॉ के कौन फॉर्म में कौन फॉर्म में नहीं है. देन ही चोज परहम. लाइक ही डिड हैव अ बेनिफिट ऑफ दैट, नो, इन दैट सेंस. तेज भाई हैड आई हैव द सेम एस्ट्रोनॉट वाली लाइट. समझा नहीं मैं भाई. कौन सी? अच्छा वो मैं नहीं हूँ भाई. साहिल भाई हो. अच्छा साहिल भाई. ओह क्रेजी. एक्चुअली मैंने भी देखी हुई है बट आई जस्ट डिडंट गेट इट. साहिल भाई का बैकग्राउंड कितना सही है ना एक्चुअली. It's really cool. I think he changed his setup a lot. मैं भी जाऊंगा ना बुडापेस्ट चैट तो I'll also change my setup a bit. मेरे को अपनी जाके जैसे ही मैं वापस जाऊंगा I'll change a few things. Hopefully before World Rapid and Blitz, but difficult होगा, but we'll see. अरे यार वेलकम सिद्धि विनायक भाई. Can you suggest opening which opening I should learn in chess? अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक स्पेनिश खेल सकते हो, इटालियन खेल सकते हो, स्कॉच खेल सकते हो. Those are quite easy. I think Italian is probably the simplest to learn with the white pieces. अगर आपको E4 खेलना है, D4 खेलना है तो आप लंडन सिस्टम खेल सकते हो. वो भी बहुत सिंपल है. But in one game anyone can win. Uh, PK Parham losing 7 games and winning today would put him in winners bracket. Yes, but he didn't, right? He didn't. At least you get the choice of choosing your opponent. I mean, अब सोचो कि आपको मैग्नस नहीं लगा फॉर एग्जाम्पल. बट इन हाइंडसाइट यू आर राइट. सेकेंड डे में वो जो क्वालिफिकेशंस रहती हैं दैट मैटर्स मोर. डे टू इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट देन डे वन इन दैट सेंस. कहते तो हर फील्ड में ऐसे होता है ना वैसे तो. इंडिगो का फ्लाइट मिला क्या? हाँ भाई मिल गया. आ गया मैं वापस दिल्ली. इट वॉज टफ बट 6 घंटे वेट करना पड़ा एयरपोर्ट पे. बट इट्स फाइन. वी आर गुड. आई एम होम. वेरी हैप्पी. भाई टिक्कू भाई से पूछो ये क्योंकि अब तो शादी हो गई है ना भाई. अब तो डार्क और गंदे जो सोना बंद करोगे. नहीं भाई 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 भाई. कहाँ डार्क जोक्स? कौन से गंदे जोक्स मारे हमने? हाउ शुड आई स्टार्ट माई चेस करियर? बाय डूइंग पजल रश. बाय देखो सीरियसली बोल रहा हूँ टैक्टिक्स करो. लाइक दैट्स योर बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड योर लेवल, योर टैलेंट. टैक्टिक्स करना शुरू करो. पजल्स आर अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट. भाई अपडेट कि कब चालू कर रहे हैं? नो अपडेट सो फार मेरे भाई. भाई शादी के बाद सो टायर्ड यार. मतलब अभी मैं उस कुर्सी से उठा ना आई ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड भाई. इंडियन वेडिंग्स कुछ भी बोल दो भाई, बट आर टायरिंग एज हेल. यार अब ऐसे अब आप ना वो कर रहे हो. लोगों को एंटाइस कर रहे हो और आप कुछ स्टोरी भी नहीं बता रहे हो. एंटाइस नहीं भाई. एंटाइस. आई विश भाई, आई हाँ. विश आई वाज एंटाइस. Oh man. Can you guys make my wishes come true? Bhai, I didn't know कि we had these powers. One of you would make each other's wishes come true, bhai. I think. Have you seen Summer interview on Chessbase after Pog Champs? I have not seen that, yeah. I would love to check it out. But I did see clips of it on different channels. So yeah, glad to see him win. यार वो काउच मुझे ऐसे बुलावा दे रहा है साहब भाई कि वहां आके बस तशरीफ रख दो भाई. इतना मन कर रहा है ना. हाँ इतना भी भाई सुंदर. लुक्स अमेजिंग. मेरे को ये और नहीं समझ सामने आ रहा कि ओशन है अभी भाई. अभी तक इन्होंने पोजीशन भी डिसाइड नहीं करी है बेसिकली, क्योंकि क्लासिकल पोजीशन है बोर्ड पे. Okay, that is weird. तो अभी तक कुछ डिसाइड भी नहीं हुआ वहाँ पे. तो आई थिंक इट्स माइट बी अ Hmm. बिट लॉन्गर देन वी थॉट, बिकॉज इट्स 8 minutes मोर देन व्हाट दे सेड. Hmm. We could take a 5 minute break, or we could chill, we could gossip by, और भी बहुत सारे ऐसे gossips आज भाई. अप टू यू. आपको शादी का कुछ बताना है तो वी कैन स्टे, नहीं तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं.
शादी का क्या बता सकता हूँ मैं, ऐसा जो यहाँ बता सकता हूँ मैं। बताओ यार, नेम रिवील करो कुछ, कब से कह रहा हूँ। नेम रिवील यार, ऐसे लॉस के बाद नेम रिवील लाइक इट्स जस्ट यार फील नहीं वो आएगा भाई। वहां लॉस हुआ, बट आपका तो विन हुआ है ना भाई। हाँ बट लाइक इट डजंट फील लाइक यू नो लाइक अप्रोप्रिएट, ऐसे हारने के बाद भाई अच्छा भाई ये चलो शादी हो गई मेरी भाई ये लो, ऐसे फील नहीं आती भाई। अर्जुन कुछ क्रशिंग विक्ट्री करेगा ना, धोएगा मैग्नस को, तो भाई कुछ फील है मतलब, यू नो, देन यू रिवील इट। साहिल लेट्स टेक अ सहाज ब्रेक देन। सैंटा। ठीक है, सो लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक चैट एंड बी बैक इन द अदर साइड। एंड समय भाई कुछ भी अपडेट होगा तो प्लीज ग्रुप में डाल देना। We'll be back, see you soon, मैग्नस कार्लसन in action.
And we are back, and it is Magnus Carlsen versus Fabiano Caruana by world number 1 versus world number 3 classical. But ये rivalry is one for the ages. Welcome back, Saj भाई. क्या लग रहा है भाई? Magnus with that comeback win. फिर से black pieces. Can he seal the deal in the tie breaks now? I think Magnus has found his momentum. So my money is on Magnus for sure. And there is another tiebreak happening between Levon Aronian and Hans Niemann. Then let's not forget, Levon actually chose Hans as his rival, as his opponent. And white plays g4. And by the way, only move there was knight c6. Yeah, otherwise you're just completely worse. And he goes knight c6, knight c3, and we have liftoff. And now, परफेक्ट yeah, टाइम we पे can. एकदम हम वापस आए. बिल्कुल. एंड नाउ आई थिंक G4 के बाद क्वीन खुल चुकी है. क्वाइट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बाय कारुआना एंड हैंस. एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक अभी प्लेयर्स भी कम हैं, तो ओपिनियन भी कम है. व्हाइल एनालाइजिंग द पोजीशन दे प्रॉब्ली ओनली हैड टू प्लेयर्स टू एनालाइज, तो कहना कि गलती होने के चांसेस और बढ़ेंगे. And such way, I don't know, like this looks a bit more normal, or is it just my interpretation of it? Because knight moves queenside castles, somehow this feels bishop c2 more natural to me. हाँ, बट क्वीन भी तो h1 पे है ना भाई. That's true. That That's queen. true. Yeah, by Yeah, the way, yeah. e4 g6, Aronian making a slight mistake in the original position itself, and b2 पे attacked it. So let's not forget, play knight c3 or something and defend. Yeah, Karuna playing it so solidly. Yeah, knight c3, knight b3. He could next castle, but again, maybe a5, a4 at some point becomes a plan for black, similar to what we have seen so far. h4, h5, f5 खेल दिया भाई Magnus ने. Wow, the golden pawn has been touched. I think this is Sh- fine. In this case, yeah, it's fine. and now you have to play f4 as white. Apparently, you have to stop that pawn. Um, that's somehow crucial in this position to play pawn to f4 and allow, ताकि f4 के बाद ही आपके दोनों बिशप्स खुले रहेंगे. या if you put the bishop on g2, bishop on g1, अगर f3 खेलोगे तो bishop g2 का लग गया, f2 पे ये blocked है. So f4 is an important move here apparently. F4 is very nice. Only move actually in the position that keeps things balanced. He goes knight Ooh. c5, mate in one ka threat. Can we show why the knight b7 was mate? I think similar mate. Yeah. I think we saw Andrea Botes fall into against Ian Nepomniachtchi, and of course Magnus will not fall for it. f4 played. Yeah, Magnus already having a slight advantage in the position. I think long castle is on the card. I think you can technically do it and it wouldn't be a bad move. The queen is also pretty active now because it's controlling the longest diagonal on the board. So long castle, and another move that I see that is really interesting to me is e5, breaking open the position. Wow, e5 is quite interesting actually. Opening up the bishops, the center completely. So Magnus Carlsen on the right, Fabi on the left, gave Magnus a subtle stare there, just kind of evaluating his body language. And this is 5+2, so the time is going to run out very quickly already. 3.5 minutes, less than 3.5 minutes for Magnus. If he can win this with the black pieces, he would be a clear favorite. And every game we have a new position, so it's very hard to carry forward your knowledge. Do you think the top players have kind of analyzed some of the positions, Sahaj, or do you think they kind of just analyze their games post play? I think they are analyzing on their own because we can see both positions are completely different. So I don't think they collectively analyzed. I think और analyze करने का time भी कितना मिलेगा 5-10 minutes max. I mean, what can you do in that time, anyways? I think this is just pure raw chess and blitz भी है तो भाई it just E5. only let's go भाई. Magnus फॉर्म में आ गया भाई. भाई मैच की शर्ट पे वो चेसकॉम लोगों क्या चमक रहा है भाई फिलहाल के लिए. एंड E5 खेल दिया उन्होंने. बेस्ट मूव. टेक. कुछ भी और खेलोगे तो व्हाइट इज इन ह्यूज ट्रबल ऑलरेडी. E5, okay. F takes E5 taken. I think good move. Queen takes E5. Queen is in the center now. Maybe you can go. साज में Can बाय द I वे, go long castle? Yeah. you have to at some point, I think, right? Because otherwise your king is just stuck. Yeah, rooks are not connected. But also black's bishops pointed in the right direction. Yeah, already at one is attacking a2. So I'm not sure if white is going to be very happy putting his king even on the queen side. Yeah, for sure not.
I'm not even sure what you play in this position. Apparently, bishop f2 is the move. Looks a bit dangerous, but why can't I go long castle in this position? Long castle खेलते ही knight c4 है मेरे पास, and there's a lot of attack incoming. But yeah, knight long castle is a decent move. Yeah, Fabi, less than 3 minutes now for both players. But there's Ajbhai in chat. So Prague has qualified to the candidates, right? So 8 players. I think Hikaru will be the eighth one. Um, what do you make of his chances? I think, of course, we can. I mentioned he has second best chances. Fabi has the best chances. But do you think genuinely we're gonna have like Prague win in the candidates, or do you think the odds are too low and likely it's gonna be a India Lokesh versus non-Indian World Championship? What's your take? I think India versus non-Indian is more likely, just based on pure numbers, because this Fabi and Hikaru. I think for me, those two players are definitely the favorites. Fabi being the clear favorite for me. And yeah, Prag ke chances, he does have chances, but I wouldn't put him as like number one on my list. What Hmm. about you? Yeah, I think this is not so clear to me as well because 2024 chat, if you look at the events, like major events, Indians won everything. There was like some new crazy happening every couple of months. Like कोई tournament था ही नहीं जो छोड़ा हमने साज भाई, right? कुछ भी नहीं छोड़ा Hmm. यार. मैं बोलते ना, लिटरली वुमेन्स और ओपन दोनों में जीत रहे थे हम लोग लिटरली. देयर वाज नो नथिंग लेफ्ट फॉर द अदर प्लेयर्स. And 2025, like apart from, let's say, I don't know, what is the highlight that stands out to you, Saj, by in 2025 in terms of accomplishments? 2025. Yeah, I think Prag winning Tata Steel was very big. yeah, true, true. That I think was huge because I think that final to date is my favorite like day to commentate. That day, like I remember just that night end game was so cool. But Yeah, that's the it highlight. But was yeah, not a FIDE event. 2025 has not been Like, our year. yeah, I think it was not a FIDE event also, right? It's not something part of the World Championship cycle or World Rapid Blitz or I don't know. Like this year, I think we've really like compared to 2024, let's say, like this was not our year, I think. So I think Yeah, 2026, hopefully, the even year will again be ours. And Olympiad जीतना है भाई, World Championship जीतना है भाई, Candidate जीतना है भाई, मतलब total World Chess Championship जीतना है. There's so much to win, yeah. Again, so hoping that Indian players kind of bring their A game again in 2026. this candidates is the hardest one because there's only one of them. I mean, I think in the women's, for sure, I would say that an Indian winning has the highest probability, just based on pure Which Indian numbers. though? Which Indian though, Saj bhai? Because we have, I यार think, मुश्किल है Humpy. ये बोलना, मुश्किल है ये बोलना, बट मुझे लगता है दिव्या हैज अ गुड चांस. Hmm. And Divya दिव्या हैज definitely अ has a गुड great चांस. chance. या Momentum uske saath hai. I think also depends like how much time Humpy ma'am managed to devote to that tournament. Of course, Vaishali, like because she also has a trump card, right? She has Prague also playing the बट candidate. So I उसका भी तो think है, that can. उसका भी तो है मैच. वो थोड़ी ना हेल्प करेगा उसको वहां पे. नहीं, मतलब आई like in मीन terms of कम ऑन. preparation, like they could be preparing together, right? In प्रिपरेशन terms of यस. some part of the practice might be common, and that's really great. Imagine you had Prague as a sparring partner, like for on a daily basis. Like imagine how much you would improve. Yeah, so I think I don't think anybody else would have that much help. By the way, switching back to Hans versus Levon, because Levon has 14 seconds on the clock and it is really, really dangerous for him. They already? 27 seconds, okay? Yeah. 5 मिनट ही तो थे. Wow, I think 5 plus Hans. 2, by the way, is the time control chart. I don't like this e5 square जो दे दिया है हमने. If the knight manages to sit there at some point तो बहुत tension होगा. And ये battery भी अच्छी है, queen की h8 पे, bishop की g7 पे. But white also has his own trump cards. Yeah, space है, बढ़िया है. So, Hmm. I would pick black here any single day. Like knight a c4 आने के बाद it looks super scary. Like you can see this idea of knight a c4, knight takes b2 and knight a4 check. अरे बाप Maybe रे. we can show that to the chat like king b1, knight c4, a3 खेला मैंने, knight b2 is just lost. King b2, knight a4 check and it's pinned. Bishop King b3? is looking here. Knight takes c3, yeah? Simple. Hmm. Queen, bishop Wow. और queen का combination है यहाँ पे, तो it's looking Hmm. very scary. But the problem is that Levon has very little time. He goes queen f3, and I think his point is knight a c4 के बाद ये knight defend कर लिया queen ने, so white can push b3.
Again, 17 Yeah, but then seconds. but knight then comes to e5, Sahaj, and again you attack the queen once more. So not an easy decision. F5 played, opening up the rook as well on the e file. Tactics galore. Oof, ooh, I'm very Yeah, scared about taking that. Rookie to भी कभी कुछ आ सकता है भाई. You never know. भाई mistake कर दिया Wait, Levon ने what? with g takes f5. He had to go knight a c4 instantly. Bishop f5 was a myth and king b8 was also a myth. And now b3 के बाद he is back and played. Levon in deep trouble. 7 भाई seconds. कुछ Come on. कुछ कुछ भी चल रहा है भाई. अब तो 2 ही सेकंड का इंक्रीमेंट है ना भाई, तो he has to make every single move super fast. Yeah. I think you have to be very careful now. एक knight passive है, so suddenly black का attack पानी में जाता हुआ. And also the queen and bishop opposite होते तो मजा आता. If the queen was on Hmm. g7, bishop on h8, suddenly you have some threats. This way, it's just not going to happen. Knight on a5 looking stupid as well. White के pieces, g4 coming in, defending the bishop. ये bishop भी d4 पे आके exchange off for the bishop on g7, for example. Also, a7 is soft. कल को knight c8, queen e3, queen a7 could be an idea. So, a knight on a5 has no squares, by the way. Let's keep that in mind. Or He d6. goes mistake and he goes c6 instantly. Another mistake. He got to go knight takes g6. Wow. Knight Why e4 chess played. is so hard, so hard. For these players, it is, I mean, to play freestyle. Bishop a1. Bishop a1 was there. Hi, Wow. queen b2 checkmate is incoming. He goes rook takes e4, queen takes e4. 5 सेकंड है But लेवॉन के पास. 11 but seconds for him. bishop By the way, a1, bishop also let's d4 now. भाई भाई वो दोनों का सीन लगा दो यार. दोनों का सीन लगा दो अगर पॉसिबल है तो, Let's बिकॉज go, let's दोनों go. बोर्ड पे बहुत कम टाइम है दोनों के पास. देयर वी हैव इट. वी कैन Oof, सी wow. both players. 1 second पे चाल चली हांस नीमन ने just now. a4, knight takes d6, queen d3. Oh, On the blunder. left side we Mistake, can mistake, see mistake. Oh, knight c5 knight tempo. c5, The queen queen. g6. Oh, queen g6. Bishop Bishop a1 play. Queen b2 checkmate. Oh, it's on so. the board. Oh my god, investment That's in a one. What? bishop d4 है. Bishop d4 है. बच गया. Queen takes d, rook takes Bhai, d4, queen chal h7. Wait. भाई It's again gone, yeah? It just feels like black is just better, yeah? Somehow. But भाई a5 is a nice कौन move. से गेम को कवर भाई करे भाई भगवान दोनों. जानते हैं कौन सी कमेंट्री कर रहे हैं हम लोग भाई. नाइट a6 b3. check में भी. Knight Oh, b3 knight, bro. queen Knight c7. d8 also hanging. He has to play rook c8. रुक को हटाओ Bhai, साइड पे. He both goes rook games e8. black is winning. Both games black is winning. Completely winning now. Wow. No, Blunder no, by he's back. He's hands. back. Why? No, blunder by Levon था भाई वो. Hans is kind of back again. भाई Queen c1 साहब played. चल क्या रहा One है यार. second. Look at the bottom how many blunders have been made. Oh, knight c4. Easy. Queen d5, queen c6, and Magnus has won And his game against Fabiano. wow. And Levon about to resign as well. And there it is. Levon wins. Sorry, Hans about to resign. Both black players have won. Sorry, chat. बहुत ही crazy हो रहा था ये. Because 5 भाई ये plus 2 क्या में था. सबके पास 5 सेकंड तक कम थे भाई. कुछ समझ ही नहीं आ रहा था भाई कहाँ पे कमेंटेट करें. But black has won both of their matches. Levon defeats Hans. Magnus defeats Fabi. And we are Oh. heading off to game 2. भाई we had no clue which game we were commentating on literally. इतना fast चल रहा था ये सब because such complicated positions. 5+2 I can't even imagine कि heart rate कितना होगा on players का उस time पे like 150 minimum if not more. And at the end Absolutely. Magnus won, yeah. I mean as usual. Yeah, Magnus takes it once again. And Aryan भाई बोल रहे टिक्कू FIS has lost at least 10 मैगी to राकेश भाई. भाई अगर आप स्ट्रीम देखते नहीं हो तो आप ऐसे बोल क्यों रहे हो. Rakesh actually lost like 12 Maggies to me. अगर आपको याद हो the match against Same and जो वो था वहां पे I won against him as far as I remember. But जब राकेश भाई आएंगे तो we can clarify it. That's what I remember at least. But yeah. I can see Abu there recording Magnus. Also Caruana there waiting. I think the game will start instantly, I'm guessing, right? Because okay, but they will have a new position reveal, right? Mike, A because new new position. position. And I think it's already there on the bottom right corner of the screen. We can see that's the new position. Is that the same position? Because No, Queen that's the H1 same पे one. वहां That's पे the भी same थी. one. Queen on H1, right? So I think we'll have the new position any moment. Yeah, sure. I'm switching the board. 1 second. There it is. ये a classical position है भाई. अभी तक decide नहीं हुआ है position. Thank you, Aditya bhai, for the wishes.
कुछ तो कह रहे हैं हमारे सर ऑन द कैमरा, बट हमें सुनाई नहीं दे रहा है। क्या क्या वेन्यू है भाई, आई लव दिस। Like usually if you're off site, you feel like ठीक है, I mean, but in this case, like, you generally feel like on site होना चाहिए था, but I mean really cool. या ऑन साइड आई Sa- थिंक इसमें यहाँ पर तो होना चाहिए था भाई, मजा आता। Saja, ये by the कैसा way, एंगल है we भाई? never got to discuss it, but how was your experience at the World Cup? Because we never really had a stream after Goa अरे, together. like I liked it भाई. I think like I okay all the मतलब सब कुछ बढ़िया था मेरे लिए, but I think the most important thing was that the people that I get to work with, like you, there's Rakesh, there's other people as well. Um, like I got to know people personally, like जिनके साथ आप काम Hmm. करते हो, and that I think was really really nice for me as a commentator. That's what Hmm. I appreciated the most, क्योंकि आप इतना टाइम किसी साथ स्पेंड करते हो, then you kind of understand them in a better way, and then you can also have better compatibility like when you're commentating as well. So I think that's the one very major point for me. That's why I really Hmm. liked it. Plus यार कितने सारे, just the only thing was कि अर्जुन का वो नहीं हुआ, वो जो क्वार्टर फाइनल्स में हारा, that was like the only sad thing. But overall I think it was a great event. A lot of ups and downs, but रुक ब्लंडर कर दिया ऐसे पेंको ने. What else can you expect? How was yours? I think it was decent. I think results kind of really didn't go our way. बाकी आपके उस पे कोई बेडबग्स नहीं मिले भाई? मैंने सुना है कुछ लोग कह रहे थे कि बेडबग्स थे वहां पे। भाई मेरे को पता है एक्चुअली किसने कहा था, जस्ट सो यू नो. अच्छा, आई गॉट टू नो फ्रॉम समवन, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको. बट अपेरेंटली इट्स मेरे मेरे को तो कहीं नहीं मिले भाई. मेरे को तो कुछ हाँ, नहीं मेरे मिला को भी ऐसा. कहीं नहीं मिले भाई। और अगर होते भी तो मैं दोस्त मिलता हूँ, बट ओके एनीवेज। इट्स क्वाइट हार्ड टू प्ले अ ब्रिलियंट मूव इन फ्रीस्टाइल ब्रो, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। वी सॉ मल्टीपल, लाइक मैग्नस प्लेड 93, दैट वाज अ नाइस टैक्टिक जस्ट इन द, आई थिंक द previous राउंड। सो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल टू प्ले ब्रिलियंट मूव्स, maybe not in the या opening as much। या फॉर श्योर. मैग्नस बीस्ट, ऑफ कोर्स भाई, यही मैग्नस बीस्ट सुनते आ रहे हैं भाई। मैं कॉलेज में था भाई तब भी मैग्नस बीस्ट था, अब शादी हो गई तब भी मैग्नस बीस्ट है। मैग्नस बीस्ट ही नहीं बन रहा है भाई, रुक ही नहीं रहा है यार। By the way, would you क्रेजी like भाई. Sahaj? Okay, so there's a chance, let's say Magnus retires tomorrow, and then somebody from India dominates chess, but not to the level that Magnus did, but he is world number one. Or would you prefer a situation where India is not world number one, but they get to constantly get the chance to challenge Magnus for the world number one spot? Which world would you prefer living in? Let's say Mukesh is 2820, he's world number one, or Prague for that matter, or Arjun. And second world, they are not 2820. The max they reach is at 2800, but they still have Magnus playing whom they can potentially beat. Yeah, like potentially challenge his throne while he's still playing. Which one would you prefer? Neither. I would prefer a world where we have a new goat from India and who is constantly winning everything, just like Magnus level का dominance चाहिए. That's what I would prefer. And I think, for example, मेरे लिए अर्जुन हो सकता है वो player, because I think he is very explosive. Um, I think Arjun could be a player like that, and Gukesh, of course, is a player like that as well. I mean, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है. We don't know कि इनकी final strength क्या है. But yeah, that's the world that I would prefer. कि इन तीनों में I would prefer इन तीनों में से ये clear हो जाए कि best कौन है. Let's just put it अब like वो that. कैसे क्लियर होगा भाई? That's the only होगा way वो to clear. clear that is to kind of become the goat. Yeah, the only way you can differentiate No, 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 yourself no. I at think that. right now I think Gukesh has the upper edge because he's the world champion, right? Hmm. Like nobody else has that title. Like so he right now it's clear Gukesh has the upper edge, but Gukesh conveniently उतना ऊपर नहीं है सबके. But I would like to live in a world जहाँ पे एक player consistently number one पे है. And I think इन तीन में से एक होगा वो. Hmm. Very interesting. And for Gukesh will be playing the world championship next year. Um, yeah, I mean, I just want to see an Indian, become the world champion again. I don't want to see the title go away from us. Like it meant a lot to us when we actually did that. He's a household name. I literally saw an ad by some Asian Paints or something. Yeah, with Mukesh and Vishista did recently, like three, Amazing. 4 days back on Instagram. So like, ऐसे Wow. common ads चल रहे हैं भाई chess players के, like this never was the case earlier. So Yeah. yeah, world champion He's के a perks तो बहुत है. he's definitely the household name right now. That is for sure. Miss me yet, Saj. Bhai, I'm sorry, but I don't think I recognize you. आप कभी आए थे क्या चैट में?
एनीबडी ज्वाइनिंग इन भाई, आजकल वो आपका डिस्प्ले नेम के बदले वो यूजर नेम बताता है चैट में, सो यू माइट थिंक कि वी नो यू बट वी माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हु यू आर बिकॉज ऑफ द टाइटल। आपका टाइटल है यूजर डैश आर एम 537, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे 6 बजे आएगी, सो आई मीन इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड आई फ्रॉम दैट। एम नॉट इवन, आपका यूजर भी रैंडम लग रहा है भाई, ऐसे लग रहा है आपका ऑल्ट अकाउंट है। राकेश भाई रियल आईडी से आओ। आई डोंट नो कौन है बट या। Sahil by staying, choosing between staying single and having career like Magnus. Wait, what? It's like choosing crore rupees or 100 crore rupees. ये क्या था भाई? कल म्यूट किया था आपने सहज भाई, भाई मैंने नहीं किया था वो, मस्ट बी समवन एल्स। काफी सारे मॉड्स हैं चैट में, आपने कब कुछ किया होगा आपने फिर, देन आई एम नॉट Mukesh श्योर। retains the title. He'll be become. I don't think he'll be world number one still. I mean, you can retain the title because अब उसको एक ही मैच खेलना है. I think qualifying to play the world champion is much more difficult than just playing the world championship as the champion because आपको एक ही प्लेयर से खेलना है. You've done the hard work once. You don't have to do it again. एंड जो क्वालिफाई कर रहा है वो बंदा पहले कैंडिडेट्स में क्वालिफाई किया है भाई, 4-5 इवेंट खेल के, फिर वो कैंडिडेट्स में जीता है, फिर जाके आया है वो, तो आई थिंक he's on a tougher journey there. खाली उसको या हरा के फॉर आप श्योर। वर्ल्ड वन नहीं बन सकते। तो या आई जस्ट दैट आई थिंक, वुड यू एग्री विद मी कि इट वुड बी नाइस टू नो कि हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ दीस थ्री, क्योंकि आई ऑफ थिंक कोर्स भाई, when ऑफ when their कोर्स। when their career is like finished, like in the sense when they're 35 40, when they reach like when they've achieved everything, like 35 बट 40 के बाद, दैट तो then we will know। एट दैट पॉइंट तो वील नो व्हाट वी वांट टू नो इज लाइक अभी तभी अभी तो, पता लगना चाहिए। यही तो सस्पेंस है अभी, यही सस्पेंस मुझे जानना है, एंड आई थिंक वो जान के मैं खुश हूँ। लेकिन इनमें इन भाई तीन में स्ट्रॉन्गेस्ट को, क्योंकि तीनों के स्टाइल्स डिफरेंट है। मुकेश इज लाइक वेरी स्लो लॉन्ग गेम खेलता है, प्रग इज वेरी कंप्लीट आई थिंक, एंड अर्जुन इज chaotic, and I think they are the best at what they do, all of them. भाई But we don't know मैग्नस भी वो which सोच one is रहा the है, best. वो भी वो सोच रहा है भाई हु इज बेस्ट बिकॉज इतना डीप थॉट में है। इज लाइक भाई No. साज भाई ने बात तो पता ही कर दी, लेकिन कौन है भाई बेस्ट, है पता लगाना पड़ेगा। Crazy. Sahaj bhai, can you beat Sahil bhai with material odds? नहीं भाई, I really वी don't think so. we did that match by the way. We played a match in Goa, 10 minutes versus 1 minute. Okay, but in my defense, that was a phone clock. That was a phone Yeah, clock. yeah, yeah, So of course, अगर of आप course, of course. normal clock देते हो तो that's different. And also you were making illegal moves जब मेरे पास 1 सेकंड पड़ा हुआ है. अरे भाई वो But yeah, एक सेकंड I मेरे पास really भी don't 10। think I आई really थिंक don't think I would be able to beat him with material odds. Absolutely not. आई थिंक वो 10 वर्सेस 1 करना, आई थिंक इट्स इफ यू वांट टू प्ले अगेंस्ट समबडी हु इज मच वीकर और मच स्ट्रॉन्गर, ट्राई आउट दैट फॉर्मेट, 10 minutes versus 1 minute. इट्स सो मच फन बिकॉज जो 1 minute वाला है वो कॉन्स्टेंटली लाइक ही इज पैनिकिंग लाइक क्रेजी। भाई स्ट्रीम आइडिया मिल गया, एक काम करते हैं, आप और मैं स्ट्रीम करते हैं, 10+1 chess.com पे खेलते हैं, व्हाट डू यू से? डन। तो और कहाँ खेलेंगे भाई? करते हैं, करते 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 हैं भाई, मतलब डन। ओटीबी नहीं, हाँ मतलब हाँ मेरा हाँ, मतलब वो था। डन 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 डन, दैट वी कैन डू, दैट वी कैन डू। उसमें मेरा थोड़ा फायदा होगा, घड़ी दबाने में मेरा टाइम नहीं जाएगा। हाँ हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। By the way, the players at the board. Let's go. We have the position, yeah? I think we must. डोंट सी इट येट, I see the queen जस्ट on गोना। g1, the rook on h1. I see the bishop on f1. I see the king on c1, I think. या बट इट हैज नॉट बीन अपडेटेड ऑन माय एंड, मैं एक तो बार b1 रिफ्रेश is कर there. रहा हूँ समय भाई। Hmm. या आई डोंट थिंक Yeah, इट्स we have देयर। it. या नाउ वी We हैव इट। have it. एक ही पे है, हांस के बोर्ड पे नहीं आया अभी तक। हैंस कह रहा है भाई नॉर्मल चेस ही खेल लेते हैं यार, हटाओ परे यार ये फ्रीस्टाइल। Who is more likely to win Candidates 2026? भाई वही सोच रहे थे हम लोग। I think Fabi is our pick, that you know he's the one who could most likely do it. Um, but yeah, I mean, it's going to be tough. I think last time he was close, Hikaru was close, but I think Ukesh won. But Prag is the ideal candidate for me. I really want him to win. I know, like, India versus some non-Indian would be much more fun to watch, but I also want you to stay in India. Like, there's no risk for us if Prag versus Ukesh होगा। कोई हारता है तो इंडियन के पास ही जा रहा है। That's why I want to see that. टिको एंड सहज जी, भाई सहज ही बोल दो। व्हाट डू यू थिंक, देयर इज देयर समवन हु इज लाइक बॉबी फिशर इन टॉप 10 जीएम्स? नो, फॉर मी नो। लाइक बॉबी So what फिशर is that वाज लाइक, one? Huh. या
नहीं, ऐसा क्या फैक्टर है That जो किसी के पास नहीं है, जो फिशर के पास था? Fisher was ahead of his time, like 25 years. Magnus बोल सकते हो, okay, Magnus sure, but okay, I don't think we're considering Magnus in this equation, but Fisher was ahead of his time, like 20-25 years at least. वो कोई नहीं है अभी. सो इफ मान लो कोई जीएम कल को इलॉन मस्क की चिप डाल दे दिमाग में, देन ही कुड बी द नेक्स्ट फिशर, अगर वो इकलौता बंदा है उसने डाली है तो। भाई फिशर तो मतलब को वो मटेरियल लॉट्स दे के आ रहेगा वो उसके क्या पता बाद. फिश फिशर के ही दिमाग के वो दे दे भाई, उसकी गेम्स एनालाइज करके उसी का चिप डाल दे भाई फिशर का ही, सडनली स्टार्ट्स प्लेइंग लाइक फिशर भाई। भाई एक्चुअली आई एम क्यूरियस, पता है मेरे को किसी ने बोला कि अगर आप स्टॉकफिश के साथ एक रुक कम करके खेलते हो ना, स्टॉकफिश का रुक कम करके, फिर भी हराना उसको बहुत मुश्किल है. लाइक सो टेक्निकली इट्स वेरी डिफिकल्ट. so question, do you think it's easier to beat stockfish when it's a rook down or when it's like a knight or bishop down? इजियर ऑफ कोर्स रुक होगा ना, हाँ, बिकॉज रुक मेरे इज को अ लगा नाइट मेजर बिशप होगा, पीस. बिकॉज रुक तो गेम में आता नहीं ना भाई, लाइक इट कैन यूज ऑल द अदर पीसेस टू क्रिएट एन अटैक, बट अगर नाइट स्टॉकफिश ही के साथ नहीं है खेलो, आ तो जाएगा. आ जाएगा वो भी. स्टॉकफिश के साथ खेलो. आएगा वो भी. जैसे आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर आप चेस 960 की पोजीशन रखते हो एंड एक रुक डाउन है, आई थिंक if you play 10 games against Stockfish, 10-0 would be the score to Stock. And I'm saying the same या for myself. या आई थिंक या फ्रीस्टाइल में तो कोई चांस ही नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस। चार चालों में हार सकते हैं लिटरली। वैसे in all formats, don't you think classical wise killing How? chess, the whole theory BS? I don't think it's BS. I think it's also understanding, right, of the position. Like वो 25 मूव को समझने के बाद आगे मूव कैसे खेलते हैं वो भी समझ में आता है। So maybe you're partially correct कि theory बहुत ज़्यादा है, but I think also it gives you understanding of the future moves that will happen. बाकी साज भाई, what do you think? Yeah, I think more or less you're correct. पूछ रहा चैट में how about queen down? By queen down, I think you can for sure, क्योंकि queen down में मतलब then there is no resource for you to fight. Queen down में तो सब possible है. Like queen down में, like I'm not even sure I can beat my brother. My brother doesn't even play chess. Like okay, he's around, उसकी rating आ जाएगी अगर वो खेलेगा तो, but I'm not even sure I can beat him queen down. Bro, I But drew in against like in that, Awadh queen down भाई, that was हाँ, then भाई Awadh must साहब, never play chess, yeah. Because then queen down बहुत rare होता है. भाई साहब, that was disappointing. We can see Parham there. Oh, Parham, but Parham is still there. Yeah, interesting. I thought he might leave. Okay, players are ready. Let's go. Bye. Hands against Aronian and Magnus against Fabi. Okay, do we get a comeback in either of the games, Sahaj? Or do you think this is just over in both games? I think it's over in both games. Mhm. Easy answer. As a 1500 myself, I'm able to beat Stockfish at 2700 level or below, with Stockfish being queen down from the start. Yes, the problem is that Stockfish is 2700 level or below. Stockfish ka strength is like 3600 right now. Yeah. Like if you go to the CCRL rating list, मैं अभी आपके सामने चेक कर रहा हूँ. आप जस्ट गूगल पे टाइप करो CCRL रेटिंग्स, वहां पे आपको कंप्यूटर्स की रेटिंग बता देगा. आई एम जस्ट चेकिंग. स्टॉकफिश इज 3645. आपको पता है Wow. 2700 और 3600 में कितना फर्क है? लाइक दैट्स लाइक अनफैथमेबल. वो 3600 का प्लेयर लाइक क्वीन डाउन, ट्राई इट. इट यू, आई डोंट थिंक इट विल बी गुड. एंड वी हैव लिफ्ट ऑफ बाय द वे. E4 एंड F3 खेला मैग्नस ने, एंड ही वाज 96 93 सिमेट्रिकल पोजीशन सो फार. भाई अगर वो दोनों ही लगा दो तो आई थिंक वी कैन कवर बोथ गेम्स. इट वुड बी Yeah. इजियर. व्हाट डू यू से टिको भाई? Yeah. I think that makes sense. Also, I think. Oh, by the way, very similar, exactly same position, by the way, in almost both the games. Okay, now we deviate with knight b3, but knight e3 वैसे भी आएगा ही आएगा. So very similar, yeah. Yeah, for sure. Knight b3 and knight e3 both are logical moves. Fabi plays d6, and now knight b3 is what I would expect from Magnus. Apparently h4 was the best move c3. again. c3 के बाद Oh अब पता है wow. ब्लैक की बेस्ट मूव क्या है? h5 again. लाइक ये कुछ भी चल रहा है. Oh, इसको a5 चेस में. played, भाई. हाँ, a5 पे a4 only move by the way. Otherwise Magnus is worse, and the game continues. अरे बाप रे भाई, क्या है यार? I think you can just push one of the h pawns or the a pawns like without any stress. Like usually it's a good move, yeah, in most positions somehow. Maybe it's Yeah. because वो king ऐसे कोने में होता है ना opponent का, it's never in the center. So pawn push करना is like an attack towards the king, yeah. Maybe that's why the corner moves are always good.
maybe knight b6 played by the way, bishop c2. Magnus is bored. अब h5 खेलना by the way फाबी को. Like it's the best move in the position. Just putting it out there. By the way, knight b6 by Hans was a slight inaccuracy, and now looks like Levon has a decent advantage in the position. भाई But I there is already only one like move. Only one move. That's a4. what's Otherwise, it's equal. अरे Like बाप रे. a4 खेलना है उसको. And मतलब a4 कौन खेलेगा यहाँ पे भाई? Crazy. By the way, I love Magnus's position, yeah, against Fabi. I think Bishop F2 क्या बढ़िया position लग रही है. I've also controlled the center. D4 कभी ना कभी आएगा. Bishop putting pressure. Bishop B3 आके I can pin the knight if I want to. I love Magnus Carlsen's position. I think वो तो ये game at least draw तो करेंगे. Oh yeah, and by the way, Hans committing a huge error here with d6. The bar jumps. I think the problem is a5 and played by Levon Aronian, kicking the knight away. And once again, a6 is a huge threat. जैसे वो h pawn h6 पे पड़ता है वैसे a pawn अभी a6 पे बहुत बहुत डेंजरस हो सकता है. Why this is just sad, yeah. A6 के बाद all your high scores are weak. Bishop E2, Bishop B5, कभी Queen B. Like this is very tough, and both white players doing very well right now. Yep, Levon doesn't go for a6. He goes d4, breaking the center, and Oh, look at f6. that bar jump! It just shot up Blunder. like crazy in the Levon game. Yeah, that was almost a blunder. And after d5, Levon is basically winning. And the best part is D5 Carlsen gave me best move hai. So structurally just doing very very normal things. And now I mean look at the space white has in both the games. Like center अपने पास है, queen side अपने पास है. What does black have in return? Nothing. Yeah, I think both positions looking very promising for the white pieces. d5 खेलना है बस. Levon just पीछे. Levon can look at the other board and be like, okay, let's play d5, yeah. And played Wow. Knight knight C5. c5. Okay, I mean मार दे this इस knight is को. मार भी सकते हैं. मैं तो कह रहा हूँ नाइट D3 भी खेल सकते हैं. But okay, either works. नाइट सॉरी मैं दूसरी गेम देखा था भाई. आई वाज अगेन किस मार बोर्ड ये. पे कमेंट्री कर रहे हैं भाई. दोनों भाई जगह अभी तो सिमिलर रुको. ही. बहुत कंफ्यूजिंग अभी होगा जब दोनों का टाइम कम होगा. बाय द वे, knight e3 हाँ. played in Levon's game on the right side. This is just cruising for both players, Chad. I think very very likely as of now the four players going to the winners half will be Magnus, Aronian, Sindarov, and Vincent, and the losers half will be I think Caruana, Hans, Arjun, as well as Parham. Yeah, crazy. g6 played, by the way, by Hans, and c6 played by Fabiano. Both positions looking super difficult for black to handle. I guess in Fabi's position, there is more hope that you can always castle on the short side because he's not that far off. He can just move Hmm. his bishop away and just castle on the short side, and maybe he's safe. But Hans also do the same, no? या बट हांस को थोड़ा ज्यादा एफर्ट है. अभी बिशप भी हटाना है. को क्वीन रखोगे भी कहाँ पे? लाइक g7 पे तो उतनी बढ़िया भी नहीं लग रही वो. Good point. ही गोज h5 खेल दिया तो अब कैसे कासल करोगे? बिशप f8. वाओ. Bishop coming to h6, but I think you need the bishop on f8. वो c5 break जब आएगा, it's gonna be the end of the game, yeah, in some cases. Yeah, I think players are also, I think, playing a bit faster than their previous rounds because दोनों sides में इतना crazy time pressure था. Queen f7 played by Hans. Rook a3. Queen भाई f flashy moves incoming by Levon. by king b2, rook b3, rook a1, just keep bringing more pieces into that. Black has nothing to do here, to be honest. And I could be talking about either position. There's- हाँ, general commentary okay, I think we here. should play guess the board, yeah? We do the commentary and chat guesses कौन से board की बात कर रहे हैं. दोनों ही खराब है भाई. बहुत ही खराब है दोनों भाई मैं- पोजीशंस. स्ट्रक्चर भी एकदम सिमिलर ही लग रहा है. ओनली हाँ, डिफरेंस इज कि हांस ने a5 अलाउ कर दिया एंड फाबी ने a5 खुद खेल दिया. हाँ. And black is wondering where to put the knight. The knight doesn't have a good square. So which board I'm talking about, Sahaj bhai? भाई दोनों दोनों ही स्क्वायर दो. बोथ आर एक्यूरेट हियर. नाइट था कि नाइट्स था? सिंगुलर और I will प्लूरल? not repeat myself, bhai.
But maybe also like one knight could have. Oh, he castles king side, done by hands, and Yeah, now g4 G4. instantly. Crazy. I think Levon taking this one. Rook G1 incoming in the next move. G file open हो रही है. And किसी ने कहा था ना कि like you give, I think ताल के बारे में कहा था, you give him an open file and he will checkmate you. Something like that. And उसके coach ने कहा था, I think. yeah. By the way, Fabi also trying to create some counterplay, like the knight on c4, kind of hopping around the white king, but it just feels like too much. You So need the free queen pawn. there. Yeah. Magnus just got a free pawn as well. Yeah, this is not enough somehow. Bishop comes to d4. White's king is very safe, no issues whatsoever. And g5, Bishop h5 d4 के income. बाद g5 है. Yeah, bishop d4 g5 is very very He's, promising. Black plays he's d5. trying. Fabi looking for some counterplay. Bishop d3. What a move by Magnus. You can't even move that pawn anymore because your knight on c4 hangs. Beautiful. Okay, मैं तो कहता हूँ this just rook bishop a2. c4 मार ही दो, खत्म कर दो. I was thinking this rook a8 or queen e2. Yeah, it's just if you take on a4, I take on c4. You can't move the knight back because b5 hangs. ab5 is Hmm. a threat anyways. I mean, is this just collapse? It's just over, no? There's no move. I don't see a move for black. What's the move for black? Out of the two of them, I think maybe Hans has a better chance because Hans has Yeah. more than a minute than his opponent. That's it. That's my only reasoning. Yeah, and I don't see the clear blow Position. here. I already don't see a move for Caruana. Like, I just don't see what he can play in this position. Actually, Fabio also getting very low on time as well. Hans goes knight g6, trying to get that activity with knight f4. Takes के बाद वो bishop g7 का जो है वो खुल जाएगा. That's some hope in the position. भाई Meanwhile, खुल Fabi के still thinking a minute difference now. ओ भाई खुल के कुछ करना भी तो आना चाहिए ना भाई वो बिशप क्या ही करेगा खुल के भी नाइट b6 नाउ भाई पूरा कंट्रोल्स द डायगनल c8 खुला है स्क्वायर ना भाई. पूरा डायगनल खुला है ना भाई. f5 खेल के आप कुछ कर सकते हो. नाइट f4 बिशप f4 e4 के बाद क्या रहा था मैं. हम्म still feel like it's too मतलब optimistic now rook f8 okay Levon by the way under a minute I think Levon and Caruana both under a minute. Yeah, Hans I think has a good chance simply because of the time. Bishop a4, slight inaccuracy by Levon. Not sure why. Knight f4, play knight f4, get some activity. अच्छा अच्छा, Levon का idea is rook c1 and rook c7 मेरे भाई. Rook c1 and rook Oh. c7 is super Hmm. scary here. Yeah, that would really just seal the deal, I think. Bishop f6, by the way, oh, he's exchanging bishops. He wants the knight on the f4 square. He doesn't want you knight to trade off kar paye. But it takes time to play bishop h6, right? Now rook c7 is already a threat. Oh yes. Oh yes. So you take on d2, you play knight f4, but rook c7 can just be GG. By the Fabi way, under 30 seconds. We can see the red yeah. danger for Fabi. I think यहाँ पे 20 सेकेंड और रुक c8 played by Fabi bringing all the pieces of the queen side जो भी यहाँ पे free है सब आ जाओ we need reinforcements we need to attack Magnus Carlsen's king the toughest job in the world. Absolutely. And by the way, just to point out, Magnus can castle on the short side still. Lols. अगर Magnus चाहता है, if he does that, then all that effort on the queen side is just gone in just one move. Oh, he goes rook c1. He's doubling down. No castling. King remains on b1. Fabi 14 seconds. By the way, look at the pieces on the Levon game. Yeah, knight takes on h4. Suddenly, rook takes b7. Next, anything is happening. Like rook g2. Oh, Wait, blunder! wait. No, no, no. I Wait. mean, No, not really. it's not really a blunder. I'm just saying it's a Oh, time thing. Yeah, that's why I was favoring. why it's Queen c3 I was a don't mistake, by the know. way. This क्वीन is सी थ्री getting वॉज अ right down मिस्टेक. to क्या the टाइम की वजह से. और भाई yeah. टाई ब्रेक फिर से 5+3 होगा क्या, I या वॉर don't कम know होगा, actually. We'll figure या it फिर out as we आर्मागेडन भी हो go. सकता है. Yeah. By the way, check rook f7, bishop g6 check दे सकते हैं. Apparently, the best move is knight d7. Just get the knight there. Maybe 13 knight f8 check. Okay, no, he takes. बाय द वे By the फाबी way, अंडर 7 Fabi. seconds. Wow, chess is hard, man. Chess is hard. Okay, साज भाई, we are in that zone now. जहां कौन सी गेम में क्या हुआ कुछ नहीं पता हम लोगों को. आई थिंक हंस
might make a comeback, and I think Magnus wins. Yeah. Just based on the Hans. position, based on the time, and a Oh, blunder Hans is by winning now. That's a Levon. blunder. Yeah, Oh, he big has all blunder. the time in the world to think. Yeah, Oh, another oof, blunder that's by another two blunder. hands. भाई कुछ भी चल रहा है यार. Wow, Queen e6 check was a lifesaver, but that H pawn is the problem. Yeah, I think now 3 seconds for I think. Fabi. Oh, भाई 6 for 5 seconds Magnus. for He needs to play Magnus. now. क्या crazy चल रहा है King A2. Nice move by Magnus. Hans ही सोच रहा है बस. Check, knight takes e4 on Hans's board. He goes king f6, going for that e6 pawn. Levon goes Okay, king now the d3. Okay, white Levon pieces is, are activated. Yeah, yeah, B5 आ रहा है, I Levon is think at safe, I some think. point. Yeah, Levon is going to win Yeah, this for one. sure. He's going to win this one. Yeah, no stress whatsoever. I think we're going to have 2-0 victories for both players, Ooh, very likely. by rook c6. Did you see that? In Magnus's board, rook c6. What an हाँ exchange देख रहे. sacrifice. Beautiful. Yeah. And Oh, Levon D6 मार wins. दिया. Wow. The knight is pinned. Wow. So Levon Hans Riemann has that hand on his face. He cannot believe it. The game is over. 2-0 victory for Levon. And Magnus also wins. Saj by 2 crushing victories for the stronger players. Yeah, take the point home. Absolutely. What a show by Magnus and Levon, and especially by Magnus, winning on demand with the black pieces and then finishing it off in style in the tiebreakers 2-0 against a candidates player, Fabiano Caruana, world number 3. Yeah, I think we started doubting for a second in our dreams that Magnus might not make it, but he did. And Caruana, even though he led that match, could not really finish it through. And of course, Levon, it's just been his year, especially in freestyle chess, just cruises through with a 2-0 victory. Hans disappointed, but well, he'll probably end up playing in the loser section as well. But yeah, Sajbhai, I think coming back to the board and our cameras, I think today was a bit heartbreaking because of Arjun, though. I think that's one game that's going to pinch a bit for every Indian fan because he was winning better in the first game and winning the second game, but ended up losing. And to be honest, I think that means tomorrow's match, I mean, he cannot win the event. Yeah, that's just sad a little bit. फिफ्थ प्लेस के लिए फाइट करना पड़ेगा, बट समय भाई सेड दैट ही नोज के प्लेयर्स को कितना मिल रहा है यहाँ पे, एंड ही सेज दे आर ऑल विनर्स, सो देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग ऑन दैट. His words, not mine. But it's for, but yeah, कल का मैच भी है. I think you can still fight for the fifth spot. That's still, I think, a decent thing. And yeah, congratulations to the winners on the top four, especially to Sindarov, who has performed splendidly so far. Since the World Cup, he's on this meteoric rise. कोई भी format हो, मतलब World Cup में classical, rapid, blitz सब prove करा उसने, और यहाँ पे freestyle भी prove कर रहा है वो. He is definitely a force that we have to watch out for. Yeah, and tomorrow I think we still don't know the pairings. I think वो choose करेंगे मेरे हिसाब से फिर से या कैसा होगा, but we'll have the pairings tomorrow. It's 2 days of action left, 10th and 11th. We'll have the semifinals and the finals. And Sajbhai, I think before we end, just want to ask you, who do you think will win the event now? I'm gonna say Sindarov, bhai. Yeah, I'm Wow. gonna go with the Oh, dark horse, and oh, I wow. really like Sindarov's like play. I think freestyle kind of suits him well as well, and I think Sindarov for me. आपके लिए? I think I'm going to stick to Magnus. I think, I'm the guy who tried and tested है भाई. इतनी बार हो चुका है try भी और test भी. So I'm going to stick to Magnus. But yeah, I think Sindarov definitely will take a claim because the form he's in is hard to, find in today's world. So Sindarov will be fighting. And of course, he crushed Maksudlu 2-0 as well in crushing faction. So let's see what happens. Sajbhai, भाई, I think आज इतने मजा आया. I think कल हम दोबारा आएंगे. 9:30 बज गए actually. Which was a bit surprising to me कि भाई लंबा चला stream. And कल I think हम आएंगे semifinals के साथ. Arjun will be back. We'll be back. See you tomorrow, chat. Take care and good night.